Okay, so hi everyone, a very good afternoon. And today it's going to be our second marathon session. Already we have covered one important marathon session, which was on one word substitution. So in this, all we have covered in one run, and now it's our second marathon session, which is on one word substitution. Similarly, I've given you already the schedule where we are going to have total in number 5 marathon sessions, and the next is going to be very, very important, which is based on the parts of speech. Do not miss that session also because it's going to be on next Monday. It's going to be on Gurpurab, I guess. It's on 27th at 12 only. And there we are going to cover all the important grammatical structures, starting from nouns to the ending, all the tenses, prepositions, pronouns, everything will be covered. So do not miss that session. Good afternoon, Balaji. So now also we are going to cover all the one word substitutions. What I have done for you in one word substitutions is I've already demarcated them in different, you can say, structures. Words pertaining to government, words pertaining to your professions, your attributes, your characteristics, and lots of quizzes are there. So lots of components to be read are there throughout the session. So good morning, Rahul. And now one more very important thing which I would like to channelize all of you. Do not forget to download the documentation, which is very, very important for you to have a big recap of all the things we are already doing, already pursuing in lots of lectures. So any problem till now to anyone? Good afternoon, Ravi. Any problem till now to anyone related to the previous lectures or the documentation? Because I think the documentation was already shared. And similarly, whenever you download the documentation, in between the quiz pattern is there. So you can solve it through it, or if you will ask me, you can drop in the comments and I'll help you with the fetching of those answers also. So those were all the important things, right? So great, it's clear to Ravi, and all the ones, be attentive. It's going to be a quick recap of all it. So we think we can start it right now. I think we are already running 5-7 minutes late for that. So yeah, it's our first, you can say I've already discussed with you, it's your 5 weekly schedule, which you have to adopt for. First, it was on idioms and phrases, which we had done on 18th November at 12. And similarly, next it's your at today, it's 21st November at 12. And next, which is very, very interesting, it's going to be on 27th, I guess. And similarly, I repeated it you out, it's going to be on all the grammatical structures. Now coming to one word substitutions, it's going to come in each and every examination. The purpose of coming one word substitutions is it can come directly to you in the form of vocabulary, it can come to you, or in the forms of blanks, it can come to you, right? So right now, let's start with the words pertaining to the government. Now, if I ask very first when I have to start with the words pertaining to government, what is that? You don't need to note it down. It's just you have to download it out and you have to just take your pen and paper ready for the rough ideas. Like I just asked you, what is it called? Government for the people, by the people, of the people. Very simple, we are going to start with it. Because here I'm going to cover all the words which are related to government, right? So anyone who can tell me the government which is made by the people, of the people, for the people. Hey, Appan, good afternoon. Okay, drop in the comments, be very extra active throughout our interactive sessions. Yeah, democracy. So whenever you are just, I'm asking you questions, drop in the comments. The reason is it's your competition also, that who is answering me very first in a nice manner. Yeah, Ashwarya is also there. So democracy. Similarly, now I ask you one more. Like similarly, first one, government of the people, for the people, and by the people. Very simple. Democracy is there. What is there in India also? Government by the sovereign with uncontrolled authority. When there is no authority, uncontrolled authority is there, and it is termed as autocracy. Autocracy means that yes, I will rule. Oligocracy means a few will rule. Now I'm going to tell you some terminologies. First is democracy. सरकार जो है लोगों के द्वारा, ठीक है. सेकंड आ जाता है आपका एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं? किसको याद है? एरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं? Who are the aristocrats? Anyone who can tell me? What do you mean by aristocrats? किसी को नहीं याद? Aristocrats, जिसे मैं बोलूं बहुत ज्यादा nobles, right? So government by the nobles is termed as your aristocracy. Government जब बहुत कम लोग उसको regulate करते हैं, that is termed as oligocracy. ओलिगोक्रेसी होती है जब गवर्नमेंट सरकार बहुत कम लोगों के द्वारा रेगुलेट की जाती है, दैट इज ओलिगोक्रेसी, राइट. नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी इज जब ऑटो मींस सेल्फ, राइट.
So that is government by a sovereign with uncontrolled authority. Nobles में आ जाते हैं रवि, like if I say कुछ सिर्फ the supreme power, it is not by the people, it is like if I call it out, nobles में आ गए आपके queens, queens, ये सारे आ जाते हैं, तो they term as aristocrats, right? तो ये चीजें पहले याद करो. पहला, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय द सॉवरेन विद अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई एक सुप्रीम नहीं है, दैट इज ऑटोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, नोबिलिटी नोबल्स ही करेंगे, मतलब सिर्फ आप बोल सकते हो हाई रैंक्स वाले ही, एक फैमिली है जो रन अप कर रही है, दैट इज टर्म्ड एज एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, स्टेट्स में रूलिंग है, स्टेट्स को पार्टीशन में डिवीजन ऑफ पावर दी जा रही है, दैट इज ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स हम हायर करते हैं. गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, थोड़े लोगों की गवर्नमेंट, ओलिगोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, सिर्फ जो ताकतवर है, जो पावर में है, जो बहुत ज्यादा रिच है, वही करेंगे, तो प्लूटोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और एरिस्टोक्रेट्स, जैसे प्रीस्ट, जैसे एक पावर में आ रहा है, सीक्वेंस में आ रही है, दैट इज योर हायरार्की. गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस, थियोक्रेसी, थियो का मतलब ही भगवान होता है, दी हमने कई बार सुना होगा, जैसे आपने कुछ पोइट्स वगैरह में किया होगा, दी होता है, दैट इज डन, दैट इज कॉल्ड एज गॉड, ठीक है. तो गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस, इट इज टर्म्ड एज थियोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास, अगर सारी मिलिट्री रेगुलेट करनी शुरू कर दे, दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रैटोक्रेसी. स्ट्राटा बन जाते हैं, स्ट्राटा मींस क्या होते हैं, जैसे रैंक्स में डिवीजन, तो मिलिट्री क्लास की तरफ से आ जाती है, दैट इज स्ट्रैटोक्रेसी. और गवर्नमेंट बाय वर्स्ट सिटीजंस, मतलब सबसे बुरे सिटीजंस अगर रेगुलेट कर रहे हैं, दैट इज कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी. गवर्नमेंट, पहले यहां तक हम याद करेंगे, ओनली दिस मच, आई एम रिपीटिंग इट आउट बिकॉज दीज आर न्यू फॉर यू. सबसे इंपॉर्टेंट, वर्स्ट सिटीजंस, नया है आप लोगों के लिए, दैट इज कैकिस्टोक्रेसी. अब मैं फटाफट से पूछ रही हूं, जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट्स, क्या था, डेमोक्रेसी, सेकंड इज ऑटोक्रेसी, थर्ड इज एरिस्टोक्रेसी, फोर्थ इज ओलिगोक्रेसी, एंड फिफ्थ इज प्लूटोक्रेसी. पहले मुझे ये 5 बता दो, 5 कौन कौन से थे. गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी कौन सी होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, राइट, एवरीवन इज राइट, रवि, बालाजी, ऑल राइट. ऑटोक्रेसी क्या होता है, ऑटो का मतलब क्या हो गया, सेल्फ, लेकिन उसमें क्या है, कोई भी हाई कंट्रोल्ड अथॉरिटी नहीं है, या सो इट इज नॉट हैविंग हाई कंट्रोल्ड अथॉरिटी, बट आप उस तरह से रेगुलेट कर रहे हो, ऑटोक्रेसी आ गया. दैट इज गवर्नमेंट बाय सॉवरेन, या कोई सुप्रीम रूलर है, मैं ही रूल करूंगा उसको और कोई अथॉरिटी नहीं है, दैट इज ऑटोक्रेसी. एरिस्टो क्या होते थे, मैंने अभी एरिस्टोक्रेट्स बताया है. व्हाट आर एरिस्टोक्रेट्स, जल्दी से बताओ. व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी, बाय द नोबल्स, नोबल्स अगर रेगुलेट कर रहे हैं, दैट इज एरिस्टोक्रेसी. ओलिगोक्रेसी क्या होता है, ओलिगोक्रेसी, द मोर वी स्पीक द मोर वी रिमेंबर इट, लाइक दैट. ओलिगोक्रेसी क्या होता था, none of you remember, बाय रिचनी, जब थोड़े लोग रेगुलेट करते हैं, बाय अ फ्यू नंबर. या गुड मॉर्निंग अनूप. सो व्हेन द गवर्नमेंट इज रेगुलेटेड बाय अ वेरी फ्यू पीपल, थोड़े से लोग हैं जो गवर्नमेंट में है और जो रेगुलेट कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज ओलिगोक्रेसी. एंड द लास्ट प्लूटोक्रेसी, आई थिंक फोर्थ, सिर्फ स्कूल ब्रो को बेचारी याद है. प्लूटोक्रेसी क्या होता था, जो सिर्फ वेल्दी लोग होते थे, द वंस हु आर वेरी मच वेल्दी, दे आर रेगुलेटेड, दैट इज टर्म्ड एज प्लूटोक्रेसी. थोड़े थोड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं, हम इसको बीच बीच में रिवाइज करते जाएंगे, सो दैट इट कम्स अ काउंटर फॉर यू ऑल. सो यहां तक एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं सारे. फर्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेसी. सेकंड, ऑटो, सिर्फ क्या है, एक ही बंदा, मैं पावर में हूं, मैं ही रेगुलेट करूंगा गवर्नमेंट को, दैट इज ऑटोक्रेसी. एरिस्टोक्रेट्स, नोबल्स, नोबिलिटी वाले लोग रेगुलेट करते हैं, एरिस्टोक्रेट्स रेगुलेट कर रहे हैं, दैट इज एरिस्टोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी, जैसे स्टेट्स में पावर है, ब्यूरोक्रेट्स हम हायर करते हैं, सो वी गिव यू कैन सी द पावर टू द ब्यूरोक्रेट्स, बाय द स्टेट, एवरी स्टेट हैज सम पावर, दैट इज ब्यूरोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, बहुत थोड़े लोग हैं जो पावर में है, दैट इज ओलिगोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, सिर्फ जो रिच हैं, ताकतवर हैं, वही रेगुलेट कर रहे हैं, दैट इज प्लूटोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट, ये बेसिकली हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है. जब आप हायरार्की में रिप्रेजेंट करते हो, तो दैट इज योर hierarchy in the terms of statics, and this is not much important, but yes, you have to read it.
नेक्स्ट इज डिवाइन गाइडेंस, मैंने बोल दिया जब भी थी वर्ड आ गया भगवान के लिए है, दैट इज हु इज अ सुप्रीम पावर, दैट इज थियोक्रेसी, एंड देन मिलिट्री क्लास, स्ट्रेटोक्रेसी, एंड देन यू हैव गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजंस, दैट इज कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी. नाउ कम्स द नेक्स्ट, फिर हमारा गवर्नमेंट वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा. I've made it very simple so that all the words they come combined to you in each categories. तो बहुत जल्दी से हो जाएगा और बहुत ध्यान से सुनना है till the end. Okay. So first is the right of self government. Similarly अभी मैंने बताया जो ऑटोक्रेसी था, मतलब एक ही बंदा बोल रहा है मैं ही पावर में हूँ. The right of self government is, that is I am the one who is regulating it out. That is autonomy, right? No, let's connect. That is not required. You just have to go through this only for any examination you are targeting and it will be sufficing it out. Documentation read kar lena, that's all. सारे जो भी important आज तक आते हैं, that is there. Science of government, politics. जिसमें बोलती हूँ science of speaking, science of studying a language, that is linguistics. उसी तरह से science of government क्या बोली जाती है, politics बोली जाती है. A radical change in government. अब government चल रही है, everyone is following some norms. एक उठ के खड़ा होके बोलता है no, I don't want to be in it. मैं इनके अगेंस्ट चलता हूँ, that is revolution. और जो करता है वो बोलता है rebel. So revolution and the person who does it out rebel. जैसे ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिशर्स वर देयर इन द बिग रन, और वो क्या कर रहे थे, अपनी ही सरकार फॉलो कर रहे थे. जब भगत सिंह एंड ऑल दैट दे टुक ओवर कि नहीं हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होना है, so they were what they were, the rebels, and what they tried to bring for the government, that was a revolution. Clear? Next you have to decide a political question by direct vote of whole electorates, that is एक electorates का proper vote system, that is referendum. And then you have the period between two reigns. दो राजा रूल कर रहे हैं, उन दोनों के पीरियड्स के बीच का टाइम क्या बोलते हैं, दैट इज इंटरेगनम. इंटरेगनम से एक और वर्ड याद रख लो, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, दैट इज इंटरल्यूड. इंटरल्यूड क्या होता है, जैसे मैं अगर बोलती हूँ sometimes you are watching a movie or watching some serial, every time we watch some serial there comes some advertisements in between. So those advertisements, maybe they have some comic effect, maybe they have some message for you, those are also termed as interludes. So it comes whenever there is a gap in between something. Inter word use hota hai, lude whenever you are watching an episode, and in between intervals come, that is interlude. And when there is a period between two reigns, सरकार, दो सरकार के बीच का टाइम है, that is termed as interregnum. Next you have is one who governs a kingdom during infancy, absence or disability of a sovereign. कई हमने देखे हैं राजा, they started ruling from a very infant, मतलब बहुत छोटे होते से they started ruling, they started taking over the kingdom, or there was some kind of a absence of a sovereign, the higher authority that was absent. So in time frame, someone who ruled, that is termed as regent. Regent was that person. One last for the democracy portion is the wife or husband of a king or queen is termed as consort. Consort is a wife or husband of king and queen, and an official number of counting the population, that is census. And the facts and figures, we call it as statistics. So that was all from the very first segment, that was government. अब मैं एक recap करवा के some questions I'm going to ask. Is everyone ready with it? The questionnaires Rajni, and then I have Cool Bro. Line concept, the name of that person I don't know, but it is not you have to follow one book. I have already demarcated out from 3-4 best of the books. So that is a kind of, you won't be able to have कि एक book कभी भी suffice नहीं होती है. The notes which I'm making, it is not from only one book, it is basically from 4-5 minimum of that books. So yes, you don't have to follow any other book in particular, just follow these and that will be sufficient for you. None outside from this, that is for sure. Let's have a quick revision, and then we are going to have a test from the first section, that is words pertaining to government. Before that, let me ask you, किन लोगों को याद है? First tell me, what do you mean by plutocracy? Second, kakistocracy. What do you mean by the wife or husband of a king or queen? क्या बोलते हैं उसको? Tell me that word. What is the period between two reigns? What's that called?
then you have to tell me what is the meaning of the term oligocracy, what is the meaning of the term autocracy, what is the meaning of the term, if I ask you then, aristocracy. जल्दी से बता दो. 1 2 3 4 5 6 and 7. 7 all of you. Let's see who answers all the ones fast. Ravi, Divyanshi, okay, Pulbru answered it out. So it is Pluto, wealthy, and then you have, जल्दी से आंसर ड्रॉप करो. वेल्दी सिटीजन. थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो. प्लूटो, प्लूटो क्या आ जाता है? प्लूटो पे जाना, मार्स पे जाना बहुत टफ है, सिर्फ पैसे वाले लोग जा सकते हैं. तो उससे याद रख लो, प्लूटोक्रेसी मतलब अमीर लोगों के द्वारा होगी. दैट इज टर्म्ड एज योर प्लूटोक्रेसी, राइट. नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? कैकिस्टोक्रेसी. कैकिस मतलब के, हम बोलते हैं ना कि बुरे लोग हैं, इनसे बात मत करो. सो दैट इज योर कैकिस्टोक्रेसी. Hubby or husband of a wife of king or queen, that is termed as consort. Very good. Next you have period between two reigns, that is termed as your period between two reigns. क्या होते हैं हमारे? Anyone? Consonant controlled by self. किसने आंसर किया फोर्थ का? Interregnum. Very good. Balaji also answered it right. So it is interregnum. Very good. Oligocracy क्या होता था? Fifth. A few. Very nice. Oligocracy जब बहुत कम लोग रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, दैट इज टर्म्ड एज योर ओलिगोक्रेसी. ऑटोक्रेसी, सेल्फ, मैं ही पावर में हूं, आई एम द ओनली वन हु इज रूलर, दैट इज ऑटोक्रेसी. एंड एरिस्टोक्रेसी, दैट इज एरिस्टोक्रेट्स बाय नोबल्स, दैट इज टर्म्ड एज एरिस्टोक्रेसी, राइट. सो इंटरल्यूड इज नॉट रिक्वायर्ड, हियर इट इज इंटरेग्नम. इंटरल्यूड नहीं आएगा. INTERREGNUM. अगर आप याद करना है तो इसको इस तरह से याद कर लो. इंटर प्लस रेगनम, रीन से बनता है, ये बोलते हैं हम इंटर रेगनम. दैट इज द स्पेलिंग ऑफ इट. रवि, क्लियर? तो पहला सेक्शन सिर्फ रिवाइज करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. डेमोक्रेसी याद हो गया सबको, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल. ऑटोक्रेसी सेल्फ, एरिस्टोक्रेटिक नोबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी स्टेट्स डिवाइड करते हैं, ओलिगोक्रेसी बाय अ फ्यू, प्लूटोक्रेसी सिर्फ वेल्दी लोग, हायरार्की जब सीक्वेंस में हम चलते हैं, प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, दैट इज हायरार्की. थियोक्रेसी एक डिवाइन पावर है, सुप्रीम गॉड है या डिवाइन गाइडेंस है. स्ट्रैटोक्रेसी मिलिट्री के द्वारा. कैकिस्टोक्रेसी वर्स्ट सिटीजन्स के द्वारा. द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ अपनी, मैं अकेली, तो दैट इज ऑटोनॉमी. द साइंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स. रेडिकल चेंज इन गवर्नमेंट रेवोल्यूशन. डिसाइड पॉलिटिकल क्वेश्चन जो क्या लाता है, होल इलेक्टोरल सिस्टम, रेफरेंडम. देन यू हैव पीरियड बिटवीन टू नेम्स, दैट इज इंटरेग्नम. देन यू हैव अ किंगडम दैट इज बेस्ड ऑन इन्फेंसी से कोई लोग, कोई पर्सन जो रेगुलेट कर रहा है, दैट इज योर रेजेंट. एंड देन यू हैव अ वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ किंग और क्वीन इज कंसर्ट. ऑफिशियल नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इज सेंसस. फैक्ट्स एंड फिगर्स आर स्टैटिस्टिक्स एंड दैट्स ऑल विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन. अब नेक्स्ट सेक्शन है कुछ करेक्टरिस्टिक्स से कोई लोग जाने जाते हैं, उनके बारे में बात होगी. सेकेंड सेक्शन इज अ लिटिल लॉन्गर देन द गवर्नमेंट वन. गवर्नमेंट में जो जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, द मोस्ट कॉमनली दे आस्क यू अबाउट ऑटो, एरिस्टो, प्लूटो और यू ओलिगो. उससे ज्यादा या फिर आप कॉन्सर्ट वगैरह के बारे में पूछते हैं. स्ट्रैटोक्रेसी भी बहुत कम आया एग्जाम्स में. तो इस तरह से सिर्फ द बेसिक वंस आर ऑलरेडी कवर्ड व्हिच वर डिमार्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट. नाउ कमिंग टू द एट्रीब्यूट्स. व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? फर्स्ट इज वेरी सिंपल, ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट जो हमेशा पॉजिटिव साइड्स देखता है. आई विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. वर्ल्ड कप को हारा तो कोई बात नहीं, इट्स अ पॉजिटिव वन, तो हम नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे. एवरीवन डिड देयर एफर्ट्स, 11 में से 10 मैच तो जीते हैं, तो दैट इज ऑप्टिमिज्म लेवल, मतलब हर चीज में पॉजिटिव को देखना. पेसिमिस्ट कौन होता है? जो हर चीज में नेगेटिव देखता है. दैट इज टॉस जीते थे तभी से पता था कि हारने वाला है, तो दैट दे आर वेरी नेगेटिव पीपल. पेसिमिस्ट, मैं नहीं क्लियर कर सकता एग्जामिनेशन, जो मर्जी हो जाए, बिकॉज बहुत सिलेबस है. पेसिमिज्म, तो दैट इज ऑप्टिमिस्ट जो हर चीज में अच्छा देखता है, दैट इज पेसिमिस्ट जो हर चीज में नेगेटिव देखता है. सिमिलरली वेरी सिंपल, से इट आउट. ग्लास आधा भरा हुआ है, ऑप्टिमिस्ट जो पर्सन ये देखेगा. ग्लास आधा खाली है, दैट इज पेसिमिस्ट, दैट इज जो नेगेटिव पर्सन है. Next we have one who devotes his service for the love of mankind. Very famous Ratan Tata, if we talk about him. He serves mankind. He loves people. He loves to be in the category जहाँ पे वो donations करते हैं, लोगों का भला करते हैं. So person who helps it out
who looks both, that is intro, I won't call it out dono pessimism or wo. There are only two reflections. You either can be very much pessimist or you can be very much optimist. एम्बीवर्ट लेवल होता है जब आप ये चीजें बोलते हो, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, उसका डिफरेंस आता है, सेंटर आता है, बट इसका नहीं आएगा, राइट? सो नेक्स्ट इट इज, आई थिंक यू गाइस आर अ बिट मिड बिटवीन दीज टू. तो आई वाज कमिंग टू फिलैंथ्रोपिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट से मैं एक और वर्ड पूछती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय, हमने वो कैब में किया था, जनरस. जनरस याद है किसी को? जनरस क्या होता था? इसे बाकी वर्ड्स पे याद रखो. That is a person who helps mankind, a person who gives donations, that is a rich, that helps the poor, that is also called as your philanthropist. जनरस भी वही पर्सन होता है जो लोगों की हेल्प करता है, जो लोगों का भला करता है. That is also a person who is very generous. Yeah, benevolent also comes in that category. So you have lots of words: philanthropist, generous, benevolent, all comes in this category. That is why I always say you form a cloud बना के रख लिया करो, उसमें सारे ऑप्शंस आपके लिए इजी हो जाएंगे. When you have downloaded the documentation, tick in that category. Next, a hater of mankind, जिसको mankind से नफरत है, जैसे गरीबों को देख के नहीं, they are very irritating, why they are coming. That is misanthrope, who hates mankind, who does not do wonders for them, who is like very much uses abusive words for them. That is a misanthrope. Philanthrope means a positive person. Misanthrope means that is a negative person. I have told number of times, whenever we use d, miss, un in front of the words, mostly they denote to a negative understanding. So that is misanthrope, a hater of mankind. Then you have one who becomes a favorite of a distinguished person and serves him as a slave. Minion. Minions देखे आप लोगों ने, you have heard about, or you have even the twice, soft twice, they come in the form of minions. That is not that. Minions वो वाले नहीं, I don't remember the exact picture, how they look it out. Minion is a person who is a kind of who serves as a slave to a very powerful person. जैसा जैसा person ने बोल दिया, higher authority says the person does like that, that is a minion, right? तो minion क्या होता है? जो serve करता है slave की तरह बहुत बड़ी authority को, that is termed as minion. And do you remember the words if I target with you in minions? What do you mean by oily tongue? ऑयली टंग क्या होता है? फ्लैटरर क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स फास्ट? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैटरर? व्हाट डू यू मीन बाय ऑयली टंग? एनीवन हु कैन टेल मी? ओके, फ्लैटरिंग समवन. Minions, I always tell the words. Whenever you have some words, there are kind of cartoons and all that. You have connotative and denotative meaning. उससे याद रख लो, denotative होता है डिक्शनरी मीनिंग, जो बिल्कुल फिक्स्ड मीनिंग अटैच है. और कॉनोटेटिव मीनिंग कौन सा होता है? जो सोसाइटी मीनिंग दे देती है किसी चीज को, दैट इज टर्म्ड एज योर कॉनोटेटिव मीनिंग. तो इसी तरह से आपको एक वर्ड के दो से ज्यादा भी मिलते हैं, राइट? सो इट इज जस्ट, इफ आई टेक ऑयली टंग, किसी की बहुत बटरिंग करना, किसी की चापलूसी करना. उसी तरह से फ्लैटरर, जो सिर्फ बहुत प्यार प्यार से किसी पर्सन को बोलता है, दैट इज टर्म्ड एज फ्लैटरर. एंड हियर वी हैव हर्ड अबाउट मिनियन. Minion is a person who is becoming as a slave, who is serving as a slave to a big authority, that is minion. उसी तरह से next याद कर लो, that is cynic. Cynic, one who sneers at the aims and beliefs of his fellow men. Sneak क्या होता है? If I talk about simply in the terms कि जैसे अगर मैं बोलूं कोई person है जो हर बार अपने जो फेलो मैन है, जो बिलीफ है, उनको फॉलो करने के पीछे पीछे भागता है, दैट इज सम. Cunning means someone who is very crafty nature, जो बहुत चालाक होता है, that is cunning. Cunning does not come in this category, okay? Then you have is, अब यही सुना होगा बहुत ज्यादा, उनको नींद में चलने की बीमारी है, नींद में बोलने की बीमारी है. The person who walks in a sleep is termed as somnambulist, and someone who you can say it out talks, उसका मैं आपको बताऊंगी, locust में आ जाता है, right? So that is one who walks in a sleep, that is termed as somnambulist. इसको याद रख लो, बुली में करना बोलने से अगर आता है तो इसमें उल्टा है, इसमें वॉक करने से आता है, राइट? सो दैट इज स्नीयर आता है. राहुल, अगर मैं बोलूं कि a person who is speaking, किसी का मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग, तो whenever you make fun of someone, that is termed as your sneer. अगर आपको ये नहीं याद, yeah, sneer means if my person, I am speaking something, the person who is making fun of that thing,
that is comes in the category of cynic. He follows me. जैसे बहुत ज्यादा आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में, sometimes there are comments करते हैं लोग, follow कर रहे होते हैं उस account को, but they always pop negative comments on that personal account. That is, you follow a person but you always make fun of that person. That is cynic, right? So that is cynic. Okay, I'll be explaining in both the languages. Now it is somnambulist. Bulist, it will come in the category that is one who walks in a sleep. If I'm sleeping and I'm walking in that category, so that is somnambulist. So remember this word somnambulist. Next is one who has the art of speaking in such a way that the sound comes from other words. You might have heard about dummy. Many times we have seen many of the movies. I don't remember, there was a movie of Preeti Zinta and there was an actor, and there was another also, Mahima Chaudhary or someone was there, and Arjun Rampal, if you anyone records it out, right? So उसमें क्या होता था, there was a person who used to act in a dummy. Dummy में क्या होता है, I have some dummy in my hand and that is speaking. I am speaking but it looks that dummy speaking or that cartoon is speaking. That is called as ventriloquist, जिसमें वो category होती है, वो कला होती है, that the person makes a dummy speaks while he is speaking and it looks he's not speaking and the dummy is speaking. That is ventriloquist. So that is a new word for all of you. Ventriloquist सबको समझ आ गया? If I have to remember it out, easy word इसको याद रख लो, जहां से आपकी dummy बोलती है, right? So if you make a dummy speak, that is termed as ventriloquist. Anyone who is very good in ventriloquist, that is the kind of skills you have, because here your speech should be very very slow. Only then you can say your tongue needs not to be in very good movement. Then only the dummy can make a good run, right? So that is ventriloquist. Next, you have one who delights to speak about himself, boastful if I say it out, or egotist, जो सिर्फ अपने बारे में ही बात करना चाहता है. The narcissist, which I talked about, Kareena Kapoor, उसी तरह से आपने word याद कर लिया, that is egotist. The person who only speaks about himself or about his own welfare, that is only everything good will happen with me. I have to do something good in my life. So that is a person, egotist, only concerned about himself. Next, you one who devotes his life to the welfare and trust of other people. That is, their altruist and philanthropist. There is a difference. Philanthropist is the one who helps the mankind, who does favor to that. Altruist who sacrifices his own life and he only devotes that, yes, I will help other people. If I have some of the monetary gains with me and I just denote everything to others, and even I'm serving in an NGO, I'm working all the day from morning to night in an NGO, I'm serving my life completely, that is termed as altruist. So there's a difference, a slight gap between philanthropist and altruist. You have to understand that. Next is one who runs away from justice or law. That is termed as fugitive. Fugitive is who is very much afraid of all these things, like any law, any legal matters and all. So person who runs from that, that is termed as fugitive, right? Then you have one who takes refuge in foreign country, that is a refugee. So many of you or many of our people in India, they might have come from the foreign country and they might have taken their space, like when there was a partition between India and Pakistan. So many people from the Pakistan or Lahore side, they came and settled in India. They are termed as refugee only. And alien, we use it as a word when we talk about the alienation and all that. It's not used in just in one category about refugee, but sometimes you can get in the MCQ. I've seen in one paper where they talk about one who takes refuge in another country is termed as alien, because that is different from us. That is not koi mil gaya wala alien, but are very similar to that. That is why they do give you this as an option also. And many in SSC category, I have seen this option coming in the blanks, right? So you have to denote it like that. One who is banished from his own country or his own country, that is exile. So जब आपको देश से निकाला मिल जाता है, you have been banished, that you're not made entry in it, so that is termed as exile, right? And yes, one who has an habit of stealing the things. कई लोग हैं जिनको चोरी करना बहुत अच्छा लगता है, and I won't call it out only in that run. If even if you go to some hotels or you stay there and you take the soaps and the towels or some kind of a stuff from them without telling anyone, that everyone does, I guess. So that is being kleptomaniac. It's not kleptomaniac, that is the generic one. But one who cannot, you can say, abstain himself, and the person who steals a lot, that is kleptomanic. One who steals books, I don't know any of one of you who steals the books, that is biblioclept.
So that is kleptic. It will come in the terms of चोरी करना, and bibliocleptus, a person who steals the books. इसी से word याद कर लो. Bibliophile क्या होता था? Anyone? What does bibliophile means? Biblio का मतलब हो गया book. Clept का मतलब हो गया चोरी, like to steal something. तो file का मतलब क्या होता है? Lover. So file means lover. Anyone, if any place, file is used, phile. It can be misophile, it can be any terminology like that. So that would be lover of that thing, right? So that is bibliophile, bibliolover. अभी चोरी पे है तो biblio clept आ गया. उसी तरह से one who breaks images or church ornaments, that is मूर्तियां तोड़ना या कोई चीज ऐसे करना, that is iconoclast. आइकॉनिक चीजों को तोड़ रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज आइकॉनोक्लास्ट, राइट. नेक्स्ट यू हैव इज वन हु डाइज फॉर हिज ओन नोबल कॉज. बहुत ज्यादा हमने देखा जैसे अपनी ही कंट्री के फ्रीडम के लिए बहुत लोगों ने अपनी दे हैव गिवन द सैक्रिफाइसेस एंड ऑल, दैट इज बीइंग मार्टर्स. एंड व्हेन हु रिटायर्स फ्रॉम कंट्री टू लिव अ सॉलिटरी लाइफ, कि मैं सिर्फ अब यू कॉल इट आउट, मैं हर्मिट की लाइफ, सेंट की लाइफ, रेक्ल्यूज की लाइफ, आई वांट टू लिव अ लाइफ which is away from all the materialistic things, that is termed as being a recluse or being a hermit, being a saint, in that category, right? One who offers a service is an own free will, person who does not expect money from in return. पैसा expectations नहीं होती है, सिर्फ I want to do something, I want to do in this noble cause, I want to be into that. Yeah, Swami Vivekanand, you can call that. So that is a person who offers his services on own free will, that is volunteer. Even many of you have volunteered in your college events also. You are not going to get any gains, you are just ki discipline karna hai, ye cheeze karna hai. So that is also being volunteering. That is, you are coming ahead to help someone in the purpose, right, from your own free will. One who is compelled by law to serve as a soldier, conscript. Many of you might have seen that yes, there are some countries who force their people that yes, you have to be in the army, you have to go nowhere, but you have to serve for your own country. That is conscript. Conscript को कैसे याद रखो? That is constitution के based आ गया. उनका constitution शायद ये चीज कहता होगा कि जो भी लोग हैं वो forcefully serve करे. तो इसको इस तरह से याद रख लो. The script has been there in the constitution, that it is conscript, and it is that you are compelled by law that yes, you have to serve in China, or not in China particularly, you can call it in North Korea or something. I've seen that there's a massive influx that yes, you are, if you're born in a country, you're being a boy, you are to serve as a soldier in that country, right? North Korea in particularly, that we have seen a massive a soldier or sailor newly enlisted, recruit आ गया जो नया नया पॉइंट होता है. और क्या वर्ड से रिक्रूट के लिए मुझे 3-4 वर्ड्स बता दो. Anyone who knows some words for a beginner? We have already done in the idioms and phrases also. What comes in the category of beginner? Fast. Intern नहीं आएगा. Intern होता है जो newly appointed नहीं होता. He's serving under someone. Novice, very good. What else? Novice हो गया. Next. What else can be there? Fresher, amateur, very good. What else? एक और बताओ मुझे. Related to some color, I have already told a color for this. Which color demarcates a new beginner, a novice? Greenhorn, very good. Yes, so that's a criteria. We have already run it out. Greenhorn आ गया. Next you have similar way, one new to something, वही words हमने यूज करना है. एक और word याद हो कर लो, that is tyro. Tyro is also that word. So in the cloud you found a new word, amateur, greenhorn, newbie also, but they are very informal words. You don't use a newbie in a book or something. So that is why I always refrain from those words which you use in an informal slangs. We go for the words like amateurs, greenhorns, novice, beginners, tyros. So they are the words which are used in the formal slangs, right? One who is loves animals, that is zoophilist. And one who is fresher to something and he does not do it for the gain, but actually for his own knowledge, that is amateur. And one who feeds on fruits, that is a fruitarian. One who eats no animal flesh, that is a vegetarian. So इससे हम कुछ याद करते हैं. We have done in the junior classes. Who can tell me what was herbivores, what was carnivores? Very junior classes stuff. What was omnivores? What was your cannibal? And
Yeah. So tell me fast. What was the terminologies? Now there are also terms like vegan. Also the term. What do you mean by vegan? Yes. So where it comes in the demarcation? Tell me about all these stuff. बोथ क्या? जल्दी से लिख दो कौन सा किस कैटेगरी में आता है. वेज नॉन वेज मैन ईटर, व्हाट इज इट कॉल्ड? देखो इट इज हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, राइट? दे वर द हर्बीवोर्स. कार्निवोर्स only animals, like you call it as lion. Omnivores, man who is a veg and non-veg both eater, right? So that is omnivores. Cannibal, one who eats animals, one who eats other human beings only, right? So live human beings, talks को learn कर रहे हो, so that is cannibal. Vegan क्या होता था? Anyone who remembers what is vegan? Because many a times you have heard about this terminology right now, that I'm going vegan, and vegan is not like without harming animals you eat. So this is a new terminology which you would code, and there are many of the products which are coming. They are vegan. Vegan means, like even now the people have started following this norm that milk is also like coming from the animals, and we cannot take milk also, because that's their child's right and not ours. So when we go for all the boycotting, all the dairy stuff, अगर आप dairy stuff को भी खत्म कर देते हो and you only the powdery form you use it out, that is being vegan. That is, you are eliminating whatever comes from animals, be it milk, be it any other thing, and you are eliminating it out, and you have found a substitute in the terms of you can say powder format. That is, you are going vegan from that, right? So yeah, it's exactly not eating anything that from comes from animals, because many people have the supposition कि अगर मिल्क भी है, काउ का मिल्क है, बफेलो का मिल्क है, whatever is there, that is a kind of stuff which is there for their kids, not for humans. We cannot extract that. That is illegal. That is not a good thing to be done with the animals. प्रोटीन पाउडर बोल सकते, प्रोटीन पाउडर नहीं, मिल्क पाउडर बनाओगे तभी तो प्रोटीन में मिक्स करोगे ना. So it is like milk powder, it is coming, and vegan products जो भी आते हैं, they come apart from that. वो डेयरी की चीजें यूज नहीं करते हैं हम लोग, right? So that is being vegan. Animal flesh, I've already terminologies out. Cannibal क्या होता है? अब one who journeys from place to place, कई लोग होते हैं, there are many people on the Instagram, we have seen it out. They just love to travel. They don't have, there's a couple, I don't remember the name exactly, who loves to travel, who has been traveling for so long to different countries, and they don't have a permanent home. They live in a kind of a van is there or something. They stay in there and they are just traveling the places. So one who travel from place to place, that is termed as itinerant. Itinerant is a person who travel from place to place. So यहाँ तक पहले clear है. Should I go for Dhruv Rathi is not I can call it as itinerant, but yeah, to some extent, because he travels from places to places, you can call it out, right? So till now, any problem to anyone before I move to the next now? Recap. Let's start. Recap from the comment to the end. Till now, I'm doing it out, but the questions you're going to get always, we are going to learn from the questions, right? So let's start with a quick one revision, and then we are going to have the questionnaires. The test is going to be there. Okay. So yes, जल्दी से नोट कर लो. यहां तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है till then? Anyone who's attending the class for the very first time, who has not attended the class till now, can ask me any questions. See, so अभी तक हमने पहले किए दो तरह के वर्ड्स किए हैं. One is when you were targeting the government पे टारगेट कर रहे थे, right? And second it was when you were targeting to the attributes of people, कि लोग कैसे हैं, right? So अभी पहला आ गया government pertaining to words. Democracy, सरकार, लोगों के द्वारा, by the people, for the people, of the people. Autocracy, self, मैं अकेली पावर में हूं, that is autocracy. Aristocratics, सिर्फ nobles, जब high rank nobles they are regulating. ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट, स्टेट में डिवीजन आ गई हमारी. ओलिगोक्रेसी, बहुत थोड़े लोग रेगुलेट कर रहे हैं सरकार को, दैट इज ओलिगोक्रेसी. प्लूटोक्रेसी, सिर्फ रिच वेल्दी लोग टारगेट कर रहे हैं, दैट इज प्लूटोक्रेसी. हायरार्की, दैट इज जब प्रॉपर एक नॉर्म है, प्रॉपर एक लेवल हमारा असाइन है, दैट इज हायरार्की. डिवाइन गाइडेंस, भगवान की तरह हम ऊंची तरह से वो सर्व कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज थियोक्रेसी. मिलिट्री क्लास डिवाइड कर रही है, दैट इज स्ट्रेटोक्रेसी. लोग जो बुरे लोग अगर सरकार को अगर अपने देश को चला रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज योर केकिस्टोक्रेसी. द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज ऑटोनॉमी.
द साइंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पढ़ना, जैसे हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बढ़ रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज योर पॉलिटिक्स। द रेडिकल चेंज, अगर सरकार में हम बदलाव चाहते हैं, कोई पर्सन है जो खड़ा होता है कि मुझे चेंज करना है सरकार में, that is a rebel, and the change which is being brought, that is a revolution is being brought. Referendum, that is a political questionnaire that you have to decide for the direct vote. Then you have the period between two reigns, दो ruling parties के बीच का period, that is interregnum. Inter plus regnum, that is ruling period between two parties. Regent, that is a person who starts serving a state or something from the very infant stage, or there is a missing from a big ruler, कोई बड़ा था, the person died, the higher authority died, so उनके बच्चों को सिंहासन पे बैठना पड़ा, that is, you can call it out as regent. Then you have the wife or husband of a king or queen, that is termed as consort. Then you have the official number of counting a population, it is census. Facts and figures is statistics. Now comes the next category. First was जो सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखता है, दैट इज ऑप्टिमिस्ट, जो नेगेटिव देखता है पेसिमिस्ट, जो लोगों का भला करता है, मैनकाइंड की तरफ हेल्प करता है, दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट. एल्ट्रुइस्ट, वन हु गिव्स व्हेन हु ओनली सर्व्स फॉर द नोबल कॉज, उसे बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट जो गरीबों की मदद करता है, एल्ट्रुइस्ट जो नोबल कॉज के लिए अपनी लाइफ को डिनोट कर देता है उनके लिए. नेक्स्ट इज हेटर ऑफ मैनकाइंड, जिनको मैनकाइंड नहीं पसंद है, नफरत करते हैं पुअर लोग एंड ऑल दैट से, दैट इज मिसैंथ्रोप. मीनियन, जो बहुत हाई लेवल वाले लोगों के बारे के पीछे पीछे फॉलो करते हैं उनको, एंड दे ट्राई टू बिकम अ स्लेव फॉर देम, दैट इज अ मीनियन. साइनिक, जो किसी को फॉलो करता है पर सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए, दैट इज टर्म्ड एज साइनिक. सोमनाब्यूलिस्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप. Then you have ventriloquist, जो डमी से बात करवा देता है, one who has an ability कि उनका डमी एक्शन चल पाए, that is termed as ventriloquist. Egotist, one who knows or speaks only about his own welfare, when you're just speaking for your own, boasting it out, that is egotist. Altruist, I told you, जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए अपनी पूरी लाइफ समर्पण कर देता है, that is altruist. जो सरकार के जस्टिस और लॉ से दूर भागता है, that is fugitive. रेफ्यूजी, जो दूसरी कंट्री से आके इंडिया में सेटल हो रहा है, या इंडिया कोई दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो रहा है, दैट इज अ रेफ्यूजी, और यू कॉल दैट पर्सन एलियन. देन वन हु इज बैनिश्ड फ्रॉम हिज ओन कंट्री, अपनी ही कंट्री से निकाला दिया जाता है, दैट इज बीइंग इन एक्साइल. व्हेन हु हैज एन हैबिट टू स्टील, चोरी करने की आदत है किसी को, दैट इज क्लेप्टोमैनिक. वन हु स्टील्स बुक्स, जिनको बुक्स चोरी करना पसंद है, दैट इज टर्म्ड एज बिब्लियोक्लेप्ट. One who breaks images or church ornaments, that is iconoclast. One who dies for a noble cause, किसी noble cause के लिए कोई मर रहा है, that is martyr. One who lives away from the society, कि मैंने सिर्फ एक ऐसी लाइफ जीनी है जिसमें I'm serving other people and I'm all alone, that is recluse or hermit. One who is offering service, his own service, for the help, for the others' help, for the non-profit organization, that is being volunteer. One who is compelled by the law, where there are many countries, I gave you the example of North Korea, where the people, the men are being compelled that even if they are born over there, they have to become a soldier. That is conscript. When a soldier or a sailor newly enlisted, naya na abhi enlist hua hai, that is a recruit. One new to anything, it's a novice, it's a tyro, it's a greenhorn, it's an amateur. And then you have a lover of animals, zoophilist. One who engages, amateur, already mentioned, beginner. Fruitarian, जो सिर्फ fruits पे feed होता है, animal flesh नहीं खाता है, that is vegetarian. Cannibal, जो human flesh खाते हैं. Itinerant, जो एक जगह से दूसरी जगह पे travel करते हैं frequently, that is itinerant. Clear to all of you? Can we start with the quiz time? All of you ready for the quiz 1? It's going to have a set of 10 questions and you have to pop up your answers. All great. So let me ask one by one and let's see who answers the first well. Life history of a man written by himself. Easy one. Life history of a man which is written by himself. क्या होता है? सबसे easy है ये और कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा इसको. Great. Everyone, autobiography. Very good. So similar way we can revise. Biography क्या होता है? जब कोई और मेरी कहानी लिख रहा है, that is biography. मैं खुद वो चीज लिख रही हूँ, that is autobiography. So that was the difference. Calligraphy क्या आ जाएगा? जब मेरी बहुत सुंदर writing, if I say it out, I like this. So that is calligraphy, and then you have the biblio one, that is related to book study. So that is bibliography. Clear with the first? Second is this. A statement which can have double meaning.
तो डबल मीनिंग वाली स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? फर्स्ट, एवरीवन आंसर द फर्स्ट वन करेक्ट. D. Great. All intelligent peeps over there. अथरा ए, इट्स वर्बस. वर्बस इज अ पर्सन. अगर मेरी राइटिंग, अगर मेरी स्पीकिंग फुल ऑफ हैवी वर्ड्स है, अगर मैं बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स बोल के यूज कर रही हूँ, ये हमने वर्ड किया हुआ है, दैट इज फुल ऑफ स्टाइलिश वर्ड्स, इट इज टर्म्ड एज वर्बस. और डबल मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, दैट इज एम्बिगुअस, राइट? So I have already, Zion, why didn't you start at the very first time? Okay, so we have lots of sections yet to be coming. We've only done 2 sections, so be there right now, okay? So it's ambiguous. Verbose nahi, verbose hota hai. Verbose is, suppose I am talking to you, I start using words full of fanciful words. If I start, I say that I have gone to abattoir and there I had my meat and all that. So exactly, if I didn't say ki I just went for a meat shop and there I took my meat, I am saying that yes, I went to a abattoir, I went to a slaughterhouse. If I'm using very much fancy words, in my conversation, that is being verbose. My words are full of style, that is being verbose. Okay. वायरस, वायरस नहीं, वायरस, वायरस का एम्बिगुअस क्या आ जाएगा? हाँ, आ सकता है वैसे, कैन बी. Double meaning is like a statement. If I talk about ambiguous, always comes, there are 2 type of meaning. One is surface meaning, other is hidden meaning. You have heard about a very simple, let's go with the tortoise and the rabbit story, right? So what was the storyline? That yes, you have a story which means that ki rabbit बहुत तेज, बहुत ज्यादा चालाक था, वो रेस्ट करने लग गया, and that tortoise win. So that was the upper one, that was just a surface level, राइट? हिडन मीनिंग क्या था? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. मतलब हर स्टेटमेंट जो एक छुपा हुआ मीनिंग हमें बताने की कोशिश करती है, दैट इज डबल मीनिंग इन दैट स्टेटमेंट. व्हेन इफ यू हैव 2 मीनिंग्स इन अ स्टेटमेंट, वन इज द हिडन मीनिंग, वन इज द सरफेस मीनिंग, दैट इज बीइंग एम्बिगुअस. क्लियर? सो दिस वर्ड्स यू विल गेट टू नो द रेस्ट. मैंने ये 2 वर्ड इसलिए रखे हैं, एम्बिवेलेंट एंड ऑल दैट यू विल गेट टू नो इन द फर्दर. वर्बस हमने लास्ट टाइम किया था, दैट इज व्हाई आई रिपीटेड इट आउट, राइट? सो मेनी ऑप्शंस न्यू विल बी अवेलेबल फॉर यू. Go for the next one. Words inscribed on the tomb. जैसे देखी होगी ना, there are many, you can say, any person dies and in the Christians it is there, so they have written something that in remembrance of some person, so that is termed as what? जल्दी से बताओ क्या आएगा? Think about it. क्या आएगा इसमें? Take your time. What will be there? Great. C, 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 B. सारे मिक्स ऑप्शंस है, इसके साथ मार्क करके लिखा करो 3, 4 कुछ ऐसा मुझे. सो द ऑप्शन हियर इट इज योर एपिटाफ. It's a B1. Anyone who did B? Aditi did B and Athira did B, I guess, right? So yes, it is B1. When I'm talking about eology, एक word याद रख लो. It's elegy, it's or, it's eology. These are literary words. Elegy is there. ये भी बाद में आएंगे सारे, so I'm not so much concerned because these words are going to come for you. And then you have eology, right? So elegy होता है जब किसी की डेथ के बाद हम कोई mournful song गाते हैं या फिर कोई पोएम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेथ, और इट इज हैविंग अ सैडनेस, ग्रीफ पर आ जाती है, दैट इज एलिजी. और होता है किसी की प्रेस पर कोई चीज लिखी जाती है, व्हेन यू राइट प्रेजिंग समवन, द ब्यूटी ऑफ समवन, द ब्यूटी ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड एज और. And eulogy in the same way, that is a praise that is written for someone, that is termed as eulogy. उसी तरह से एपिग्राफ आ जाता है, वो आते हैं ट्रांसक्रिप्शंस, कोई क्वाइंस के ऊपर आ जाता है. तो एलिक्वेंस, ऑल वी विल रीड इट आउट. पहले सिर्फ इतना याद रख लो कुछ कुछ वर्ड्स. एपिटैफ क्या होता है? जो किसी टॉम के ऊपर, किसी की रिमेम्बरेंस पे, whenever there is a tomb and we are writing in the remembrance of someone, that is termed as epitaph, right? So let me go with the next words now. Go with the next one. The intelligent and educated class. Very easy one.
Intelligent and this one. What does it mean? Graphy always doesn't mean writing. It is when I'm denoting, I'm referring to someone that is termed as this. Four देखो क्या आएगा? The intelligent. Very good. I was aware about it that you guys are going to do it wrong. It's not this. Literate होता है person जो अगर मैं बोलूं who is well in reading and writing. It's intelligentsia. New word for you. Aristocrat हम पढ़ चुके हैं, ये eliminate हो जाता. Educated, इन दोनों में आपको doubt होना था. Literate is someone who is skilled, who is able to understand. Reading and writing, that is literate. Intelligentsia is something different. So this is something the questions come. Eliminated this through this manner. Okay. Go for the next one. These all are the questions which have come in the previous examinations of number of other papers also. So we have to give a glance to all. Science of plants, very easy. All the med, non-med students over there. Easy one. Botany, that is when there is a plant study. Good. Go for this one. List of headings of the business to be translated at the meeting. Okay. So what is the plan? What are the headings we have? It is not the proceedings. Proceeding is what's going to come next. No, it's not proceedings. It's agendas. Very good. So it is agenda. What is the agenda of the meeting today? What is the plan of meeting today? Why have kept this meeting? So this is agenda. Very nice. Great. Go for the next one. One filled with excessive and mistaken enthusiasm in a cause. Pedant हमने किया हुआ है, पेट्रॉइड हमने किया हुआ है, मार्टर हमने किया हुआ है. इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा in eliminating it out. जब हमें when we are already aware about the rest of the meanings, one meaning which is not clear, obviously you are able to decode the answer very easily, right? So what is it? It's fanatic. Fanatic is a person who is obsessed with mistaken enthusiasm in a cause, like who is always in the enthusiastic stage, who is full of enthusiasm, full of beans and all that. So that is fanatic. Okay, go for the next. The words which I'm not explaining, I'm missing it out. Like philanthropy किया हुआ है, cynic आपने किया था, altruism आप कर चुके हो, nepotism बहुत ज़्यादा न्यूज में है, it is very prevalent, तो सुना हुआ है. Regard for others as a principle of action. अब ये देखो, किसी के लिए जब हम चीजें करते हैं, किसी के लिए चीजें करना क्या आएगा? Interesting one, and a little you have to understand. Regard for others. Regard मतलब you are regarding others and you are doing some action for them. Cynicism कैसे आएगा? Cynic क्या होता था? You remember the word cynic? What was cynic? Cynic क्या होता था? When you follow someone and you mock others. Here it is mockery. Mockery का तो आएगा ही नहीं आएगा. तो how come it is there? It's wrong. Yeah, Ziol, I'm saying it out like we have already done. I don't know, you joined the class late. So we have done the three words, right? Altruism we have done, philanthropy we have done, cynicism we have done. Nepotism is a person who is, you can say it out, we have known about nepot culture. So the star kids and all that, nepotism is there over there. So you have done all the four words. Now how you need to identify it at philanthropy, who does good for poor people, right? For the welfare of mankind. That is your philanthropy. Cynicism, who makes fun of others. That is cynicism. Then you have nepotism, all the you have done star kids and all that. That is there. And altruism, when you sacrifice and do good things for others. So what is the closest one for this? Closest one for this is A. Not the philanthropy, it's not about poor and all that. It's regard for others. We are regarding others and doing some action plan for them. That is your altruism. Very good. Go for the next. One who promotes the idea of absence of government of any kind where every man should be a law into himself. What will be there? Now this is one who promotes the idea of absence of government of any kind when every man should be a law unto himself. Similar way, kith and kin are the relatives, right? So Alia Bhatt is kith and kin of whom? Go for this one.
Now here also you have to understand this terminology. It will be, yeah, it will be D1. This one we have decoded it out. One who breaks the images and all. Belligerent, you already aware, we have done it. Agnostic and anarchist. Anarchist comes as a form of government. We have done it. Anarchy. So that is anarchist. So we have to always go with the clear ones and the nearer ones. So this should be the absence of the options. Study of mankind. Go for this one. What is the study of mankind called? Easy one. What is the study of mankind? Everyone is going A, B, C, D. It's mankind. When you go for another previous one, it's anthropology. It's not the physiology, it's not the philology, it's anthropology. All the words which I'm not explaining, they're already there in the idioms in the one word substitutions ahead. So we will do it aware. So now go for the next run. I hope this much is clear and somehow we are learning with the quiz already. Now starting from the next. One who journeys on foot. Obviously, one who is journeying and who is traveling on foot, that is termed as pedestrian. One who is traveling places, one place to another, that is your, what is the term? What is that person who travels from one place to another? Very first person, drop in the comments. What is that person who travels from one place to another or places to places? What is that person called? One who travels from places to places. Fast? Itinerant, right? And if I ask you a question, one who travels on the foot, here we have done the word pedestrian. One who travels to beg alms. To beg alms, what is that person called? Let's do that word also. One who travels from one place to another to beg alms. Alms means for some money purposes and all, for some food or some other items. One who, not the minion. Minion is a follower of someone. It's a beggar, simple one. Monk. Monk does not beg you. Monk, you give it to your own. So it's a beggar. He also travels on foot. He asks from other places. So that is termed as your traveler. No, my mic is with me. Okay. So one who travels. Now, similar way. One who journeys from one place to another in the terms of foot. And he's person who is going to holy places. That is a pilgrim. Now, here you have to understand the words. One who travels on foot is a pedestrian. One who begs for the alms, that is your beggar. One who travels to holy places, that is your pilgrim. And one who travels from places to places, that is itinerant, right? One who, this we have already done. A leader of the people who can sway his followers by his way of speaking. Many of you, how many of you have heard about B.K. Shivani, Sandeep Maheshwari, Guru Gopal Das, or any other person? Like there are a number of people, Sadhguru. Many of you might have heard about him, right? So, what is there? The person, they actually, you get motivated by listening to them because their oratory skills, their speaking skills are really, really good. And that is termed as demagogue. Demagogue is when you are a leader of the people who can sway his followers by his oratory skills. That is called as your demagogue. So demagogue is a person. Yeah, I don't know about Acharya Prashant and all that. I just know this much of the words that yes, these are the ones who are quite motivating and all, right? Next you have is one who is reading is clever yet false. Now there are people who try to have you. They speak a good. They have the ability to convince you in their level, but they are speaking all the lies. That is termed as, like when you call about someone as manipulative, that is also called as your sophist. Okay, they look Sophie and all that, they look very nice, but they are very clever and they all they are speaking is false. So similarly, it is called as manipulative. Manipulative, so that you can call it out in this term, right? So boss, yeah, I don't know, the boss who is very clever and who is just taking the people to their sway. So yes, you can call it in that one also. Okay, so that is sophist. One who makes a display of his learning. Like similar way, pedant we have done is, the pedantic means artificialness the person has. Pedant means when you are just politicians, yeah, the best examples. I don't want to name any politician in particular, but they are the people who have lots of convincing power. They take the votes from you and then you regret why did we vote them. So they are not the demagogue. Demagogue is a positive word. They are the sophist. Sophist is a negative word. Then you have one who makes a display of his learning is a pedant. Person who does not know, but he's in the artificial way. I know everything. I am the one who is the best. That is a pedant. Pedant means the artificial display of your knowledge
is termed as pedant. And even if your home is there and you have beautified your home like anything, you will call it out as you're just making interior decoration so much good, and the base of the house is very much less strong. That is also called as pedant. Bragging, it can be, right? One who has a special skills in judging art, music, taste, etc. So it's connoisseur. Connoisseur is like many of you have seen India's Got Talent, or there are many shows which are coming on the basis of the Star Kids or music instruments, and many other things are there. They are the connoisseurs. Connoisseurs, all this. Geeta Ma is there, or Terence is there, and then we talk about many of the singers who say your singing was very good. Master Chef, yeah, all these people, Swad Agya, something like that. They have a lines for that. Big Boss, we cannot term it out. Remo D'Souza was there, Shakti was there. So there were many people. They have a good thing of checking the taste and the music or in the taste buds. They are the connoisseurs. So whenever I ask you next time, what about Master Chef? What about DID? What about these India's Got Talent? You have to remember this words connoisseur, connoisseur. You don't have to think about anything, connoisseur. So it is connoisseur. And export, it's all storytelling. So it's rencontre. I tell you one thing, there are some people who are very good in storytellings. Like if you start, what happened with you today? They will start from the very initial stage of the day and they will give you a big story. But the other person needs to have immense patience to listen to them. Otherwise, we just say, tell me the crux, what happened with you? And they are telling you the complete story. They're very good storyteller. That is termed as raconteur. So raconteur is a person who is very good in storytelling format, right? So raconteur is a good storytelling format, a person who has a good taste in checking of the tasting, speaking, singing. That is connoisseur. We will remember, revise all these. One who makes an artificial display of his learning is a pedant. One who is clever, who is already lying, the politicians, the way you told it out. And they're very clever and they're all the false, that is your sophist. One who is swaying his followers, oratory people, through their skills, it's demagogue. And there was a places of going traveling from one place to another. Then you have one who listens to the conversation. Now, many a times your parents are discussing about you, they are gossiping about you, and you are standing next to their door with your ears all over the door, and that is termed as eavesdropper. When you silently listen to someone's conversation, that is being eavesdropper. One who loves his country or serves it devotedly, that is patriot. We have already done this term. One who foretells the events, like prophets. Prophets are the ones who foretells, who think what is going to happen in the future. That is being a prophet, prophets. Then you have one who devotes the players of eating and drinking. I have one word for you. What do you mean by glutton? Who remembers? What do you mean by glutton? Now, there are people who find the players in eating and drinking, that when they eat good, when they drink good, they feel satisfied. And the glutton is a person who has a sin of eating a lot. So just remember it like that. Gluttony is only for your eating habits. When you eat a lot, who loves eating, and then it is epicure, one who has a pleasure in eating plus drinking. So that is the only difference. The people, the foodie, yeah, foodie can be called as gluttonous, and epicure can be told as one who gets satisfaction. How you can have a good day? If you have a bad mood, what can cheer you up? Good food, good life. That is there. A gnome of many people. That is your epicure. One who given to luxurious living. I've already told about many stars, kids who are being born. If I talk about Tamur Ali Khan, Jay is there, or many celebrities. Right now, I think there was a birthday celebration of some Ambani's grandkids and something. So they have already born to a luxurious life, born with the silver spoon in their mouth. That is termed as cyberite. So cyberites are the person who have, yes, who are born, who are brought to some luxurious living, who have a very beautiful living, who have a luxurious lifestyle of living. That is termed as cyberite. Also, you can remember the event, one who is born with the silver spoon. Okay, let me ask you one idiom. How many of you remember when you have a bad day, when you just wake up with a bad day, or your mouth is all in a grumpy mood? Which was that idiom? How many of you remember? When you wake up in a bad mood, which idiom do you use for that? When you wake up with a bad mood, tell me fast. We have done that idiom. Let me see who remembers it first and who can tell me.
Yeah, getting out from the wrong side of the bed. Get up from the wrong. Rajnikant. Great. So Rajni was the first one, and then it was up and bad side of bed. It's not bad side of bed. It's wrong side of bed, right? So great. Rahul, Anoop, and Balaji. So somewhat of you remembered it out, right? So next, go with this one who is given to sensual players and bodily enjoyment. Now you might say voluptuary. Voluptuary is a person who tries to have lots of. You can say they do. Many of the actors or many of the people today. I have brought this word because you might have seen in the newspapers also this words being voluptuous, being in the voluptuary state. That is when you're making your bodily changes for the sensual players. Or you can call it lip surgeries are there. There are so many surgeries which are being taken place. So that is termed as voluptuary. When you have something, when you find the player and you do it only for the bodily enjoyment, that is termed as voluptuary. One who pretends to be what he's not. Now, many times a person it pretends, I know a lot of things. Person is not in the category of voluptuary. It's only category of the surgeries which a person has. That is voluptuary. Voluptuary is when you are just changing your body only because to beautify it more. That is termed as being in the state of voluptuary. Lots of surgeries are going on from your tip to toe. So that comes in the stage of being voluptuous, being in the state of voluptuary, right? Next, you have is one who pretends to be what he is not. I am pretending someone, I'm not. So that is being a kind of imposter. I'm imposing someone on myself. That is imposter. Imposter is when you try to be what you're not. That is imposter. Next is one who pretends to know a great deal about everything. That is charlatan. Charlatan is one who says that, yes, I know everything. I'm the master of it. That is charlatan. So charlatan is one who knows, one who just fakes it out that yes, I know everything. Can anyone tell me what's the meaning of eavesdropper? I just remember it out. Eavesdropper. What does it mean? Tell me what's the meaning of words eavesdropper? Fast. What's the meaning of words eavesdropper? What's the meaning of the word demagogue? And what's the meaning of the word sophist? Let's ask first three. What does it mean? One who listens to other conversations, that's an eavesdropper. What is demagogue and what is sophist? Sadhguru. You just remember it through the names. If you have Sadhguru, Bikeshwani and all that, or the motivational figures, and they are positive persons, that is who are swaying through the other people's, through their positive skills. That is a demagogue. And what is sophist? Sophist is a person who is just making the person believe in the following by speaking wrong, false, and the people start following him, right? And then it comes mimic, one who imitates the voice gestures of another. If I start mimicking some actor or some celebrity, that is mimicking that person. Mimicry is being done. So that is mimic. Then you have one who enables people, different language to understand each other. Now there's a person who is from south, there's a person who is from north, one who cannot speak English, one who can. So person who mediates them, who is inter between them, that is termed as interpreter. Like if I say I don't know German, I need someone to translate it for me. That will be interpreter. From inter, we have done two words. I want to ask you them. What do you mean by interregnum? And what do you mean by interlude? Tell me these two words. Interregnum and interlude. Tell me about these two words. Fast. Go ahead. Gap between two garments, two reigns. It's not regions, guys. It's reigns. Reigns means rules. And regions तो होगी जगह. जगह की नहीं बात कर रहे हैं हम, reigns की बात कर रहे हैं, rules की बात कर रहे हैं. Good. Interlude क्या होता है? What is interlude? Interludes. What are those? Between two advertisements. Very good. Between not two advertisements, but just show and you get an advertisement between, that is an interlude. Good. Even in the movies, when you get a break, that is termed as theater. If you have gone to theaters, तो बीच में क्या होता है? theater के time में ना बीच में comedy scenes आते हैं. यहाँ अगर आप कोई भी comedy channel देख रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ बीच में क्या होता है? They try to change something. If they are having a serious discussion, they try to change the conversation to have some mimicry, comic effect, and that is interlude, right? Otherwise, it gets boring. One words in many languages. If I am very good in number of languages, that is linguist. One who can use both hands. We have already done it out, right?
YouTube ad, exactly, that's an interlude. Best example, I think, Balaji. Then you have ambidexter. वो बोलते हैं बोर हो जाते हो ना पढ़ पढ़ के, तो बीच में थोड़ी सी बोरियत दूर करने के लिए we should have some advertisements, right? Then you have is your both the hands virus, the person who uses both the hands to write, that is ambidexter. One who entertains others. Many times there are parties and parties are being conducted, they are held by someone that is termed as host. Host उसे conduct करता है, host ही entertain करता है. अभी करण जौहर की पार्टी, दिवाली पार्टी, so the person who attends it out, who attends entertain others, that is your host or hostess. One who accompanies a young lady to public places. Now many times there are some young ladies who are always taken by someone who maybe their bodyguards, you can call it out, maybe a secretary or someone, so that is termed as chaperone. Chaperone is a person who always go with the women whenever they are going to places, one place to the another. So chaperone is a person who goes with young ladies. One who is under the protection of another. Obviously, we have done this word ward or portrig. So that is, you can call it out as the person who is always under the protection of another. One who searches for minerals. अब यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इजी है, मैं कुछ वर्ड्स याद करवाती हूँ. अगर आप सर्व कर रहे हो, यू आर गोइंग फॉर सर्चिंग ऑफ मिनरल्स एंड माइंस, यू आर अ प्रोस्पेक्टर, राइट? Prospector is one who searches for minerals or mining sites. If you are in the terms going for, what do you mean by if I give you two words? Mensuration or surveying में क्या difference होता है? Any civil engineering over there? What is the difference between mensuration and what is the difference between surveying? Any civil engineer who can drop in the comments. Surveying और इन दोनों में जल्दी से बता दो. I need someone who can answer me very good in this way. Or we have these words in the later on also. किसी को नहीं याद? Take your time, think about it. None of you. Mensuration of that land. Okay, surveying is of that land. And और क्या होता है? No one is civil engineer over here. That's bad. चलो ये वर्ड्स मैं फिर बाद में करवाऊंगी, ये याद रखना. आई वांट समवन टू बी इन द सिविल इंजीनियर हु ड्रॉप मी आउट. एस्टिमेशन ऑफ मेयरमेंट. When you're measuring the land, that is mensuration, and when you are taking it the lands for perspectives, that is surveying. ये बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे, है ना? Cymex, we for sure it is like if you attend all the 5 marathons, for sure nothing will come outside from this syllabi. And even if you're not targeting only CGPTTM, Airport Authority, HPCL, it's a generic one, which is the complete baggage, bag and baggage of everything is there. So you don't have to go anywhere else for that. You just have to check out only these 5 marathons and your syllabi is done. So it's a quick revision. But yes, next marathon is very, very important, and do be there in the class only. I want you to be in the class because otherwise the things, once you just go for the documentation, it won't be explained to you, right? तो चलो ठीक है, मैकेनिकल वाले सिविल वालों के लिए मैं बाद में ही बताऊंगी. तो अभी पहले हम करते हैं. One who searches for minerals and this mining sites, that is termed as prospector. Yeah, grammar. Next is a grammar class. That is why I'm focusing it on a lot. Because next class where I'm going to have a parts of speech, that is full grammar, full sentence completion, which is there in every exam. So वो जरूर attend कर लेना. Otherwise, I say you have 50% of any exam weightage is sentence completion and the parts of speech. All the grammar is going to be covered with lots of questions as we already have based on every portion. Yeah, 27th. So do attend it that. That is very important. Monday को होगी शायद, I think. I can be wrong by a day or two. I'm not sure. There's a complete message for that also. Video has been posted. वो देख लेना. 101 rule is for that. It's not only, there are some questions and spotting classes and rearrangement. That I'll do in the panel. Otherwise, ये marathons quick revision आपका 90% तक खत्म हो जाएगा. 10-20% वो हम main जो है crux है वो obviously there will be there. Para jumbles are there. They are very important. Arrangement of sentences वो बहुत ज़्यादा important होते हैं, वो आते हैं आपके हर एग्जाम में, right? So वो जरूर कर लेना. ये क्लासेस बाद में ये paid, it is just कि YouTube में है because of you guys to have an interaction at a good level. And other than this is, it might be going logged after this. So that is why
I channelize की classes यहाँ पे लगा लिया करो. Plus interactions are full of goodness only. It's not a bad stage. तो interact करा करो class में and you should have that exposure, right? Next is a messenger sent in a great haste. We all know couriers. Courier क्या होता है? जब बहुत जल्दी जल्दी में आप send कर रहे हो. One who steers a boat. One who is there and who is taking a boat. It's coxswain. That is your coxswain. Coxswain is a person who steers a boat, who regulates a boat. It's coxswain. Then you have an acrobat who bends his body into various shapes. Is contortionist. Contour करना अपने आप को. That is regulating, flexibility, acrobatic करना, अपनी body को different postures में move करना. That is contortionist. Then a hater of marriage. Someone who hates marriage, who says, I never want to marry. That is misogamist. Misogamist. And hater of women, one who does not like women, that is your misogynist. Philogynist क्या होता? अगर philo word होता तो क्या होता? Ravi is hater of women or hater of marriage. So there are two words, misogamist or misogynist. Miso का मतलब ही hate होता है. Miso means hate. एक आ गया गेमी. गेमी का मतलब होता है मैरिज. गाइनी का मतलब होता है विमेन. जिस तरह से मैंने बोला था, एंड्रो का मतलब क्या होता है? मेन, राइट? Sallu bhai is not a hater of women or marriage. He does not got married, that's all. Anup is misogynist, right? So it is not he is a hater. He did not get married. So you can talk like that. Okay? A person who does not get married, he will say that yes, I hate marriage or I hate women for any reason. Okay. So then you have as a person is a low state of health or over anxious of his health. It's valetudinarian. So it is. There are some people who always say they're very concerned about their health. You remember Michael Jackson? Mike's right now you hate marriage, but sooner when you get settled, you have a good job and you will start liking marriage also. That's a concept which every till 25 we always say, we all say it out, and then we say that okay, it's okay to get married, right? So it should not be bibliogynous. That's a good one. So okay, next is valetudinarian. Now there are some people, if you remember Michael Jackson have already appointed lots of people for their good health. He has a team of doctors ready for him. He used to go for a fixed schedule, but none of the person could save him out. He just died at a very early age. I would say hardly 33 or 34. So person is very concerned about his health and all that, and who takes a good precautions for that. That is termed as your valetudinarian. Now the charm of the marriage, when I just name that word with you, everyone gets so excited, right? And everyone is seeking different this comments over there. One who worries a candidate for election by interruption and awkward questions. That is heckler. Heckler क्या होता है? जब किसी की conversation, किसी candidate की आप interview ले रहे हो, and when you are interviewing someone and you start asking very tough questions. You remember the movie Nayak? I just love that movie. It was by Anil Kapoor, and he was taking the interview of Ambrish Puri was there, right? So what happened in that movie was that I think Anil Kapoor was taking the interview of Ambrish Puri, and there he started asking very difficult and awkward questions. It was a live one. So that can be termed as, yeah, one day CM. It was a very beautiful movie, and that is heckler. There, the Anil Kapoor was a heckler. So here you got another term for Anil Kapoor. Anil Kapoor is a heckler over there. That he started irritating Ambrish Puri with the set of questions. And whenever, normally when there are interviews, already the interviewer, the person who gives an interview, that has already the set of questions which is going to be asked to him. So that is why they are taking lots of precautions in a life. What do you expect if Modi or any other person who is there in the politics, who is taking maybe an interview, they have a set of idea what kind of questions are going to come. Normally it happens in 90% of the interviews. It's not 100% that yes, but in most cases, right? So they are aware what set of questions are being going to ask from them. That is why they say yes to the interview. And otherwise, there is always like interruption, and there is a kind of a heckler, that is who always asks some stupid or nonsense questions, you can call it out, or difficult ones. Then you have is one who tries to get votes for an election candidate. Canvasser. Canvasser is, suppose I support a party. Then what happens is, you will call it out, I support some party, and I say, please vote for that person. I am a kind of canvasser for that person because I am taking interview and I am asking that person, right? So one who gets votes for to tries for that election, that is canvasser.
Next is an unthankful person. Now, you meet in your life many of the people who are always ungrateful, whatever you do for them. So, that is a kind of ingrate. They are not grateful for you, they are thankless for you. So, that is ingrate. So, whatever you do for them, they are always in that state that you cannot. They are the thankless people, you will say loud, and most often we have met them. So, that is ingrate personality. And many of our friends, from friends, I remember a word. What do you mean by bosom friend? What do you mean by bosom friend? Anyone? That's our friends. Exactly. They are the most ingrate personalities. Beast friends. Close friends. Yeah. Not the beast ones. They are the best ones. Rajnikant has given the word beast for those. So you remember the word beauty and the beast. Yeah. Best ones, close friends. And can anyone tell me there was an idiom which was based on the hand, and what was the other word which was used with it? Hand and what was the word? Remember? What was the idiom with it? Hand and gloves, hand and gloves. And what does it mean, hand and gloves? What hand and gloves means? Hand gloves नहीं था, hand and gloves था. What does hand and gloves mean? Let's see how many of you remember. Close. The ones who are very intimate friends or very close friends, they are hand and gloves. Very good. Next you have is a person who collects things belonging to ancient times. That is antiquary. Antiquary, antiqueness से आ गया, जो पुरानी चीजों के बारे में इकट्ठी करता है चीजों को. That is antiquary. Antiquary is a person who collects old things. One who collects coins. Now there are people who have a habit of collecting postal stamps, collecting coins and all that. So that is numismatist. Numismatist. Anyone numismatist over there? Because there are people who have collected the coin of 10 paisa, 1 paisa, 50 paisa. Even anyone who has served 500 rupee note right now, antiqueness is there, right? So 500 rupee coins में जब आते हैं ना, so whatever coins of you have, myself is always a wrong word. I always say to everyone, myself, whenever you start it out, it's me, it's the right one. Myself is a wrong word to demark it. And we use it in informal. 20 paisa, zero paisa. So you have used different of words over there. Great. So next we have is one who has been before another. Before another, it's a predecessor. After another, it's a successor. So it's a before, and after, it's a successor, right? Next one who kills political figures. Now, if you remember, Mahatma Gandhi, he was assassinated. He was killed. Who killed him? Who killed him? And when? How many of you remember? Let's see. Let's check out your GK also. General knowledge. Who remembers it out? Nathuram Godse, right? And when he was killed, when he was assassinated, Mahatma Gandhi? Which year? Yeah. So it was great. So it is all, remember, like whenever you kill some political figures, so that is termed as, it's not killing, it's the word which is used is assassination, right? Assassin. A partner in crime, we all have. Now, number of times I have already given you, there are some quotes which we use for our friends. We are a partners in crime. We are the hand and gloves. So you have different Insta quotes ready for you. So here it is accomplice. Accomplice is a person, my accomplice, my partner in crime. So that is accomplice. He's accomplishing, he's helping you in the task. That is accomplice. One who lives at the same time. Me and I, you are living at the same time. We all might be in the different cities, might be in different ages, might be into different timings or something. So that is, if I call Narendra Modi and I, we both are the contemporaries because he is living in the country at the same time I am residing. So that is termed as being contemporaries of one another. One who has an irresistible desire of alcoholic drinks. One other word, who cannot control that, yes, I want to drink a lot and lot. And it's always all about alcohol. It's alcoholic. Who can tell me the another word for alcoholic? What's another word? D. Ravi is alcoholic. Dipsomania. Very good. It's dipsomania. Okay, and one who abstains from drinking, that is who stops, who says, I don't want to drink. What is that person called? Teetotaler or dipsomania. What is that word? Yappan? What is that person who abstains from drinking, who says, I don't want to drink, I don't want to do that? Sober. Sober is an informal word. You won't find it in the books. Yeah. Teetotaler. Teetotaler आ गया उससे different. जो बोलता है मैं drinking नहीं करूंगा. I am the one who won't drink. That is teetotaler. Very good. Next you have is, this we have already done, teetotaler.
Women with light colored hair. So there are many people, you might have your friends who have a habit of coloring their hair. I don't know why people take so many tricks with their hair these days, but yeah, there are people who have lighter shade of colors. The kind of color, the light colored hair is blonde, and basically you will say not the white hair, it is brownish and all that, right? So light brown kind of a shade. So that is blonde. If you will talk about foreigners and all that, they always have a blonde. Blue hair is not there. They are not dumb. They are the ones who reciprocate for different kind of things which happens, like blue, pink. I had my friend, not my friend, but there was a person in my university. She sat up front for me and she had blue hair. And after one wash, it was to be gray hair or something like that. So it is always an experimenting state, and that is blonde. Okay. A woman with dark hair, that is brunette. Gen Z trend, not the Gen Z. I have been Gen Z, but I have not taken any coloring on my hair. I don't want, and none of you should take it out. It's damaging it out, right? So a woman with dark hair, it's brunette, right? So you will find, Ravi, lots of people like this anywhere, all side the country, right? So one who hides away on a ship to obtain a free passage. If I say many a times on trains, many people hide themselves in washrooms or somewhere when the tickets are going to be checked. So similar way, when someone is hiding on the ship, when someone is checking their tickets, maybe, so that is a stowaway. Stowaway is a person who hides himself on a ship to obtain a free passage. So that is termed as stowaway. And one who shoots with bows, that is an archer. We all know that. One who fishes rods, one who uses a rod for the fishing, that is an angler. Angler is that person, right? So clear till here. Before I go with the quiz, we have already done, we have already hit a century, maybe more than a century till now. And how many of you feel that, yeah, they were very, very tough ones? Before I go with the quiz, you want a revision or we go with the direct with the quiz one? Tell me fast, guys. One more. Tell me fast because we have to go with the next one. लंच बाद में अभी नहीं थोड़ा वेट करो अभी hardly 1.5 hour now 15-20 minutes and then we will have a break for 5-10 minutes for sure but wait okay revision okay we'll go with a quick revision of this segment only and then we will go with the quiz then one more section and then you can have the lunch okay so when you will read it again and again it will become easier for you also for sure पहली बार तो tough लगेगा ना थोड़ा सुन रहे हो first time but slowly you will be able to have it in the easier run अब तुम्हें कुछ वर्ड्स याद होने शुरू हो जाएंगे लेट्स गो विद द फर्स्ट वन नाउ सो वन हु जर्नीज ऑन फुट इसी तरह से याद करते हैं सो जब मैं फुट पे चल रही हूं दैट इज पेडेस्ट्रियन व्हेन आई एम आस्किंग फॉर आर्म्स दैट इज बीइंग बेगर वन हु इज ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस इटिनरेंट राइट और क्या था वर्ड जब जर्नी जा रही है किसी होली प्लेस के लिए तो क्या आ गया पिलग्रिम आ गया पिलग्रिम राइट वन हु गोस जब कोई लीडर है जैसे बीके शिवानी संदीप महेश्वरी जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं अपनी ही डायरेक्शन में अच्छा बोल के दैट इज डेमागॉग और जब कोई पर्सन बोल रहा है मोटिवेट कर रहा है पर गलत डायरेक्शन में दैट इज बीइंग सॉफिस्ट वन हु मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग बहुत ज्यादा फैंसी डिस्प्ले कर रहा है दैट इज पेडेंट पेडेंटिक आर्टिफिशियल डिस्प्ले ऑफ नॉलेज वन हु हैज अ स्पेशल स्किल हमारे जितने भी इंडियन आइडल्स और यू कैन कॉल इट मास्टर शेफ्स ये क्या आ गए कॉनिस्योर्स कॉनिस्योर्स कौन है ये लोग हमें नहीं पता रोज कोई नया नया आ जाता है तो दैट इज कॉनिस्योर आज तक श्योर नहीं हुआ कोई शक्ति कपूर पहले एक वो होती थी शी वाज अ पर्सन हु वाज इन दैट एपिसोड then she became a judge then they use the words Geeta ma always uses the words which are like out of English she uses so many big words to praise someone so that is connoisseur कौन है ये लोग इससे याद कर लो next is an expert at storytelling that is rank counter कर रहे हो इस स्टोरी को ईज़ड्रॉपर जो किसी की कन्वर्सेशन को सुनता है पेट्रॉइड जो अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा डिवोटी है देन यू हैव प्रॉफिट जो फ्यूचर टेल करता है एपिक्योर जिसको खाने पीने का बहुत शौक होता है दैट इज हु फाइंड द प्लेयर्स इन ईटिंग दैट इज एपिक्योर वन हु इज डिवोटेड टू लग्जरियस लिविंग all these celebrity kids they are to that sybarite one who has essential players जो बहुत ज्यादा सर्जरीज करते हैं and they try to change their body structures that is termed as being voluptuous and then is one who pretends to be what he's not कोई pretension करता है जो नहीं होता है वो person that is imposter then one who pretends to know a great deal जिसको सब कुछ पता है who fakes it out that is a charlatan then one who imitates the voices gestures of another that is a mimic
one who can enable people speaking different languages to understand each other, दूसरे की भाषा को translate करता है, that is interpreter. जो बहुत ज़्यादा languages में fit होता है, that is being linguist. One who can use both the hands, that is ambidexter. One who entertains another, that's a host. One who accompanies a young lady to public places, that is your chaperone. One who is under the protection, किसी के head के अंदर है, that is ward या guide. One who is searching for minerals mines, that is prospector. Prospector होता है जो minerals को search करता है. Messenger send, जो बहुत जल्दी से हम messenger को send कर रहे हैं, that is your courier. One who steers a boat, जो boat को चलाता है, that is your coxswain. One who is bending his body into different positions, that is contortionist. Contour कर रहा है अपनी body को, contortionist, right? Then there's a hater of marriage. Marriage नहीं पसंद है, misogamist. वुमेन नहीं पसंद है तो माइसोगाइनिस्ट, गाइनी आ गया वुमेन के लिए, गेमिस्ट आ गया मैरिज के लिए. वेलिटुटेरियन, दैट इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज हेल्थ, ओवर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ. देन इज हैकलर, जो इंटरव्यू में उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस करके जो पर्सन जिसकी इंटरव्यू है उसको कंफ्यूज करता है, दैट इज हैकलर. कैनवैसर, दैट इज अ पर्सन हु ट्राइज टू गो गेट वोट्स, किसी की हेल्प करना कि मुझे वोट दिला दो, दैट इज कैनवैसर. An unthankful person is ingrate, a person who collects things belonging to ancient times, that is antiquary, right? And one who collects coins, that is numismatist. पहले होना predecessor, बाद में successor. किसी political figure को kill करना, that is assassin. Partner in crime, accomplice. किसी same level में जीना, that is contemporary. Alcoholic drinks की बहुत ज्यादा demand या बहुत ज्यादा पीना, that is alcoholic, या फिर dipsomania. बिल्कुल मत पीना, teetotaler. Woman with light colored hair is blonde, dark colored hair is brunette. Then you have is a person who hides in a ship to have a free passage, that is stowaway. Bows के साथ shoot करना, that is archer. And fish rod के साथ angler. Clear with it? Let's start with the quiz. All ready for the quiz now? How many of you are ready? Quiz के लिए कौन कौन ready है? जल्दी से बताओ. All ready? Easy questions, easy peasy, not tough ones, right? Chalo, great. Let's start with the first one. An office with no work. Everyone wants this thing in their lives. ये पता होना चाहिए क्योंकि तुम लोग को यही चाहिए कि नहीं चाहिए. Whenever you're taking the interviews, I ask you why you want to go for the government sector, why you want to be in that position, right? And the person answers, मैम वहाँ पे काम कम होता है और प्राइवेट में काम बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, हमें बहुत ज्यादा we call it out अलाउंसेस मिलेंगे. इन चीजों की वजह से मुझे जाना है, काम ना करना पड़े और पैसा मिले. So that is there. क्या आएगा? All the people who wants to be sinecures. So that is an actual version. I tell you, this actually happens when I'm taking the interview and they say it out. क्यों जाना है आपको सरकारी में, क्यों नहीं गवर्नमेंट में? Why don't you want to go in a private? Why you want to go in a government only? Ma'am, I want to get all the facilities, all the high pays, all the my people will respect me. And the best is I'm going to get medical leaves, sick leaves, and one person try to say all the leaves also. So that is the best thing. So sinecures, all of you. Then one who deserts his religion. अच्छा, अब लोग जो religion को छोड़ देते हैं. That who wants to desert his religion. Deserter, apostate, turncoat, क्या आएगा? More pressure for these people. Banking has a great pressure. I tell you, like it's like SBI and all that. They have great pressure. Everyone is with the good answers right now. Okay, क्या आएगा इसका आंसर? It's a very easy one. जो easy होगा, that is yeah, every has facilities of leave and all that. Are you worrying for that? Apostate. Apostate is a person who leaves. Very good. B is the right one. The kind of looking back upon the past events. इसको बताओ जल्दी से क्या आएगा? ये भी बहुत easy है. बहुत easy है ये. पुरानी चीजों को लुक बैक करके सोचना. नो, इंट्रो होता है सेल्फ एनालिसिस करना. मैंने गलती किया, आई एम ट्राइंग टू इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ. इट्स नॉट इंट्रो, बाहरी. एक्सट्रो बाहर होता है. रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रो पास्ट. रेट्रो से याद कर लो. रेट्रो क्या होता है? पास्ट का. तो पास्ट आ गया तो क्या आ गया? रेट्रोस्पेक्शन आ गया. इजी था. ठीक है. नेक्स्ट,
वेरी विजिलेंट एंड कॉशियस. बहुत पर्सन है जो विजिलेंट है, बहुत मेहनती हो सकता है, बहुत ध्यान से काम को करता है. दैट इज वेरी विजिलेंट एंड कॉशियस. इजी है ये भी, इजी पीजी. ये फोर्थ है ना? या फोर्थ वन. जल्दी से कूल ब्रो आंसर इट. ए वेरी गुड. मेटिकुलस. मेटिकुलस. अलर्ट नहीं आएगा. अलर्ट तो एनीवन कैन बी अलर्ट. मेटिकुलस इज द राइट वर्ड फॉर इट. सो द आंसर इज वेरी विजिलेंट एंड कॉशियस. इट्स मेटिकुलस, राइट? नेक्स्ट इज मैटर रिटन बाय हैंड. इजी. पहले बुक्स जो लिखी जाती थी ना, आई टेल यू द फर्स्ट, इंग्लिश वाज नॉट दैट प्रोमिनेंट लैंग्वेज. इट वाज फ्रेंच. फ्रेंच वाज वेरी प्रोमिनेंट लैंग्वेज. बट जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद इंग्लिश की डिमांड बढ़ गई और फ्रेंच की डिमांड कम हो गई. अदरवाइज जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, आज तुम फ्रेंच पढ़ रहे होते, इंग्लिश ना पढ़ रहे होते. B. Manuscript. And the books were written by hand before the printing press that came in 14th century. 14th century में, नहीं, Sanskrit and all that they came. These all scripts came later than that. पहले manuscripts and all that, even the printing press came after 14th century. 14th century में आई थी printing press थी. उससे पहले handwritten था, तो manuscripts and that were there. Next, a small shop that sells fashionable clothes, cosmetics, etc. Store, stall, boutique or booth. ये तो तुम्हें पता होना चाहिए. Everyone knows. Many girls should not answer this wrong to me, at least. Yeah, good. Atira answered right. I knew that girl can never answer it wrong. So it's a boutique. Boutique is a place where you go and you get your this stuff corrected and you get your stuff. One who is honorably discharged from service. जिसको बहुत ज्यादा हम ऑनर के साथ सर्विस से डिस्चार्ज करते हैं. What is it called? Seventh one. What is it called? Emeritus. Now don't go for retired, it's emeritus. Emeritus is a person who is honorably discharged from the service. Retiree is a person who retires. But when you're honorably discharged from some place, that is emeritus. Emeritus. Okay. Now it is one who cannot be corrected. जिसको correct नहीं किया जा सकता. क्या होएगा? Emeritus is a person who we will call it out just when you complete your tenure. That is termed as in this way, that is emeritus. And that is very respectful one. You have named yourself in that one. Go for that. This one, what will be there? Okay, so it's B1. Good. So right one, so yeah, it is incorrigible. B1, how many of you answered it right? So it's B, incorrigible, right? Great. Next you have this one. One is in charge of a museum. Curator, supervisor, caretaker, or the warden. I'll tell you about that later, that how many words are there, but who is in charge of a museum? Curator, supervisor, caretaker, or warden. All the words are very relevant to one another. A1, everyone answered it right. Curator one. Great. So curator is a person who is in charge of any museum. Go for the next. Study of ancient societies. Societies की study करना. पहले हमने humans की बताई थी. If there was a humans, what would have it been called? And now it is the society. क्या आएगा societies में? D. Ethnology. No. एंशियंट चीजों को स्टडी करना हमने ह्यूमंस का भी पढ़ा था. अभी क्या आया था? इट वाज एंथ्रोपोलॉजी. वी हैव ऑलरेडी डन इट आउट. एंथ्रोपोलॉजी. आर्कियोलॉजी होता है पास्ट के साथ स्टडी करना. A for humans, right? A for humans, A for anthropology is there. Societies and all that we are being studying and all that. So first, any doubts still there before I go with the next one? It's related to the professions or trade. अभी तक doubt है या you need some break for 5 minutes? Up to you guys. If you need a break, or we can continue with this segment and then we can have a break. Yes, अपन lunch break. Answer is similar. That is anthropology for this one. Break. Everyone wants a break. Okay. So how long? Maximum 10 minutes. Then
We're gonna meet. It's 1:45 by my side, so we're gonna meet by 1:55. Okay, before that. And when you pop up, just drop in the comments. I'm going to start again with this section. Okay. So 10 minutes maximum, not 15, only 10 minutes, 9 to 10 minutes. Okay. So just come fast. And after 10 minutes, I'm going to see you soon. Okay. Take care. Bye bye, guys.
Okay, so is everyone back now? Can we start? How many of you are back? How many of you are back now? Tell me fast. Okay, I'm 3 minutes late. I was waiting, but I didn't get any much of the comments right now, so I thought that let's wait. Okay, Rajni is there, Ravi is there, Yappan is there. Great, all of you. So cheer up, guys. Now we are going to start with the next topic, and we are going to have it a full swing because we have to do lots of one words and all that, right? So just give me 1 second. Let me connect it out first. Okay, so fine, all of you. Great. Now we can start with the next section. Any doubts till now? All refreshed, all full of beans? Any doubts till now? To anyone? किसी को कोई doubt? Can we start next? अब आ जाते हैं profession पे based, right? So till now we have done the attributes are there with the person or with the government and all that. Who can tell me the answer of 2-3 questions before we proceed ahead? What do you mean by oligo? What do you mean by Pluto? What do you mean by strato? What do you mean by caquisto? And what do you mean by concert? 5. Let's revise. What? How many of you remember these all 5? Dive in fast with your answers. Okay, oligo, rich, Pluto, rich, strato. All 5 together, guys. All 5 together in one go. Few. 3 is strato. I'm writing it fast, so I am not writing it good. Otherwise, I have good writing, guys. Strato crazy. Okay, so it's yeah, great. Oligo is when it is by a few. Pluto is by rich. Strato is by military. Caquisto is by bad citizens. And consort is the wife or husband of, you can say, some king or queen. Great. Now let's start with the profession. Now one who attends to the diseases of eyes ke diseases ko regulate karne wala, that is oculist. Oculist as a person is a little tough, so hear it nicely. So first is oculist, who diseases of the eyes. So eyes is your oculist. Okay. Next you have is the next one who tests our eyesight and sells spectacles. So that is optician. Optician is a person who sells the spectacles. आई के डिसीजेस के साथ ऑक्यूलिस्ट आ गया, जो स्पेक्टिकल्स एंड ऑल दैट आई टेस्ट करता है, दैट इज ऑप्टिशियन. वन हु अटेंड्स टू सिक पीपल एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स, दैट इज अ फिजिशियन. मेडिसिन का डॉक्टर जो होता है, जेनरिक मेडिसिन का आप डॉक्टर के पास जाओगे, दैट इज टर्म्ड एज फिजिशियन. फिजिशियन बोलते हैं उसे. देन यू हैव वन हु ट्रीट्स डिसीजेस बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस. जो ऑपरेशंस करता है, डिसीजेस को ट्रीट करता है, दैट इज टर्म्ड एज सर्जन. One who attends to the 10 teeth, that we all know, that is your dentist. One who cuts precious stones, diamonds and all that के लिए जो stone cutting होती है, वो करने वाला, that person is called as lapidary. Lapidary. One who writes for the newspaper, it's a journalist. One who plans and draws the designs of buildings and superintends their erection, that is termed as architect. मतलब building के design के साथ क्या आ गया? That is architect. Let's revise these first. First is your आई के डिसीजेस के साथ ऑक्यूलिस्ट. आई के चेकिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पेक्टिकल्स, दैट इज ऑप्टिशियन. सिक लोगों को मेडिसिन डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज फिजिशियन. ट्रीट्स डिसीजेस बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, दैट इज सर्जन. वन हु अटेंड्स टू द टीथ, दैट इज टर्म्ड एज डेंटिस्ट. One who cuts precious stones, that is termed as lapidary. One who writes for the newspaper, it's a journalist. Till now, and then for the designing of building, that is termed as architect.
वन हु ड्रॉज प्लान्स, जो प्लान्स को ड्रॉ करता है ड्रॉट्समैन. मैप्स को ड्रॉ करने वाला कौन सा होता है? The process of drawing the maps, what is that called? Who remembers it out? Maps को ड्रॉ करने वाला. Anyone? Because here it is with plans. Maps वाला कौन सा होता है? बालाजी, रवि, अपन, दिवांशी. Anyone who remembers the answer? Rajni, who remembers it out? None. काटो के साथ कुछ आंसर है. Map drawer. Very, very good answer. The perfect answer, map drawer. Let's go for the basic slang, right? No, that's not the answer. काटो के साथ बेस्ड होता है. CARTO. क्या आता है? Map grapher like that. No, okay, let me tell you after that. One who deals in flowers, that is a florist. One who deals in fruits, fruitarian, fruiterer. One who deals in cattle, cattle को draw करने वाला, जो बोलते हैं ना कि herd लेकर जाता है, so that is termed as drawer. One who deals in clothes and other fabrics, that is a trapper. One who is professional rider of horse races, that is a jockey. Jockey बोलते हैं. One who studies rocks and soils, geologist. One who studies the past through objects left behind is archaeologist. One who foretells things by the stars is an astrologer. And one who tells about the future, predict करता है events, उसे क्या बोलते थे? One who predicts your future, who tells the events like that. What is that called? वो क्या होता था? जल्दी से बताओ. Prophet. Very good. And one who tells stars से देख के जो बोलता है, that is astrologer. बाबा नहीं होता वो. One who flies an aeroplane, that is a pilot. One who cleans the street, जो streets को साफ करते हैं, termed as squanger. Squangers बोलते हैं उसे. One who lends money at exorbitant interest. मतलब there are some people who do finance का काम करते हैं, तो वो interest rate बहुत ज़्यादा बैंक से डबल करके देते हैं. They are termed as ussurer. Okay, ussurer you can call it out. तो ussurer you can remember it through it. Use करते हैं आपको, जो लोग use करते हैं, that is termed as, और interest डबल करके देते हैं, it's termed as ussurer. One who draws map, I told you, cartographer. काटो से याद रख लो. मैप ड्रॉ वाला आता है, कार्टोग्राफर आ जाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स इज अ फिलैटलिस्ट. अगर आपके दो तीन था, अगर क्वाइंस था न्यूमिस्मैटिस्ट एंड पोस्टेज स्टैम्प्स, इट इज कॉल्ड एज फिलैटलिस्ट. फिलैटलिस्ट इज अ पर्सन. One who performs daring gymnastic feat, that is acrobat. One who travels from place to place. Now, person who travels from place to place is itinerant, but person who is selling miscellaneous articles is a chapman. Chapman बोलते हैं. One who watches over students taking an examination is an invigilator. The person in charge of a library is librarian. Person who writes shorthand, that is a stenographer. One who writes poetry is a poet. One who writes novel is a novelist. One who writes books is an author. Easy one. डिक्शनरी को करने वाला इज अ लेक्सिकोग्राफर. अब दो तीन टर्म्स है, दोबारा से रिवाइज करते हैं यहां तक, फिर हम आगे मूव करेंगे. लेक्सिकोग्राफर आ गया डिक्शनरी वाला, कार्टोग्राफर आ गया आपके मैप्स वाला, बुक्स लिखने वाला आ गया ऑथर, नॉवेल्स नॉवेलिस्ट, पोइट्री पोइट. शॉर्ट हैंड मतलब छोटी प्रेसी लिखने वाला होता है स्टेनोग्राफर, स्टेनो का काम करता है. लाइब्रेरी का इंचार्ज क्या आ गया? लाइब्रेरियन आ गया. जो स्टूडेंट्स अगर पेपर दे रहे हैं उसके ऊपर हेड कौन आ गया? दैट इज योर इन्विजिलेटर. अगर पर्सन अगर मूव कर रहा है प्लेस टू प्लेस एंड ही इज सेंडिंग सम मिसलेनियस आर्टिकल्स, दैट इज टर्म्ड एज chapman. Chapman is a term. Then you have one who performs daring gymnastic feats, that is an acrobat. One who collects postage stamps, that is philatelist. One who draws map is a cartographer. बहुत ज़्यादा high interest पे अगर पैसे दे रहा है तो usurer. One who cleans the street is a scavenger. One who flies an aeroplane is a pilot. One who foretells things by the stars is astrologer. One who studies the past through objects left behind, that is archaeologist. One who studies rocks and soils is a geologist. A professional rider is a jockey. One who deals in clothes and other fabrics is draper. One who deals in cattle is a drover. Fruits में fruiterer, flowers में florist. Maps बनाता है तो आता था cartographer. Plans बनाता है तो draughtsman होता है. Then you have buildings बनाने वाला architect. Newspaper लिखने के लिए journalist. Precious stone को cut करने वाला lapidary. Teeth के लिए dentist. ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सर्जियन, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने वाला फिजिशियन, स्पेक्टिकल सेल करने वाला इज ऑप्टिशियन, और अगर आईज के डिसीजेस को चेक कर रहा है दैट इज ऑक्यूलिस्ट. राइट? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
फिर से देख लो लेपिडरी क्या होता है, ये जो भी डिफिकल्ट टर्म्स है, आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस राइट नाउ. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी वर्ड में किसी मीनिंग में. Now I'm going to ask you 3-4 questions before I move to the next one. यहाँ तक कर लो पहले. Answer me fast. 3-4. What do you mean by? पहले बता दो मैप की स्टडी के लिए क्या तुम वर्ड यूज करते हो, which is important one. What is the meaning of the word Chapman? Chapman क्या होता है? Next you have to tell me what do you mean by florist. कार्टोलॉजिस्ट नहीं होता, CATO स्पेलिंग देखो, काटो की भी स्पेलिंग सही करो. व्हाट डज इट मीन? और मुझे एक वर्ड याद कर दो, न्यूमिस्मैटिस्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमिस्मैटिस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय जॉकी? न्यूमिस्मैटिस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय जॉकी? ये 5 वर्ड्स हैं, यहां तक रिवाइज कर लो. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. क्या आएंगे मीनिंग्स, क्या क्या है? फ्लावर्स डील्स विद फ्लावर्स, राइट? सो फर्स्ट इज मैप वाला क्या आ गया? कार्टोग्राफर आ गया, कार्टोग्राफर. चैपमैन वाला क्या आ गया? सेलिंग बाय मूविंग प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वेरी गुड. फ्लोरिस्ट फ्लावर्स के साथ. रजनीकांत आंसर ऑल राइट. दैट इज क्वाइंस के कलेक्शन के न्यूमास्टिस्ट. एंड जॉकी जो बहुत अच्छे से राइड करता है, हॉर्स राइडर. एग्जैक्टली. Rahul answered it right, I think. Yappan, you forgot 4th and 5th? 4th you forgot, right? Yeah. So good one. Yeah. So these were the most important till now. Dictionary के लिए होता है lexis. Lexis होता है ना word जो dictionary के लिए होता है. तो lexis उससे आ गया lexicographer. Then you have one who studies the evolution of mankind. Mankind की evolution कहाँ से evolve हुआ है? That is your anthropologist. One who studies the working of human mind. Human mind की study क्या करते हैं? Psyche को study करना. That is psychologist. Till now, see, these were very quick. थोड़े tough थे ये वाले. रिवाइज करेंगे, एक बार और रिवाइज करते हैं, फिर हम मूव करते हैं टू द प्लेसेस वन. ध्यान से एक बार दोबारा सुनना, बिकॉज इसके नेक्स्ट के बाद टेस्ट है. ठीक है, तो एक बार और करते हैं. फर्स्ट इज योर, यहां से कर लेते हैं. बिल्डिंग्स के साथ आ गया आर्किटेक्ट, प्लान्स के साथ आ गया ड्रॉट्समैन, मैप्स के साथ आ गया कार्टोग्राफर, फ्लावर्स के साथ आ गया फ्लोरिस्ट, फ्रूट्स के साथ आ गया फ्रूटर, कैटल जो भेड़ बकरियों को चलाता है वो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवर. ड्राइवर से याद कर लो, ड्रॉवर. फैब्रिक्स के साथ ड्रेपर, अपने कपड़े को हम ड्रेप करते हैं, वी ड्रेप अ साड़ी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रेपर. प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्सेस, दैट इज जॉकी. स्टडीज रॉक्स एंड सॉइल्स, इट इज टर्म्ड एज जियोलॉजिस्ट. पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करने वाला आर्कियोलॉजिस्ट. इवेंट्स को फोरटेल्स, फ्यूचर में बताने वाला, इस स्टार्स के थ्रू आ जाता है एस्ट्रोलॉजर. नॉर्मल इवेंट को प्रपोज करने के लिए दैट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट. एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए पायलट. स्ट्रीट को क्लीन करने वाला स्क्वेंजर. मनी को बहुत हाई इंटरेस्ट पे देने वाला इज रिसर्चर. मैप्स को ड्रॉ करने वाला कार्टोग्राफर. कलेक्ट्स पोस्टल स्टैम्प्स, दैट इज फिलैटेलिस्ट. अपनी जिम्नास्टिक एक्टिविटीज को कैरी करने वाला एक्रोबैट. एक एक्टिविटीज चीजों को सेल करने वाला फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज चैपमैन. इन्विजिलेटर हु इज टेकिंग एन एग्जामिनेशन, हेडिंग इट आउट. लाइब्रेरी का हेड लाइब्रेरियन. शॉर्ट हैंड प्रेसी देने वाला, इट्स योर स्टेनोग्राफर. पोइट्री के लिए पोइट, नॉवेल्स के लिए नॉवलिस्ट, बुक्स के लिए ऑथर. डिक्शनरी के लिए लेक्सिकोग्राफर. मैनकाइंड एवोल्यूशन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट. देन यू हैव साइकोलॉजिस्ट टू स्टडी ह्यूमन माइंड. इससे तक आपके 3-4 सेक्शंस हो चुके हैं. हाफ ऑफ इट इज डन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट्स बेस्ड ऑन द प्लेसेस. प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ये हमने छोटे होते किए थे. जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है क्या होता है? एवियरी, अवायरी. फिशेस आर केप्ट एक्वेरियम. शेल्टर फॉर अ डॉग, डॉग जहां पे रहता है, व्हाट इज इट कॉल्ड? कैनल. कैनल इज अ प्लेस वेयर डॉग इज केप्ट. होम ऑफ अ लायन इज अ डेन. दोबारा से 4 दोबारा से, दैट इज फर्स्ट इज बर्ड्स को रखने वाली एवायरी, फिशेस के लिए एक्वेरियम, डॉग के लिए कैनल, लायन के लिए डेन. मॉन्क्स और जहां पे प्रीस्ट रहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज मोनेस्ट्री. मॉन्क्स और प्रीस्ट के लिए क्या आएगा? मोनेस्ट्री. जहां पे नन्स रहती हैं वहां पे कॉन्वेंट. तो मॉन्क्स एंड प्रीस्ट मोनेस्ट्री, नन्स के लिए कॉन्वेंट. अ प्लेस वेयर मिल्क इज कन्वर्टेड टू बटर एंड चीज, बटर एंड चीज में कन्वर्ट होता है, दैट इज टर्म्ड एज डेयरी. अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड चीज आर मेड, यहाँ पे बेकरी, जहां पे बनते हैं, दैट इज बेकरी. Nuns are basically, if you have seen to any convent school and all, the girls who are
प्रैक्टिसिंग इट आउट, जो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं, दे आर द नन्स वन. और इसमें एबे होता है, एबॉट होता है, दे आर द पीपल. एबे इज अ पर्सन जो फीमेल हेड होती है पूरे चर्च की. Abbot is I think the place where they are staying. So these are the words that you don't go in the deeper one. जितना याद रख लो. Priest जहाँ पे रहते हैं, they are termed as जो conduct करते हैं, they are termed as your monasteries. And then they are the ones they are termed as your nuns. Nuns रहती हैं convent में. Okay. The place where milk is converted into butter and cheese, that is dairy. Place where bread and cakes are made, that is bakery. A place where animals are slaughtered for the market. बोलते हैं ना जहाँ पे if many of you are non-vegetarians and all eat non-veg food. The place where meats are cut, that is termed as meat shop. Better word, slaughterhouse, कसाई खाना. उससे भी better word, it is abattoir. So there are number of words. It depends how particularly we use it out. And verbose means if I generally say I'm going to abattoir. So it's not, I'm not using generic word like meat shop or slaughterhouse in my terminology. I'm using abattoir with it. Abattoir is being verbose in the word. We use it out. Then you have a factory for manufacturing beer. That is your brewery. A place where spirituous liquors are produced. Distillery. Distillery होता था ना, छोटे होते आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. That yes, how the beer or alcohol is being purified, distilled. तो जहाँ पे डिस्टिल की जाती है वहां पे डिस्टिलरी बोला जाता है. जहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है बियर, दैट इज टर्म्ड एज ब्रूअरी. A place where clothes are washed and ironed, it's a laundry. A place for housing cars, it's a garage. A place for housing aeroplanes, that's a hangar. A place where travelers may obtain logic and refreshment. Now this is there. Where you stay in a hotel, but you eat food in a restaurant. So these are the two different terminologies. If you are lodging and only for refreshment, that is your hotel. But if you are for food and refreshment, food particularly, it's a restaurant. Place for residence of students, obviously hostel. Place where books are kept, library, easy one. A place where government records are kept, जहाँ पे भी government records maintain किए जाते हैं, we go for it, archive. Archive is a word because we have kept it since long, it's archives. A place where scientific experiments are conducted, it's a laboratory. A place where athletic exercises are performed, gymnasium. So till now, let's revise the second part and then go for a quiz which is to be done. First is birds के लिए aviary, fishes के लिए aquarium, dog के लिए shelter, lion के लिए den, monks और priestess के लिए monastery, nuns के लिए convent, butter और cheese के लिए dairy, bread और cakes के लिए bakery, slaughter house के लिए abattoir. स्लॉटर हाउस भी यूज कर सकते हो. बियर के लिए ब्रूअरी, डिस्टिल्ड के लिए क्या आ जाएगा, डिस्टिलरी. क्लोथ्स कहाँ पे वॉश आयरन किए जाते हैं, लॉन्ड्री. कार्स, गैराज. एरोप्लेन्स, हैंगर. लॉजिंग और रिफ्रेशमेंट, रहने के लिए इट्स होटल, खाने के लिए रेस्टोरेंट, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल. बुक्स, लाइब्रेरी. गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, आर्काइव्स. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं लेबोरेटरी में. एथलेटिक एक्सरसाइजेस, जिम्नाजियम. That's all. Clear with it? Can we start with the quiz now? Any problem till here? The sections we are doing. Government का किया, professions का किया, places का किया, personal attributes का किया. यहाँ तक किसी को भी problem? Tell me fast. Any problem to anyone till now? We can start with the quiz. Ravi, Appan, Rahul. Clear? Can we start? Ready? Chalo. Great. So let's start with the first one. Easy one. Responsible according to the law. Law के according आप responsible हो, क्या आएगा? Responsible according to the law. Everyone drop it out. Easy है ये बहुत. D. Liable. Liable is not liable, no. देखो रिस्पॉन्सिबल लॉ के अकॉर्डिंग आती कोई चीज, इधर इट इज ऑफेंसिव और इनऑफेंसिव. इट विल नॉट कम एज योर, अगर लेजिबल होता तो उसके पास आ जाता. हेयर इट विल बी योर ऑफेंसिव वन. रिस्पॉन्सिबल हो आप लॉ के अकॉर्डिंग. इट्स नॉट सी, इट्स नॉट लीगलाइज्ड. लीगलाइज्ड कैन बी अनदर ऑप्शन इफ ऑफेंसिव नहीं होता तो लीगल होता, अदरवाइज नहीं. ओके, इफ दिस वाज नॉट देयर देन लीगलाइज्ड, अदरवाइज ऑफेंसिव विल बी देयर. क्लोजर जो आप यूज करते हो. नेक्स्ट, constant effort to achieve something. This is very simple one. Many of you use it for your this introduction also. क्या आएगा? Second का क्या आ रहा है?
A. See, when you have a constant effort and you are doing to achieve something, that is a perseverance. Perseverance is even if I fail, I step forward. Even if I fail, I step forward. That is being perseverant. Okay, being perseverant. That is having an attempt. I can do this in future also. Go for the next one. Opposed to great or sudden change. Opposed to great or sudden change. क्या आएगा? Opposed to great or sudden change. What will be there? Mark it with the number. नंबर लिख दो. अपोज कर रहा है मतलब उसका माइंडसेट कैसा होगा कि वो अपोज कर रहा है. अपोजिंग अगर ला रहा होता द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग तो होता रेवोल्यूशनरी. अभी वो पर्सन क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. अपोजिंग में क्या आएगा? डिफरेंस समझ लो. If one is willing, one is making a sudden change, that is rebel or that is revolutionary. It is opposing. Opposing means the person's mindset will be very narrow. It will be conservative. The person is not ready to change. Appan, Ravi, all of you are marking B, but you're not checking the word. It is opposing. Person who is not agreeing to sudden change. बल्कि जो रेवोल्यूशनरी होता है वो चेंज लाता है, क्रांतिकारी चेंज लाएगा. ठीक है. Go for the next one. Anything written in letter after it is signed. Anything written in a letter after it is signed. Fourth, A, B, C, corrigendum नहीं. After it is signed, after में हमेशा post word आएगा. कहाँ है post word? Postscript, postdiction, posterity. क्या आएगा इन तीनों में से? Rahul, good one. Balaji also, postscript is answer. Very nice. Go for the next one. That which cannot be done without. Fifth, which one rest? जल्दी से बताओ. That which cannot be done without. जिसके सिवाय वो चीज नहीं हो सकती. जिसके बिना वो चीज नहीं हो सकती. पॉसिबल नहीं है उसके बिना होना वो चीज. क्वेश्चन को ध्यान से समझो. दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी वन. दैट विच कैनॉट बी डन विदाउट. इसके सिवा वो चीज नहीं पॉसिबल है, नहीं हो पाएगी. क्या आएगा? No, it's not D. It's not A. Everyone is trying. Impractical नहीं. Indispensable. इसके बिना indispensable मतलब the thing is not possible without it. It's indispensable. Clear? ये थोड़ा tricky था. 5 questions were tricky. Let's go with the next. Now, before this, any problem which you're facing in English or any specific marathon you need, let me ask you guys first. यहाँ तक चलो हम कर रहे हैं. We will be continuing it out. Any problem you facing in any other thing? In between? किसी को कोई प्रॉब्लम? वन वर्ड्स हो गए हमारे, इडियम एंड फ्रेजेस. सिनोनिम्स वी आर गोइंग टू हैव द फोर्थ मैराथन सेशन. फोर्थ इज ऑन सिनोनिम्स, फिफ्थ इज ऑन एंटोनिम्स. सो दिस वे दैट वुड बी डन. Spotting errors, if you want, I'll practice it in a class, not in YouTube, but in this. Fill in the blanks, parts of speech में ही होगा आपका. Next marathon is on fill in the blanks only. वो जाएगा. जंबल की मैंने ना पहले कुछ आपको क्लासेस भी कराई थी. If you were there, I had done on the panel. I think the classes were there where I've tried to decode किस तरह से करना है. Prepositions next class marathon में ही है. Next parts of speech में nouns, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, all your maybe tenses. I'll try to incorporate it that also. Verb, adverb. 8 segment आपके parts of speech में हो जाएगी. जो sentence completion होता है वो आपका नेक्स्ट मैराथन वही है. तभी बोल रही हूँ किसी भी फॉर्म में वो मिस करना. इफ यू वांट अ चेंज इन डेट, इफ यू वांट इट अर्ली, इफ यू वांट इट टाइमिंग शुड बी एडजस्टेड, अप टू यू, because that is the most important marathon which is going to be there the entire English with all the sets, and I am making fall all the rules also for that to make it easier for you. तो उसके सिवाय आपको रूल्स या क्वेश्चंस में भी टफनेस हर तरह की हो
तो उसके सिवाय कोई डाउट है वो नेक्स्ट में हो जाएगा. तभी बोल रही हूँ नेक्स्ट किसी को 27th डेट में टाइम में कोई प्रॉब्लम. 12 इज कंफर्टेबल फॉर ऑल. इट्स कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू. I think it's yes because we get a good time in the afternoons and you're very fresh in the mornings. है ना? In the evenings you become a bit lazy. 10 बजे start कर दो सुबह. Next session is next Monday. It's on 27th, right? तो 12 o'clock होगा, but वो session miss मत करना. I'm repeating it out to all of you and convey to your friends also. Whosoever, even I say it for every person, whosoever can be there in that session, because that is the most important one, which I'll be doing all the important questions. Okay. सैटरडे संडे भी रख लूं मैं. चलो विल ट्राई इट आउट. लेस पे हम रात को देखते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या क्या हमें और फॉर्मुलेशंस. जैसे स्पॉटिंग एरर्स की वीडियो देखी होगी 101 रूल्स वाली, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो स्पॉटिंग एरर्स के बेस पे है, मतलब हर एक सेगमेंट के रूल्स आएंगे. नेक्स्ट में आपको सबके रूल्स आ जाएंगे मिक्स में. आर्टिकल्स भी आएगा. आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, राइट. ये सारा आ जाएगा. ग्रेट. ग्रेट यापन. हाँ राइट. सो राइट आदित्य. चलो ग्रेट. A place where treasures of art, curiosities, etc. are preserved or created. अब preserved हो रही है चीजें तो क्या आ जाएगा उसमें? ऑब्वियसली म्यूजियम होगा. इजी वर्ड म्यूजियम, जहां पे हम आर्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं. नेक्स्ट इट इज अ बिल्डिंग फॉर द लॉजिंग एंड अकोमोडेशन ऑफ सोल्जर्स. सोल्जर्स कहाँ पे रहते हैं? दैट इज बैरक्स में. ठीक है, तो सोल्जर्स के लिए क्या आ गई? प्लेस टू लिव इन, दैट इज बैरक्स. Then is a place where soldiers are quartered. Quarter जहां पे रखा होता है cantonment board होता है, हर एक की सिटी में होता है. Like I belong to a area which is a cantonment area that is there for all the soldiers are residing over there. A place where money is coined. Money is coined. It is called as mint. जहां पे पैसा बनता है. Everyone wants to go in a mint. Okay, before this, tell me which is what is that one word substitution which is used for a place for a profession where you get high paid with no work. What is that called? High paid no work. तो तुम लोग चाहते हो, but वो क्या होता है? High paid plus no work. What is it called? Favorite term should be there now. गवर्नमेंट जॉब नहीं. गवर्नमेंट जॉब में ईडीएम कौन सा कराया मैंने, वो बताओ पहले. Which is that idiom called? Very bad if you forget it out. It starts with S. S से start होता है, E पे खत्म होता है. Very good. Writer's vision is the best one. Like if a person actually wants it out, the person will do it. It's sinecure. Right? So sinecure is that. So you don't forget your favorite words, I guess. Mint नहीं भूलना चाहिए. Mint is something that you want where money is paid. ऐसी चीजें तो याद होनी चाहिए. A place where astronomical observations are taken, observatory. Then you have a place where fruit trees are gone. Fruit trees, orchard. Orchard is there. Where fruit trees are gone. A place where orphans are housed, that is termed as orphanage. Orphanage क्या होता है जिनके parents नहीं है? एक मैंने orphanage से पहले एक word कराया था, याद है? Waif क्या होता है? Last में हमने किया था. Waif आएगा, अगर repetition में भी आएगा. We have done this word before in the idioms in our classes. What is waif? WAIF क्या होता है? किसी को नहीं याद वेव क्या था? ऑर्फन से रिलेटेड है. वेव क्या होता है? You might have seen on the very bad. वेव रिपीट भी होगा. That is why I bought those words also जो हम कर चुके हैं. वेव होता है कहीं बार if you are going on the streets, you find some children, they are moving from there and there. They are always, they have their homes, but they are only most of the times they are residing on the streets and they are asking for money or something. They are called as the waves. जिनके पेरेंट्स नहीं है, that is termed as homeless. नहीं है घर होने के बावजूद, the parents have left them out on streets to get the money, get the expenses. They're crying whole day. They are just residing over there. They're the waves, right? Orphanages who does not have the parents, right? And what is orphan is that person. And what is foster child? ये भी किया होगा. Foster child कौन सा होता है? 3 टर्म्स है, बच्चों के रिलेटेड इकट्ठी कर लिया करो.
वेव क्या है, फोस्टर चाइल्ड क्या है? व्हाट इज फोस्टर चाइल्ड? किसी को नहीं याद? रवि, बालाजी? अडॉप्टेड, अडॉप्ट नहीं होता, द फॉस्टर चाइल्ड डज नॉट हैज अ लीगल अडॉप्टेशन, राइट? लीगल अडॉप्शन नहीं होती है. इट इज जैसे बोलते हैं ना, दे आर देयर गॉड पेरेंट्स, so they are just being under the surveillance of those, but they don't have any that legal parents नहीं होते हैं उनके. That is a foster child. अभी अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा, there is a Mahi Vij and I don't know his husband. They have two of the foster children. They are not they're legally adopted, but they are just taking care of those children. That is a foster child. Okay. An institution for the reformatory of young offenders, that is reformatory. Muslim place of worship is mosque. A place where water is collected and restored. Place where water रखा जाता है, and that is termed as reservoir. Anoop's favorite is Sunny Leon and all that, so I will say it out. Yellow press याद आनी चाहिए इससे, है ना? A place frequented for reasons of pleasure or health, that is resort. A place gambling करने के लिए casino. Sleeping rooms in a college or a public institution, that is termed as dormitory. Dormitory होती है जहाँ पे आप place रखते हो that for some refreshment. अगर आपके पास offices में भी कुछ rooms होते हैं where you can sleep it out, that is termed as dormitory. A school for infants and young children, that is kindergarten. Now see, they were the just this much in number. Let's revise all these again. Now starting from the first, आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए आ गया म्यूजियम. अकोमोडेशन सोल्जर्स के लिए आ गया बैरक्स. रखे कहाँ जाते रहने के लिए उनके आ गया, दैट इज योर कंटोनमेंट. पैसा जहां पे बनता है, मिंट. एस्ट्रोनॉमिकल इज ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेटरी. एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन इज देयर, एंड देन यू हैव फ्रूट ट्रीज आर गॉन, दैट इज ऑर्चर्ड. ऑर्फन्स आर हाउस्ड, ऑर्फनेज. अगर यंग ऑफेंडर्स, किसी ने नशे कर रहा है कोई, दे आर इनटू द ड्रग्स एंड ऑल दैट, so we send that person to a reformatory. So reformatory is there. Then you have as a Muslim place of worship is mosque. A place where water is collected and stored is reservoir. A place which is frequented for the players and health, resorts are there. A place with gambling tables, casino. Sleeping rooms in a public institutions, that is dormitory. School for infants and young children, kindergarten. So that was all till now. Let's go for the next round and then you have a quiz again. ध्यान सुनना. नंबर ऑफ शीप, बहुत ज्यादा शीप का झुंड होता था तो क्या बोलते थे? अब ये याद है किसी को? फ्लॉक क्या होता था? कैटल किसका होता था? कैटल का क्या होता था, याद है किसी को? लोगों का क्या होता है? ये तो इजी वाले हैं बहुत, बट वी हैव टू कवर एवरीथिंग सो दैट. एनिमल्स तो है ही, कैटल. व्हाट वी कॉल दैट वर्ड? अच्छा, टेल मी वेयर अ डॉग लिव्स. डॉग के रहने की जगह क्या होती है? डॉग की बता दो मुझे, लायन की बता दो, ये तो बताओ पहले. कैनल इज फॉर डॉग्स, वेरी गुड. लायन के लिए क्या था? कृष्णा एंड यशोदा. वेयर इट इज रजनी? वेयर इज कृष्णा? ओके, डेन, लायन डेन, वेरी गुड. ओके, लायन का डेन हो गया. अब ठीक है, शीप के लिए हमने कर दिया फ्लॉक. कैटल का क्या होता था? कैटल का क्या होता था? मतलब गाय भैंसों का क्या होता था, याद है? एच से स्टार्ट होता था ये वर्ड और डी पे खत्म होता था. व्हाट वाज द वर्ड वी यूज्ड टू डू इन जूनियर क्लासेस? किसी को नहीं याद? हर्ड, वेरी गुड बालाजी. हर्ड ऑफ कैटल. लोगों के क्या होता था? जजेस का क्या होता था? लेट्स रिवाइज इट लाइक दिस. जजेस का क्या होता बताओ पहले. हाँ, हर्ड इज राइट अनूप. ओके, जजेस का हाँ, ऑडियंस. चलो एक लगा सकते हैं, ऑडियंस होती है. और क्या होती है लोगों का? और क्या होता है? सड़क पे जाओ, पैनल नहीं होता जजेस का. जजेस का होता है बेंच. बेंच ऑफ जजेस होता है. लोगों का बहुत ज्यादा. ज्यूरी भी नहीं होता. जजेस की ज्यूरी नहीं होती है. जजेस का क्राउड हो गया, वेरी गुड, इजी वन. और एक मॉब भी होता है. मैं इनमें डिफरेंस बताऊंगी. मॉब भी आ गया. ठीक है, तो ये जेनरिक है. अब आगे चलते हैं. जैसे ये आ गया, अ नंबर ऑफ फिश. फिश अगर ली जाती है नेट पे, दैट इज टर्म्ड एज कैच और हॉल. और जो पर्सन फिश को लेता है, द प्लेस फ्रॉम वेयर द रोड एंड दैट, उसे क्या बोलते हैं? जो रॉड के साथ अगर हम वो प्रोसेस करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? जहां से फिश को कैप्चर किया जाता है. मैंने ये वर्ड कराया था अभी. व्हाट इज दैट वर्ड कॉल्ड? ए से स्टार्ट होता है, आर पे खत्म होता है. क्या वर्ड था?
What was that word which from where you can say you capture the fishes in a rod? You go for that. Fishing मत बोलना. नहीं याद. Angler. Angler was the word. Angler. भूल गए? Angler was the word. Clear? So number of fish, अगर बहुत ज्यादा fish इकट्ठी हम capture कर लेते हैं उससे बोलते हैं crowd या फिर haul बोलते हैं. Next you have is cattle, मैंने वही बोल दिया, that is herd आ गया. Wild animals के लिए क्या आ गया? Zoo याद रख लो. Managrin बहुत कम options में आता है, but you can remember Managri, but यहाँ zoo, remember it like this. Number of people listening to concert, concerts आते हैं, चलते हैं, तो उसी के लिए आता है audience आ जाता है. ठीक है? अगर मैं बोलूं बहुत ज्यादा लोग जो है मैच को देख रहे हैं तो वो होते हैं स्पेक्टेटर्स आ गए. अ नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड, वैसे ही स्ट्रीट पे इकट्ठे हो गए हैं तो क्या आ गया हमारे? क्राउड हो गया. अगर बोलते हैं बहुत ज्यादा लोग जो डिसऑर्डरली हैं, डिसऑर्डरली मींस यहाँ वहां खड़े हैं ग्रुप्स में, दैट इज मॉब ऑफ पीपल. अगर आप मॉब देखते हो या कोई you go for any disc or some bars also, there you see that there the people are divided in junctions, that is termed as mob. A number of artists, dancers or acrobats, that is troupe. Number of actors, company. Number of servants is the staff. Number of soldiers is the army. अब मुझे soldiers के लिए बता दो, दो terms define कर दो. बैरक क्या होती है और cantonment क्या होता है? जल्दी से बताओ. What do you mean by barrack? What do you mean by cantonment? जल्दी से बता दो. What do you mean by barrack? What do you mean by cantonment? Living premise, okay, where they live, that is a cantonment. That is an isolation area. देखो जहां पे उनको lodging होती है, when the group is lodging together, ठीक है, staying together, that is termed as, एक ही जगह पे है, that is termed as barrack. When they are isolated, जो area उनका proper होता है, जैसे अगर मैं बोलूं जहां पे वो रह रहे हैं, ये जगह है, यहाँ पे जहां पे रह रहे हैं, that is barrack. ये सारी जगह यहाँ से इतनी दूर है, यहाँ से इनका एरिया स्टार्ट हो जाता है पूरा, दैट इज कंटोनमेंट एरिया. ओके. नेक्स्ट यू हैव अ नंबर ऑफ जजेस, दो से ज्यादा तो क्या आ जाएगा? बेंच आ गया. डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है. बुक्स की कलेक्शन, लाइब्रेरी. शिप्स की कलेक्शन, फ्लीट. पिक्चर्स की कलेक्शन आ जाती है, तो दैट इज कलेक्शन. एंड मैरिज इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल. मैरिज तो बहुत इंटरेस्टिंगली सुनोगे तुम लोग, पर पहले इसको रिवाइज करते हैं. शीप का आ गया, फ्लॉक. नेट के लिए कैच. अगर कैटल आ गया तो हर्ड. वाइल्ड एनिमल्स, जू. कॉन्सर्ट में होती है ऑडियंस. मैच देख रही है तो स्पेक्टेटर्स. लोग इधर उधर खड़े हैं, क्राउड. ग्रुप्स में, जंक्स में खड़े हैं, मॉब आ गया. ठीक है. आर्टिस्ट डांसर्स का ट्रूप होता है. एक्टर्स का कंपनी. सर्वेंट्स का स्टाफ. सोल्जर्स की आर्मी. जजेस का बेंच. डायरेक्टर्स का बोर्ड. बुक्स की कलेक्शन, लाइब्रेरी. शीप्स की जो आ जाती है, दैट इज फ्लीट. पिक्चर्स का कलेक्शन. यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिकॉज नेक्स्ट इज योर फेवरेट टॉपिक. बिफोर आई मूव टू योर फेवरेट टॉपिक, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय misogamist and what do you mean by misogynist? जल्दी से बता दो. misogamist कौन कौन है यहाँ पे और misogynist कौन कौन है? hate marriage, hate women. hater of marriage, woman hates. woman hates के hates women, क्या डिफरेंस है? woman hates या hates women, दो डिफरेंस है. woman hates, right? And how many of here are the ones, you have to answer both in the sequence. Okay, how many of you are there who are one amongst these? How many are ones amongst these? There was, I think, who was? Anup was once among these, so who was there? Hate to marriage, hate to women, hate women. Very good, very nice. Chalo, great. Now let's start it out. Now, how many of you, I hate marriage? No worries, I'll ask after 3-4 years, this thing. Okay, now tell me one term. What is monogamy and what is polygamy? Gamy का मतलब ही marriage हो गया. तो मोनो आ गया और पॉली आ गया. अब तुम लोगों ने मोनोगैमी करनी है या पोलीगैमी करनी है, ये बता दो. जिसको मैरिज पसंद है उन्होंने मोनो करनी है कि पोली करनी है? वन वाइफ, मेनी वाइफ्स, इजी वन है ना. तो मोनोगैमी हो गया जिसकी एक से शादी होती है. इंडिया में नॉर्मली वन पार्टनर है और यहाँ पे पोलीगैमी में हो गया मल्टीपल पार्टनर्स है. अब तुम लोगों की मर्जी है, तुम वन चाहते हो, मल्टीपल पार्टनर्स चाहते हो. ठीक है. सो वन हु हैज ओनली वन हस्बैंड और वन वाइफ एट अ टाइम, दैट इज मोनोगैमिस्ट, राइट?
अब हिंदू एक्ट आदित्य दैट इज अ फोर्स, बट मैंने पूछा तुम चाहते क्या हो. इट इज नॉट दैट यू विल हैव. It is a difference, your wish and your suppositions, right? One who have two people, like if I say one who marries a second wife while the legal spouse is alive, that is bi. Bi आ गया 2 नंबर. पॉली 2 से ज्यादा, ठीक है. फिर पॉलीएंड्रिस्ट. अब इसमें गाइनिस्ट, गाइनिस्ट मतलब पॉली वुमेन, जब एक से ज्यादा लड़कियों से शादी, मतलब मोर देन वन वाइफ यू हैव अ टाइम, सो दैट इज पॉलीगाइनिस्ट, राइट. अगर बोला जाए वन हस्बैंड एट टाइम, उससे ज्यादा, मेनी ट्राइबल सोसाइटी स्टिल नाउ हैव दिस प्रैक्टिस. पॉलीएंड्रिस्ट बहुत कॉमन है ट्राइबल में, ठीक है. या इज इट इज वैलिड फॉर वुमेन आल्सो. एंड देयर यू वोंट सी पॉलीगाइनिस्ट, बल्कि वहां पे मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं. एंड आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द दिस ट्राइब्स राइट नाउ, किस ईस्टर्न साइड्स पे कौन सी थी, बट इट इज देयर वन ट्राइब जहां पे पॉलीएंड्री बहुत कॉमन है. पॉलीएंड्रिस्ट इज देयर. Hater of marriage, misogamist. You can example from Anoop is there, Aditya is there. जो लोगों को नफरत है मैरिज से, good. One what to a single and unmarried life. कोई बोलता है कि मैंने आज के बाद सिंगल रहना, like your favorite Salman Khan and no, it's not Khasi, it's Khasi tribe maybe, मुझे याद नहीं अभी. There is one tribe, I don't remember it out, but that is polyandry is at the terms. You know, like every tribes they have the norms which are quite different from the Hindu acts. They do think that yes, a woman, if she has multiple partners, that multiple marriages, that is the woman who is good, rather than in Indian societies that woman who has one husband, that is a perfect one, right? A Garo, yeah, this one, yeah, Garo and Khasi type. So it is one word to single and unmarried life. Now your favorite Salman Khan, who says that yes, I don't want to marry, I don't see, I want to live a single and unmarried life, so that person can be called as celibate. Celibate is the word. अच्छा, सेलिब्रेट से मुझे एक टर्म याद आ रही है, जो लग्जरियस लिविंग को सपोर्ट करता है, उसके लिए क्या वर्ड होता है? व्हाट वन हु इज हैविंग अ लग्जरियस लिविंग, उसके लिए क्या था? क्या था? साइबराइट. वेरी गुड. रजनी आंसर्ड राइट, बालाजी आंसर्ड राइट. इट्स साइबराइट. साइबराइट, गुड वन. ओके, सो सेलिब्रेट समझ आ गया. नेक्स्ट, लीगल डेसोल्यूशन. हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो गई तो क्या आता है? डिवोर्स. और डिवोर्स के बाद क्या देना पड़ता है हस्बैंड्स को? क्या चीज होती है? दैट इज योर एलिमनी, राइट. अगर एलिमनी से मुझे याद आ गया, पिन मनी क्या होता है? व्हाट इज पिन मनी? पिन मनी क्या होता है? एलिमनी नहीं, एलिमनी स्पेलिंग गलत है. व्हाट इज पिन मनी? पिन मनी क्या होता है? जल्दी से बताओ, किस किस को याद है? Pin money for daily household expenses. So you have two options. Either if you are married, you can happily give pin money. If you are divorced, you have to give alimony, right? Or be celibate. Don't be into that. A woman whose wife is dead. अब दो है, जैसे जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है, that is termed as widower. और जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, that is termed as widow. Widow and widower. तो जिसके हस्बैंड की डेथ है, अब ये याद रखना, जैसे ब्राइड ग्रूम और ब्राइड में क्या डिफरेंस है? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं. व्हाट इज ब्राइड ग्रूम एंड व्हाट इज, वैसे ये वर्ड्स पता होंगे, मैरिज से रिलेटेड तो सबको पता होता है ना. व्हाट इज ब्राइड एंड व्हाट इज ब्राइड ग्रूम? इसमें से लड़की कौन होती है, लड़का कौन होता है, या लड़का लड़की कौन होता है? ग्रूम, इट्स फॉर मेल, bride for female. Yeah, bride is for your female one and this is your male one, right? So that is a bridegroom and that is the female one. Great. Next you have is the property which a new wife brings to her husband. Now when it is thought that the things which she is bringing, that is termed as dowry. Okay, next you have is one engaged to be married, it's a fiance, and engaged to be married can be called as betrothed. Okay, so betrothed, fiance, you use these words, right? तो जो one engaged to be married, जिसके साथ होनी, that is termed like he's my fiance or something, and the person who is engaged, that yes, he's going to marry in some years or some months, that is termed as betrothed. Okay, betrothed. A bride's outfit, the person who wears the outfit of the bride is termed as trouser. Trouser is an outfit that is called for the bride's outfit. Proclamation of an intended marriage, it's a bans. It's bans which is called as that yes, there is a proclamation, it's announcement. Proclaim करना, अगर मैं बोलती हूँ कि
this is the day when the person is going to get married. He's announcing it out. He's informing the other people. So that is called as bans. To run away with the lover in order to get married secretly, it's to elope, and that was in order to marriage. Do I need to revise the marriage segment? Because I think everyone is clear with it. Let me directly ask you some questions of marriage first. Tell me, what do you mean by women's outfit? Bride's outfit क्या बोलते हो आप लोग? ठीक है? When you have, what is the person who is into the state that yes, he does not want to marry, does not want to marry and live a single life. Single life वाले के लिए क्या बोलते हो? Third, if I ask you what you call a person, invitation नहीं बोलते हो, proclamation of marriage क्या बोलते हैं? Proclamation of marriage, क्योंकि बाकी वर्ड्स इजी हैं, आपको याद रहेंगे. ये तीनों बता दो, जल्दी से बताओ ये तीन वर्ड्स. रजनी, फर्स्ट वर्ड क्या है? सेकंड तो बता दिया, सेलिब्रेट. फर्स्ट वर्ड क्या है? बैंस. बनास नहीं, बैंस. BANNS. बैंस. ट्राउजी सेकंड नहीं आता. ओके, फर्स्ट इट इज ट्राउजी. ठीक है. सेकंड इज योर डज नॉट वांट मनी, सिंगल आ जाता है, दैट इज सेलिब्रेट आ गया. और इसका क्या आ गया? प्रोक्लेमेशन ऑफ मैरिज, इट इज बैंस. Okay, good one. I think many of you answered it right. Now it is science and arts, something which is very easy and favorite of all of you. An institution for education in the science, arts or sciences, दोनों में जो पढ़ाया जाता है, that is polytechnic colleges are there. Study of all heavenly bodies and in relation to them, earth in relation to them, that is termed as astronomy. The art of tilling the soil, जब आप soil को till कर रहे हो, मतलब soil को क्या बोलते हैं ना उसको, निकाल रहे हो जो जगह को, that is termed as tilling. Tilling को बोलते हैं, that is termed as agriculture. Then is plowing करना, plowing या जोड़ना, exactly. The art of cultivating and managing gardens. Gardens को manufacture करने के लिए it is termed as horticulture. The study of ancient buildings and prehistoric remains, it's called archaeology. This was all that was related to the important ones of science and arts. तो polytechnic हो गया, सेकेंड एस्ट्रोनॉमी वाला हो गया, एग्रीकल्चर निकालना मतलब प्लो करना, जोड़ना, जो भी आप बोल रहे हो, कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स, हॉर्टिकल्चर, आर्कियोलॉजी, पुरानी बिल्डिंग्स के साथ डील करना. चलो क्विज स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है इसमें, इजी है. इस तरह से क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछे जाते हैं. आई टोल्ड यू आई एम टू गिव यू डिफरेंट सेगमेंट्स हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ओके, सो हियर इट इज, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस चूजिंग फ्रॉम गिवन बिलो. He could not give a good explanation for his extraordinary behavior. He could not give good explanation. चलो, he could not give good explanation. First का बता दो क्या आएगा? जल्दी से बताओ. We don't have too many left now. I think we have left, but थोड़े से पढ़े हैं अभी. 2-3 सेक्शंस पढ़े होंगे, इंटरेस्टिंग सेक्शंस पढ़े हैं, वो हम करेंगे फटाफट से, फिर खत्म हो जाएगा. तो फटाफट से रिवाइज करो और जल्दी से बता दो. फर्स्ट का B for very good. Account for मतलब answered for, answerable. Very good. First is B. Second, those who pass through this gate without permission be prosecuted. Those who pass through this gate without permission be prosecuted. मतलब पास करेंगे गेट से, क्या आएगा? विदाउट परमिशन कर रहे हैं वो. वेरी गुड, इट इज ट्रेसपास. ट्रेसपास करना मतलब बिना परमिशन के आप जब वहां से निकल जाते हो. ओके, वन इट इज कॉल्ड एज केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ एन आर. ये तो बहुत सिंपल है, ये तो देखते हैं क्या आएगा इसका. अ केयरफुल कंजर्वेशन, sorry, I told you the answer, I think. Third, conservation. It slipped from my tongue only. Slip of tongue is there. Okay, next. I could achieve success through conscious efforts. Conscious efforts क्या आएगा? Conscious efforts.
I could achieve success through conscious efforts. Yeah, efforts made with critical awareness. When you're getting aware about something. Very good. Great. We are looking forward to a good monsoon this year. Looking forward. We are looking forward. क्या आएगा इसका? अब इसके ना आपके आंसर्स को बहुत ध्यान से देखना है. हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम प्रिडिक्टिंग में नहीं है, प्रिडिक्शन नहीं आएगा इसमें, ये नहीं आएगा. इसमें आपके दो ऑप्शंस, गेटिंग भी नहीं आ सकता, इंकरेजिंग भी नहीं आ सकता. इट कैन बी ईदर ऑफ दिस. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, इट विल बी सी और डी में से क्या आएगा? Hoping is a catch word for you. It's a trap word for you. It's visualizing. We are hoping नहीं आएगा, we are visualizing because looking forward का आ जाता है. It's visualizing monsoon. हमें लगता है इस टाइम पे आएगी. तो it is visualizing. We are able to see it out. Okay? तो इसका visualizing आएगा. Now let's start with the next section. It is when you have a beautiful handwriting. It is termed as calligraphy. Can anyone tell me what do you mean by when you have the art of making the maps? Map के लिए क्या बोलते हो? प्लान्स के लिए क्या बोलते हो? और इफ आई आस्क यू बिल्डिंग्स के लिए कौन होता है इंचार्ज? और डिक्शनरीज के लिए क्या बोलते हो? ये चार वर्ड्स जल्दी से बता दो. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर. पहला आ गया कार्टोग्राफर. वेरी गुड. प्लान्स के लिए क्या होता है? व्हाट वाज देयर फॉर प्लान्स? किस किस को याद है? बिल्डिंग मैप्स, आर्किटेक्ट, वेरी गुड. ड्रॉट्समैन, लेक्सिकोग्राफर, गुड. एजेंडा कहां से आ गया? एजेंडा तो है ही नहीं इसमें. नहीं, एजेंडा इज रॉन्ग. नहीं याद? चलो ग्रेट. डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर, प्लान सोचो टिल द टाइम आई टेल यू अबाउट इट. मैप तुम्हें याद है, प्लान तुम्हें याद नहीं है ना? ड्रॉट्समैन थोड़ी था प्लान के लिए. बिल्डिंग के लिए आर्किटेक्ट तुम्हें याद है, डिक्शनरीज के लिए तुम्हें लेक्सिकोग्राफर याद है. ये सोचो, अभी दोबारा आएगा नहीं तो आई एम गोइंग टू रिपीट इट आउट टिल द टाइम आई वांट यू गाइस टू आंसर इट आउट. चलो देखते हैं. द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, दोबारा से रेपिटेशन है. कार्टोग्राफी. स्टडी ऑफ कॉइन्स इज न्यूमिस्मैटिक्स. और स्टैम्प कलेक्शन क्या होता था? किसको याद है? स्टैम्प कलेक्शन. कॉइन्स के आगे न्यूमिस्मैटिक्स, तो उसका क्या होता है? पोस्टेज स्टैम्प्स का. व्हाट इज फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स? फिलिस्टाइल नहीं होता, क्लोजर टू इट. इस ऐसा ही मिलता जुलता है, बट क्या बोलते हैं उसे? बालाजी, नियर टू क्लोज. व्हाट इज दैट देयर? फिलैटलिस्ट. फिलिस्मैटिक. फिलैटलिस्ट इज अ पर्सन. ओके, SPMCL ये नहीं होता. चलो, द साइंस ऑफ नंबर्स, मैथमेटिक्स, साइंस ऑफ मेयरिंग. अब यही मैं चीज समझाने वाली थी. जब तुम सिर्फ मेयर कर रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज मेंसुरेशन. मेंसुरेशन तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा. दैट इज मेंसुरेशन. अगर तुम लैंड को मेयर कर रहे हो, दैट इज सर्वेइंग. दैट इज अ डिफरेंस. अगर सिंपल मेयरमेंट है, दैट इज मेंसुरेशन. लैंड की मेजरमेंट है, कहाँ पे क्या चीज, कितनी डिगिंग करनी है, कितनी टिल्टिंग करनी है, दैट इज योर, उस तरह से एग्रीकल्चर से लिंक्ड आ जाता है. दैट इज सर्वेइंग. क्लियर? SPMCIL क्या है ब्रो? द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन. स्किन डर्मा से रिलेटेड है. टेक्सिडर्मी आ गया जब आप स्किन के सेल्स या किसी चीज को प्रिजर्व करते हो. साइंस ऑफ कलर्स, दैट इज क्रोमैटिक्स. द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच और राइटिंग, बहुत अच्छे से बोलना, बहुत अच्छे वोकल्स होना. ओरेटरी के साथ बोलते हैं इसको, रिटोरिक बोलते हो. अच्छा, इसके बाद मुझे बता दो एपिक्यूर क्या होता था? किसको याद है एपिक्यूर? पुराने पुराने वर्ड साथ साथ में याद करते रहो. एपिक्यूर क्या होता था? व्हाट इज देयर एपिक्यूर? एपिक्यूर क्या होता है? वेरी गुड. प्रिंटिंग नोट्स. प्रिंटिंग नोट्स एंड मिंटिंग मनी. मिंट जहां पे वो मिलती है. Epicure, pleasure from food. Yeah, great. It's from pleasure from food. Then you have the art of telling the future by study of stars. हम कर चुके हैं. Astrology. Mankind की study, anthropology. अभी कुछ कुछ मैं रिपीट इसलिए रखे हैं ताकि आपको याद रहे.
साइंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी, एनाटॉमी पढ़ते थे हम. Then it is the science which deals with the way in which human body works. It is physiology. The scientific study of technical arts, that is termed technology. The study of human minds is psychology. Physical life, living matter को पढ़ना, that is biology. Plants को पढ़ना, botany. Animals को पढ़ना, zoology. Rocks को पढ़ना, it's geology. Birds को पढ़ना, ornithology. अच्छा, इसमें मुझे अब चीज बता दो. आइस के साथ दो वर्ड्स किए थे हमने, मुझे दोनों बता दो. एक स्पेक्टिकल्स के से रिलेटेड था, एक डिसीज से रिलेटेड था. पहले बताओ डिसीज वाला क्या था, कौन सा पर्सन होता है, और स्पेक्टिकल्स वाला पर्सन कौन सा होता है. टेल मी फास्ट बोथ द थिंग्स, डिसीज वाला एंड स्पेक्टिकल्स वाला. oculist and optician, very good Balaji. Even writers with an answer first, right? Second is ये आ गया oculist category, ये आ गई आपकी optician वाली categories. Very good. So इसी तरह से birds की study आ गई ornithology. Eggs की study oology. अगर o अंडा है तो o की तरह याद कर लो, ology आ जाएगा. Languages की study philology आ गया. Philo is already into the speaking. स्टडी और ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी करते थे कि कहां से ओरिजिनेट हुआ, लैटिन, ग्रीक, कौन सा ओरिजिन है, दैट इज इटिमोलॉजी. स्टडी ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमी. देन यू हैव लेक्स या पॉन्ड की स्टडी, पॉन्ड लाइफ की स्टडी, दैट इज लिम्नोलॉजी. ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं पार्ट को. फर्स्ट इज योर हेयर, लेट्स गो विद इट. ओके, the art of beautiful handwriting, that is calligraphy, maps, cartography, coins, numismatics, numbers, mathematics, measuring, mensuration, land, surveying, skin को preserve करना, taxidermy, colors, chromatics, speech बोलना अच्छा, that is rhetoric. Then you have stars की study, astrology, mankind, anthropology, human body, anatomy. अगर आप body क्या deal करती है, that is physiology. Industries, arts, technology, human mind, psychology. फिजिकल लाइफ, बायोलॉजी. प्लांट्स की स्टडी बॉटनी, एनिमल्स की स्टडी जोलॉजी, रॉक्स की स्टडी जियोलॉजी, बर्ड्स की ऑर्निथो एंड एग्स की ऊलॉजी, लैंग्वेजेस की फिलोलॉजी, वर्ड्स के ओरिजिन की इटिमोलॉजी, स्टार्स की एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स लाइफ इज कॉल्ड एज, ये न्यू वर्ड है जो नहीं सुना होगा, दैट इज लिम्नोलॉजी. ओलॉजी का मतलब ही स्टडी होता है. नेक्स्ट मेडिसिन वाले फटाफट करते हैं. PDF will be shared by you by the end of this lecture. After this, as it was shared last time, ये आपको share हो जाएगी PDF. You don't have to worry about it. Okay? तो फटाफट से हम next करते हैं मेडिसिन से related. That is a disease affecting many persons. अब ये देखो, ये ध्यान से सुनना क्योंकि ये terminologies बहुत mixture सी हैं, एक के साथ दूसरी काफी linked up है. Okay? So it is जैसे a disease affecting many persons at the same place and same time. सेम प्लेस पे है, सेम टाइम पे है, व्हाट इज इट कॉल्ड एज, इट इज योर एपिडेमिक. ओके, एपिडेमिक आ जाता है, दैट इज व्हेन यू आर हैविंग अफेक्टेड बाय सेम प्लेस एंड सेम टाइम. अ डिसीज वाइडली एपिडेमिक, जब वो चीज बहुत ज्यादा एपिडेमिक है, दैट इज टर्म्ड एज पेंडेमिक. ओके, एक पहले आ गया जब बहुत लोगों को सेम टाइम पे सेम जगह पे इफेक्ट कर रहे हैं तो हम एपिडेमिक बोलते हैं. लेकिन वो डिसीज बहुत बड़ा बन चुका है. पहले कोविड कुछ रिलीजन में था, ओके, अब वो और बढ़ चुका है तो क्या हो गया, उसका आ गया पेंडेमिक बन गया. अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही है, दैट इज योर एंडेमिक. ठीक है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में था, दैट इज योर एंडेमिक आ गया. सब्सटेंस व्हिच डिस्ट्रॉयज और वीकन्स जर्म्स, that is termed as antiseptic. Next is a substance used by dentists to deaden the gums and nerves, that is cocaine आ जाता है जो deaden करता है, that is your teeth को खराब करता है. अगर सर्जरी में आ जाता है for the unconsciousness and all, that is your chloroform. insensibility को प्रोड्यूस करना, किसी को एनेस्थीसिया दिया जाता है, that is anesthetic. पेन को रिलीव करने के लिए हम देते हैं एनोडाइन. एनोडाइन इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड टू रिलीव द पेन, राइट? सो फॉर द रिलीविंग ऑफ द पेन, दैट इज टर्म्ड एज एनोडाइन. द स्कार और मार्क, कई बार किसी को चोट लग जाती है, उसके बाद क्या होता है, स्कार रहता है या कोई मार्क रहता है बॉडी के ऊपर. देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ अ मार्क व्हिच इज लेफ्ट, व्हिच इज कॉल्ड एज cicatrix. Cicatrix is there if you are met with an accident and all that, and if some scar, if some pigment, it remains at your homes, that is पेन किलर को एनोडाइन बोलते हो, या पेन किलर, एनी ऑफ द सैराडोन, डिस्प्रिन,
this Dolo and paracetamol, you can come into this category. And whenever it is about some kind of a thing, injury का mark रह जाना, that is cesatrix. Cesatrix. अगर poison को contract करना, that is your antidote. Free or immune from infections, that is immune. The places apart to prevent from infecting others, isolate मतलब दूसरी चीजें ना खराब हो, isolate करना. Sleep produce करने के लिए क्या आते हैं? Narcotic drugs आते हैं. So that is narcotic. When you are to inducing, many a times we go for a trip and all that, that is where you have that there's a fact, there's a medicine which can cause you the vomiting effect, that is termed as emetic. Emetic is a term. Then confinement to one place when you are confined. अभी मैंने ये बताया था endemic, pandemic. What is the difference between endemic and pandemic? Because that is a state of being quarantined. Endemic क्या होता था? जल्दी से बता दो. Pandemic क्या होता था? उसमें ही क्लियर हो जाएगा क्वारंटाइन क्या होता है. These are difficult ones, that is I told you. Listen it very carefully. सारे इजी नहीं आएंगे ना, डिफिकल्ट होने शुरू हो जाएंगे. एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक. एपिडेमिक. अब देखो मैं आपको सिंपल वे में करवाती हूँ. जब डिसीज बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट में है, किसी एक लोकेलिटी के अंदर ही स्प्रेड अप है, दैट इज एंडेमिक. जब बहुत ज्यादा लोगों को डिसीज हो रहा है एक ही टाइम पे, दैट इज टर्म्ड एज एपिडेमिक. जब एपिडेमिक के भी हाई स्टेट आ जाए तो हो गया पेंडेमिक. वेरी गुड. ठीक है, तो पेंडेमिक आ गया सबसे बड़ा राजा आ गया इनका. ठीक है, एंडेमिक अभी थोड़ी लो में है, एपिडेमिक इन बीच में आ गया. अब क्लियर हो गया? एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक. क्लियर विद थ्री टर्म्स. थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए बार बार रिवाइज करते रहा करो. एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक क्या डिफरेंस है. क्वारंटाइन हो गए थे सारे लोग, दैट इज आइसोलेट हो गए थे. टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम विच इज अफेक्टेड, दैट इज एम्प्यूटेट करना. एम्प्यूटेट करना होता है जैसे सपोज समटाइम्स a person who is diabetic, if suppose the foot or something of that person gets the injury, so it is very important to cut off that part of the body, otherwise the poison just impact the entire body. That is to call it as amputate. Amputate. Cure for all diseases, that is panic. Panic होता है जब सारे diseases से cure off हो जाते हो. One who is recovering from illness, it's convalescent. Convalescent होता है suppose किसी को टाइफाइड हुआ, फीवर हुआ, कुछ भी हो गया, you're into the recovering state, that is convalescent. और जो पर्सन रिकवर होता है उसे बोलते हैं कॉन्वलेसेंस. तो कॉन्वलेसेंट और कॉन्वलेसेंस सेम होता है. अच्छा, कॉन्वलेसेंट से मुझे याद आ गया, कॉनेस्योर क्या होता था? कॉनेस्योर क्या होता था? ये किया था हमने. कॉनेस्योर कौन थे? कौन है? श्योर नहीं है. कौन कभी कोई आ जाता है, कभी कोई हो जाता है. और कैसी इंग्लिश बोलते हैं? जजिंग आर्ट. वेरी नाइस. Connoisseur, that is we are not sure, we are judging art, music, taste, anything. और मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, इंडियाज गॉट टैलेंट, ये सबसे कॉनेस्योर याद आना चाहिए. कॉन्वलेसेंट आ जाता है जब बंदा क्योर हो रहा होता है किसी इलनेस से, दैट इज कॉन्वलेसेंट. वांट और पुअरनेस ऑफ ब्लड, जब मुंह सफेद हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब खून की कमी हो जा रही है, येलोइश हो रहा है, अनीमिया उस पर्सन को. Then it is to be able to tell the nature of the disease by its symptoms, it's diagnosed. The science of diseases of human body is pathology, and the mosquito which transmits the malaria, that is anopheles. हमने छोटे होते बहुत टर्मिनोलॉजीज की थी. एनोफिलीज होती है, मलेरिया कौन ट्रांसमिट करता है, क्या उसे बोलते हैं. तो जस्ट अ रेपिटेशन, बिकॉज साइंस के एक आधी टर्मिनोलॉजीज आपको आ सकती है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू द साइंस एंड ऑल दैट. ठीक है, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ये थोड़े टफ थे साइंस के, तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. अब मैंने बताया था एपिडेमिक, जब एक टाइम पे बहुत लोगों को इलनेस इफेक्ट हो रही है, दैट इज एपिडेमिक. जब वो बहुत ज्यादा एपिडेमिक बढ़ चुकी है, दैट इज पेंडेमिक. जब कोई डिसीज या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर प्लेस में है, दैट इज एंडेमिक. जो सब्सटेंस जर्म्स को साफ करने के लिए लगाते हैं, दैट इज एंटीसेप्टिक. जब दांतों में कोई खराबी हो जाती है, जो हम चीज को लेते हैं, दैट इज कोकेन. Then it is सर्जरी, अनकॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस करने के लिए क्लोरोफॉर्म, जिससे हमें पेन नहीं हो, मतलब हमें फील ही ना हो, दैट इज एनेस्थेटिक. देन इट इज जिससे हमारी पेन कम हो जाए, दैट इज एनोडाइन. अगर कोई स्कार रह गया है, वाउंड रह गया किसी एक्सीडेंट के बाद, दैट इज सिसाट्रिक्स. मेडिसिन और कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन, दैट इज एंटीडोट.
अगर आप इन्फेक्शन से फ्री होना चाहते हो, दैट इज टू बी इम्यून. अलग होना, आइसोलेट. किसी को स्लीप नहीं आ रही है, दैट यू नीड सम काइंड ऑफ अ ड्रग, दैट इज नार्कोटिक. A medicine used to cause vomiting, that is emetic. Then you have quarantine, जब आप सेपरेट हो जाते हो. एम्प्यूटेट, किसी पार्ट ऑफ बॉडी को कट करना ताकि जो डिसीज है, पॉइजन है, वो पूरी बॉडी में ना आए. पैनिक, a cure for all diseases. One who is recovering from illness is convalescent. Want or poorness of blood is anemia. Agar to be able to tell the nature of the disease by its symptoms, it's diagnose. The science of disease of human body is pathology. The mosquito which transmits malaria is Anopheles. Till here, any problem to anyone? किसी को कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो गया कि ठीक है, थोड़े से बड़े, अभी थोड़ा 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 करके हम खत्म कर लेंगे. Hardly, I think, we will till 1 more hour and we will be done with all these, because we require maximum 3-4 hours are required. Clear? Interesting, eh? Are they interesting or are you getting bored right now? Boring तो नहीं है, I think, because you are knowing lots of words in this case. Celibate क्या होता था? CELIBAT. अभी क्विज आएगी. सेलिब्रेट क्या होता था? खुद से तुम नहीं कर पाओगे. इट इज फॉर श्योर इफ यू आर जस्ट गेटिंग दिस द साइंस में. हाँ, साइंस तो होती बोरिंग है. व्हाट कैन बी डन इन दैट केस? मैरिज वाला फेवरेट होगा, है ना? सो टायर्ड, थोड़ा सा और वी आर गोइंग टू एनर्जाइज आवरसेल्व्स, बट थोड़ा सा पढ़ लो. एकदम से ऐसे एक बारी सिर्फ सुन लोगे, दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प यू आउट. ठीक है? So don't be tired as of now. I'm speaking why you guys are getting tired. Just have a relax, drink plenty of water, और कुछ sugar level intake ले लिया करो. It will be all okay. ठीक है? तो 1 hour more and then it will be done, because if I say कि पढ़ लो documentation 500-600, नहीं कर पाओगे. हमने 200 से ज्यादा कर लिए हैं और तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि हमने 200 से ज्यादा रिवाइज कर लिए हैं. ठीक है? So by the end you will be able to know कि हमने कितने कर लिया. I'll tell you the number by the end. That is why I'm not revealing it out. Death से related फटाफट करते हैं. Fainting or death due to deprived of air. सांस ना मिलना, right? Then it is called as asphyxia. So asphyxia, that is why I do not have lunch ना. lunch नहीं करना चाहिए in between. Asphyxia is when you deprive of air. Dead body human की बोलते हैं corpse, और animals की dead body को बोलते हैं carcass. ठीक है? So carcass is a dead body of an animal. A place where dead bodies are temporarily kept, that is mortuary. Mortuary बोलते हैं. Disposable of dead body by burning. Burning के बाद क्या होता है? Cremation होती है. To preserve a dead body from putrefaction, that is embalm. किसी जैसे अगर हमने बोला कि डेड बॉडी को कुछ टाइम प्रिजर्व करना है, तो दैट इज एम्बामिंग. बामिंग करते हैं उस बॉडी की ताकि वो कुछ डेज सर्वाइव, स्मेलिंग ना हो ज्यादा. A pile of wood which is placed on the dead body, that is pyre. An examination of dead body, that is termed as postmortem. Occurring after death, that is posthumous. Property left to someone by will. अपनी मर्जी से छोड़ के जा रही हो तो क्या है? लेगेसी. Killing of oneself, suicide. Killing of human being, homicide. Murder of brother is fratricide. Murder of newborn child is infanticide. Sister, sororocide. Fratricide, infanticide, sororocide. Matricide मदर की, और फादर की डेथ को बोलते हैं, मर्डर को बोलते हैं पेट्रीसाइड. ये देखो, बस यही आपको याद करना है. 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है. ब्रदर की डेथ को बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड, मदर की डेथ को फ्रेट्रीसाइड, फादर की डेथ को पेट्रीसाइड, सिस्टर की डेथ आ जाती है, और एक आपको इन्फेंट की इन्फेंटिसाइड, सिस्टर की सोरोसाइड. दिस वाज वन व्हिच वर वेरी इजी आल्सो, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है. फ्रेट्री, सोरो, पेट्री, मेट्री एंड इन्फेंटी. 5 है, 5 याद कर लो. ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द क्विज टू मेक यू अवेकन. गो विद द फर्स्ट वन. अब इसमें करना है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ओह वाओ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये तो तुम्हें खुद से बताने पड़ेंगे. देखते हैं किस किस को याद है. अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम. क्या होता है? जो म्यूजियम का इंचार्ज है. म्यूजियम का इंचार्ज कौन होता है? किसी को नहीं याद? वाओ, वेरी गुड. एक आदमी ने सही भी आंसर दिया है. क्यूरेटर, राहुल को याद है. बाकी समथिंग दैट स्टार्ट्स विद क्यूर. बालाजी आधा तो पढ़ ही लिया. क्यूरेटर. अथीस्ट कहां से हो गया? अथीस्ट तो होता है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम इज क्यूरेटर. अब हर तरह के क्वेश्चंस तुम्हें है, यहां से तुम्हें अवेयरनेस स्प्रेड करने के, बिकॉज़ आई न्यू दैट बाय दिस टाइम यू विल बी टायर्ड. So this set of questions where you have to brainstorm yourself.
अच्छा, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, वो क्या होता है? अथीस्ट. वेरी गुड राहुल. सो दैट इज योर अथीस्ट हो गया. चलो नेक्स्ट. वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, ये भी हमने किया था. पोस्टेज स्टैम्प्स वाला कौन है? राइज अप योरसेल्फ, डोंट बी टायर्ड. पहले नहीं, मुझे थर्ड का बताओ क्या है. फिलैटलिस्ट. इट्स फिलैटलिस्ट. ओके, इट्स नॉट फिलैट, इट्स फिलैटलिस्ट. नोट कर लो, फिलैटलिस्ट. ओके, नेक्स्ट. वन हु गोज ऑन अ जर्नी टू होली प्लेसेस. होली प्लेसेस वाला क्या था? ये भी हमने किया था, बालाजी एंड ऑल दैट, राइट? वेरी गुड. पिलग्रिम. पिलग्रिम, ये सारे रेपिटेशन है, मिक्स है. गुड. नेक्स्ट. वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स. इजी. क्या होता है? जल्दी से बताओ. चारों इकट्ठे लिख दो, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है. दैट which cannot be understand, one who studies stars and sky, substance, a plant that draws sustenance from other. ये तुम्हें आना चाहिए. इट्स वेरी इजी. जो एक की हेल्प में, जैसे अगर ये प्लांट है, इसके ऊपर ही कोई और रह रहा है, उससे हेल्प लेकर सरवाइव कर रहा है. वेरी गुड. पहला हो गया टीटो टैटलर. ठीक है. उसके बाद एस्ट्रोनॉमी भी ठीक है. ठीक है, ये भी तुम्हें आता था, एस्ट्रोनॉमी. अगला बताओ, इसका क्या आएगा? एस्ट्रोलॉजी तो हो गया. इसका क्या है? दैट व्हिच कैन बी अंडरस्टूड, इंटेलिजिबल. अगला, ये तुम्हें नहीं आता था. लेजिबल भी कर सकते हो, बट इट्स नॉट. इंटेलिजिबल होता है वो. ये क्या आएगा? अ प्लांट विच ड्रॉज सस्टेनेंस फ्रॉम अनदर्स. किसी और से खाना पीना लेते थे, वो एक दूसरे के ऊपर रहते थे. हमने पढ़े थे छोटे होते. हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज. और क्या पढ़ा था? पी से शुरू होता है. इट स्टार्ट्स विद पी, एस पे खत्म होता है. अब तो आना चाहिए. परपोसी नहीं होता. पैरासिटिक. गुड, ग्रेट, नियर टू इट. पैरासाइट्स. पैरासाइट होते थे, पैरासाइट्स. परपोसी क्या होता है अनु? न्यू वर्ड. पैरासाइट्स. वेरी गुड. गो फॉर दिस वन. चार और. A child whose parents are dead, a dead body of human body किया हुआ है आपने. After a child born after the death of his father, ये तुम्हें शायद ना आता हो. Descending from the parent to child, ये भी तुम्हें आता होगा. And the success story of one's own life, ये भी तुम्हें आता होगा. एक नहीं आता चाहिए, बाकी सारे आने चाहिए तुम्हें. Easy, easy peasy है ये बहुत ज्यादा. These 5 are easy peasy. हाँ करो. वेरी गुड. कट्ठे दो आंसर्स. वेक अप योरसेल्फ, डोंट बी टायर्ड. आई एम टेलिंग यू, अगर आज खत्म कर लोगे, गुड. घंटे तक सारे ईडिया ये वन वर्ड्स खत्म, फिर तुम्हें फ्री हो. वेव नहीं है भाई. जब वेव के पेरेंट्स अलाइव होते हैं, वो टाइम स्पेंड करते हैं स्ट्रीट पे. ये याद रखो. जो वेव होता है ना, उसके पेरेंट्स होते हैं, वो स्ट्रीट्स पे ज्यादा टाइम रहता है. ठीक है, वो स्ट्रीट्स वाला है. ये तो ऑर्फन वाला ही है. ठीक है. डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉप्स आ गया. अगर चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ, क्या लिखा तुम लोगों ने? पॉस्थ्यूमस चाइल्ड. वेरी गुड बालाजी, राइट वन. पॉस्थ्यूमस आ गया. डिसेंडिंग फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, क्या लिखा है? लिगेसी बोल दो, हेरिडिटरी बोल दो. हेरिडिटरी आ गया ये तुम्हारा. ठीक है. और ये स्टोरी ऑफ वन्स ओन लाइफ, क्या लिखा है तुमने? वन्स ऑन लाइफ. ये क्या आएगा इसका? ऑटोबायोग्राफी. वेरी गुड. जिन जिनके सही है, वेरी कमेंडेबल वन. ऑटोबायोग्राफी. सो आई थिंक बालाजी के आंसर सही थे काफी हद तक. रजनी बीच बीच में आंसर्स हैं. आदित्य गुड. दिव्यांशी राइटर्स. विजन होमिसाइड नहीं होता बच्चे. होमिसाइड कहां से आ गया तुम्हारा? चलो नेक्स्ट है उसी तरह से. अब मैंने तुम्हें सारे पेरेंट्स का एक बार मर्डर करके दिखाया था. अब मैंने बच्चे का मर्डर करके दिखा दिया तुम्हें. इन्फेंट का मर्डर किया मैंने. सिस्टर का कर दिया मैंने. आई एम नॉट डन एनी मर्डर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. ब्रो का कर दिया, वाइफ का कर दिया, मदर का कर दिया, और फादर का कर दिया. इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे. अब उसी तरह से इन्फेंट का मर्डर, इन्फेंटिसाइड. सिस्टर का मर्डर, सोरोरोसाइड. ब्रो का मर्डर क्या होता था? फ्रेरिसाइड, फ्रेटिसाइड. मदर का मर्डर, दैट इज मेट्रीसाइड, मातृ. फादर का मर्डर, दैट इज पेट्रीसाइड. और पूरी पेरेंट्स का मर्डर, दैट इज पेरीसाइड. ठीक है. इस तरह से याद रखा करो. मर्डर मर्डर मर्डर, लॉट्स ऑफ मर्डर्स वी हैव डन एंड यू शुड बी अवेयर. क्राइम पेट्रोल देखते हो,
तो पैरिसाइड हो गया, ठीक है। राइजिंग फ्रॉम द डेथ, डेथ से कोई अलाइव हो जाए वैसे तो भूत ही होगा, बट उसको बोलते हैं रिसरेक्शन, ओके। राइजिंग फ्रॉम द डेथ, जैसे किसी ने बहुत ज्यादा, समवन हैज रिजन फ्रॉम द कोमा स्टेज एंड ऑल दैट, सो वी कॉल इट रिसरेक्शन ऑफ इट, राइट। किल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोक्यूटेड, किसी को इलेक्ट्रिक करंट से मर्डर हुआ, उसका इलेक्ट्रोक्यूटेड होगा। मर्डर ऑफ अ किंग, किंग का मर्डर होना, दैट इज रेजिसाइड। ये चार जो थे, पैरिसाइड नया है, कम आता है, डेथ के रिसरेक्शन भी बहुत कम होता है। तुम लोग को वाइफ का मर्डर करना है, आस्किंग वाइफ का मर्डर, गुड। ही हेट्स मैरिज, ही हेट्स वाइफ, जिंदा क्यों है, रेजिसाइड, ग्रेट। नेक्स्ट इज नेचर, राइट, ओके। दिस काइंड ऑफ जोक्स आर इंपॉर्टेंट, दीज आर, व्हाट आर दीज कॉल्ड इन बिटवीन जोक्स ऑफ द क्लास, व्हाट इज इट कॉल्ड? कौन पहले आंसर करता है उसको टॉफी मिलेगी। Who is going to answer first? The breaks in between which Anoop is bringing. Anoop hates marriage. He wants to live a life of celibate, and he wants to murder his wife. If he ever murders his wife, just you can have a live chat as a record. Midway jokes को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्ड क्या होता है मिडवे जो? इंटरल्यूड, गुड, कूल ब्रो इज द बेस्ट वन है। चलो अब नेचर के लिए आ जाते हैं। एट होम इक्वली और इन लैंड, पानी में भी रहते हैं और यहाँ पे भी, जैसे होता है टोटवाइसेस एंड ऑल दैट, सो दीज आर द एम्फिबियंस, फ्रॉग्स, ऑल दीज लिविंग और गोइंग इन फ्लॉक्स और हर्ड्स, ग्रेगेरियस, जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। अब ह्यूमंस है वो भी झुंड में रहना पसंद करते हैं, अकेले कोई रहना नहीं पसंद करता, दैट इज बीइंग ग्रेगेरियस इन नेचर। The dormant condition in which plants and animal pass the winter, चलो भाई विंटर को पास करते हैं, लग से रहते हैं, that is hibernation में जा रहे हैं हम मोड में, that is your hibernation mode। जो लीव्स, ये हमने छोटे होते पढ़े थे, डेसिडियस ट्रीज होते हैं, कौन से ट्रीज होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज आ रहा है, तो जो अपने लीव्स को एनुअली ड्रॉप करते हैं, दीज आर द डेसिडियस वंस। अ कट चूइंग एनिमल जैसे काउज है, दे आर कॉल्ड एज द रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स आते हैं जो कड को च्यू, मतलब दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन च्यूइंग इट आउट, एवरी वी हैव सीन अ काउ और buffalo or someone like that, so they are the ruminants, and you know, like more you chew, more your food is in better engulfing states, बहुत better होता है वो। तो it is advised that you have to chew 42 times before you take your food inside your body, so it's like approximately this much, more you chew more it is healthier and more it is 32, चलो 42 32 एक ही हो गया, 10 मिनट ज्यादा कर लो, 42 कर लो, it's 42 है ना, 32 से ज्यादा है। चलो a gnawing animal example, the rats, अब rats and all that is rodent आ जाते हैं, rodents होते हैं, जैसे all these are snakes, rats and all that, these comes in the, basically rats के लिए हम rodents use करते हैं, rodent repellent is there, ठीक है। a four footed animal, quadruped, ये हमने देखा हुआ, 4 quadruped क्या आ गया, animals which are carrying their young in the pouch, kangaroos and all that, they are the marsupials होते हैं। अभी kangaroos कौन से थे, कौन जीतते हैं हमसे संडे को? Who have won from India? किस किस ने मैच देखा था, किस किस को मैच बहुत अच्छा लगा? Aussie, Rajni is nicknamed Australia. How many of you liked the match, were seen till the end? That yes, it was the best match ever. नहीं लगा? So how many of you ever cried? How many of you did you cry that yeah, it was so bad and so worse? That was the stage, like even I in the wake up in the next morning and I was like, I wish India would have won and the everyone would have been cheering it up to the next level. So not the worst one, chalo, it's everyone's day. We didn't have our day at that day, so it's okay. So it's always like, okay, so we remember from the kangaroos, we remember the Australians, and there we remember the marsupials. A preparation for killing the insects, that is insecticides. A plant or animals that are going over the other, that is termed as parasites. Lasting for one single year or a season, it's annual. 2 season के लिए biennial, ज़्यादा season के लिए आ गया perennial, ठीक है? That part of the seed which develops into the plant. अब ये बहुत interesting है, ये तुम्हें science वाला ही दोबारा याद करना है. That part of the seed, जो seed का part जो plant बन जाता है proper, so ये आ जाता है embryo या germ होता है, ठीक है? So next it is your the part of the embryo जिससे roots निकलते हैं. अब वो embryo part जहां से roots निकलने शुरू होंगे हमारे, उससे बोला जाएगा radicle, ठीक है? The part of the embryo which forms the roots is termed as radicle. The process by which young plants begins to grow, that is termed as germination. The process by which plants give off excessive water which is given through their leaves, that is transpiration. The process by which the plants and animals breathe, that is respiration. सांस लेने को लिया, respiration.
जो एक्स्ट्रा पानी था उनको, जैसे बारिश आ गया, हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पानी दे दिया, दे गेट रिड ऑफ दैट वाटर, दैट इज टर्म्ड एज ट्रांसपिरेशन। प्रोसेस जो यंग प्लांट्स ग्रो होते हैं, बड़े बनते हैं, दैट इज टर्म्ड एज जर्मिनेशन। जो छोटे छोटे एम्ब्रियो से रूट्स निकलती हैं, दैट इज रेडिकल। जो सीड्स प्लांट्स बनते हैं, दैट इज एम्ब्रियो। सिंगल ईयर के लिए एनुअल, पेरेनियल, और 2 सालों के लिए बाइनियल। The plant or animal which grows on the another is termed as parasite. The process by which plants take up minerals from the salts through their roots is termed as absorption. Absorption. ABSORP वाला ये absorb वाला नहीं है, ये याद रखना. The tiny openings, हमने छोटे होते पढ़ा था कि जो leaves होते हैं उसके ऊपर छोटी छोटी openings होती थी, ठीक है, तो उससे क्या बोलते थे, जिससे वो air intake करते हैं, that is termed as stomata. And then it is the green part of that plant is termed as chlorophyll, ये भी पढ़ा हुआ है. The process by which pollen dust एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते थे, that is termed as pollination. The entrance of pollen grains into the ovules of something to germinate it out, to fuse it out, that is termed as fertilization. And one who studies plants and animal lives, it's naturalist. One, the parts of an animal killed for food which are rejected or considered waste. अभी याद रख लो through the terms ऑफ, फॉल ऑफ से यार उल्टा करो इसका, मतलब कोई चीज गिर सकती है. इफ यू हैव स्टमक एक, नहीं स्टोमेटा, और क्या स्टमक एक, ओके. तो जैसे अब मैं, इफ एनी वन ऑफ यू आर नॉन वेजिटेरियंस, अभी मैंने एक वर्ड कराया था अबैटवा. अबैटवा क्या होता था, किसको याद है अबैटवा? अबैटवा अनूप मिलके आया था ऑस्ट्रेलिया वालों से कि ऑस्ट्रेलिया वाले सैड है, हम जीत गए. ग्रेट. ओके, टेल मी व्हाट इज अबैटवा. नहीं यार, वेरी गुड, एक्सपेक्टेड गाइस. क्या था बताओ जल्दी से. तुम लोग आते सो रहे हो कि क्या कर रहे हो, तुम्हें याद ही नहीं है. 3 घंटे से मैं बोल रही हूँ और तुम लोग को याद नहीं हो रहा है. व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर यू गाइस. थोड़ा तो तुम लोग करो, याद नहीं आ रहा. अबैटवा, स्लॉटर हाउस, मैंने बोलता ना आई एम गोइंग टू अबैटवा, जो मीट शॉप होती है जहां पे चिकन कट किया जाता है, मीट शॉप हो गई. स्लॉटर हाउस, कसाई खाना जहां पे हम मारते हैं, ठीक है. और उसके बाद क्या होता है, कसाई खाना हो गया, मीट शॉप होगी, जो बंदा काटता है उसे क्या बोलते हैं, बच्चर, बुच्चर होता है. और जो कट कर रहा है मीट को, जो जगह होती है जहाँ पे चिकन मीट लटकाया जाता है, इससे याद करो, दैट इज टर्म्ड एज अबैटवा, स्लॉटर हाउस या फिर मीट शॉप, ठीक है. तो याद करो दोबारा से, अबैटवा रिगेन होना चाहिए, एक जगह से याद आ जाओ. मुझे तुम्हें याद नहीं कराना चाहती थी तुम्हें वो शक्लें, अगर इफ एनी वन ऑफ यू आर वेजिटेरियंस, द प्लेस where the chicken shops, dead bodies of the meat and the people they are being kept, people नहीं sorry, ये dead bodies of these, dead body of animals क्या होता है, dead body of animals क्या होती है, क्या होती है डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, कार्कस, वेरी गुड, कार्कस होती है, राइट. तो जो कार्कस आ गया दैट इज डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स आ गया, स्लॉटर हाउस हो गया, अबैटवा हो गया. फॉल ऑफ हो जाता है या ऑफल तुम जिसे बोलते हो, जैसे जो प्लांट का, हम जो एनिमल का पार्ट है जो हम खाते हैं, सपोज करो द लेग ऑफ दैट चिकन इज देयर, ओके. तो हम क्या खाते हैं, लेग खाते हैं, और वी हैव सम पार्टिकल्स जो हम सेपरेट कर सकते हैं, और द वंस वी कैन सेपरेट फॉर ईटिंग एंड द अदर व्हिच आर द रिमेनेंट्स वी कैन लीव इट आउट, राइट. So that is termed as your offal. ठीक है, तो offal is also interesting one, easy to remember. Rock from which metal is extracted, that is an ore. A thick underground stem, that is rhizome. Animals with backbone is vertebrates, animals without invertebrates. Inside of a nut क्या होता है, kernel. Central part, that is core. अब किसी animals की study को बोलते थे हम fauna, plants की study को बोलते थे flora. The last stage through which insect passes before it becomes a perfect insect, that is chrysalis. The absence of rain for a long time, it's drought. To supply land with water by artificial means, irrigation करना. The feelers of an insect is called antenna. जो आगे होते हैं, feelers होते हैं insect के आगे. These are the antennas. Dead skin, जो सांप है अपनी चमड़ी को उतारता है, that is termed as slough. We'll make a break, relax. कोई ओवरफ्लो नहीं है, इसको एकदम से सुनोगे तो ऑब्वियसली लगेगा ज्यादा हो गया, बट रिलैक्स इट आउट, आई विल रिवाइज इट आउट विद यू, ठीक है. थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, बस थोड़े से लास्ट सेक्शंस रह गए एंड इट इज डन. कुछ नहीं होगा, और इसको कोई वो नहीं होगा, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, तुम आराम से जिंदा रहोगे इसके बाद भी. तो उसके बाद रेस्ट करना, ठीक है.
एंड डॉक्यूमेंटेशन को डाउनलोड करना. माय मेन पर्पस इज, अगर मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगी, बोल के सुन लोगे तुम लोग. जैसे स्लॉ है, इंपॉर्टेंट क्या है, सांप की स्किन जो उतर रही है, दैट इज स्लॉ आ गया. इंसेक्ट का एंटीना, चलो कम पूछा जाता है. आर्टिफिशियल मीन से इरिगेट. एब्सेंस ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज ड्रॉट. क्राइसैलिस नहीं पूछा जाता अभी तक, ठीक है. जैसे ये हो गया क्राइसैलिस, क्या हो गया, जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई चीज है जो इट इज लिटरली, यू कैन से इट आउट. मैं खत्म करके जाऊंगी. आई एम गोइंग टू कीप इट ऑफ कि यू हैव टू डू इट आउट टिल देन. दिसंबर में एग्जाम है ना, अभी हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टारगेट्स पड़े हैं. वन वर्ड, और ये मैं पहले इसलिए करा दिया बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं. तो मैं डिफिकल्ट से स्टार्ट करूंगी, इजी पे मूव करूंगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा. तुम्हें ऐसा लगेगा आधा सिलेबस हो गया, राइट. कुछ कुछ बीच में इंटरेस्टिंग जोक्स मारा करो, इंटरल्यूड्स किया करो, ताकि सबकी एंटरटेनमेंट होगी, ठीक है. ओके, सो चलो नेक्स्ट करते हैं. उससे पहले मैं 2-3 क्वेश्चंस पूछती हूँ, मुझे बताना क्या क्या होता था. स्टोमेटा क्या होता है, देखते हैं कितना कितना सुन रहे हो, याद कितना है. क्लोरोफिल क्या होता है, स्लो क्या होता है, देन कार्टोग्राफी क्या होता है. 6 पूछ लेते हैं, है ना. एंड देन मिसैंथ्रोप क्या होता है, और अनूप के लिए क्या वर्ड्स हमने किए थे, ठीक है. अनूप क्या क्या है, चलो जल्दी से बता दो मुझे. कार्टोग्राफी, अच्छा चलो स्टोमेटा बताया तुम लोगों ने. प्लांट्स गेट वाटर, प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है, एयर कहाँ से मिलती है ना, एक तरह का पानी, एयर, एयर सोर्स आ गया. क्लोरोफिल हो गया, ग्रीन पार्ट. स्लॉ, स्नेक अपनी चमड़ी को छोड़ता है, वेरी गुड. कार्टोग्राफी, मैप्स को ड्रॉ करना. मिसैंथ्रोप, हेट्स मैनकाइंड. अनूप के लिए क्या था, अनूप बोलता है मुझे शादी नहीं करनी है, अनूप बोलता है मुझे सिंगल रहना है पूरी लाइफ में, अनूप को लड़कियों से नफरत है. इसके लिए क्या क्या वर्ड्स थे, सारे लिख दो. व्हाट वर द वर्ड्स फॉर दैट, जल्दी से टाइप करो. आदित्य, रजनी, अनूप खुद ही नहीं बता रहा. व्हाट आर द वर्ड्स. he hates women, he hates marriage, he wants to live a single life, or he wants to go for murdering his wife. तो what are the words. माइसोगाइनिस्ट है, ऑटोबायोग्राफी थोड़ी हुई अनूप की. माइसोगाइनिस्ट है अनूप, वेरी गुड अनूप. देन माइसोगेमिस्ट भी है अनूप, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू मैरी, ही हेट्स वुमेन, दैट इज माइसोगाइनिस्ट. एंड देन इट इज पॉलीगाइनिस्ट थोड़ी है, वो तो पॉलीगाइनिस्ट ही बना दिया राइट्स विजन ने, ठीक है. हाँ, सलमान इज द हिंट, रेक्स, वेरी गुड. वो ढूंढा है कि वाइफ की मर्डर को क्या बोलते हैं, बिकॉज ही इज गोइंग टू मर्डर हिज वाइफ. चलो एक दो और सेक्शंस रह गए, जल्दी से करते हैं. राइटिंग दैट इज इजी टू रीड, पढ़ने में इजी है, लेजिबल. अब कईयों की राइटिंग होती है जो पथेटिक होती है, ठीक है, और कईयों की राइटिंग बहुत सुंदर होती है. माय राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, सो यू कैन कॉल इट आउट एज लेजिबल. और किसी की राइटिंग जो बहुत गंदी है, दैट इज टर्म्ड एज इलेजिबल. ओके. एबल टू रीड, लिटरेट. अनएबल टू रीड इज इलिटरेट. फिट फॉर फूड, एडिबल. अनफिट फॉर फूड, इनएडिबल. ये सिर्फ सुन लो, ये इजी वाले हैं. फिट टू बी चूजन, एलिजिबल. अगर तुम लोग हो सारे जाने, तुम पोस्ट के लिए फिट हो, एलिजिबल हो. तुम लोग कोई नहीं पार कर पाता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यू आर इनएलिजिबल फॉर दैट. कोई चीज तुम सुन सकते हो, ऑडिबल. नहीं सुन सकते हो, इनऑडिबल. बोर्न फॉर मैरिड पेरेंट्स, जैसे अगर आप मैरिज के बेसिस पे बोर्न हो, लेजिटिमेट. इलेजिटिमेट, that is who is unmarried, who is born from unmarried parents, right. Next is group together. Now some of the miscellaneous yahan tak the aapke sectional wise. Now last are the miscellaneous ones. Aditya is like very writing, see I write very bad, pathetic over here, but I have a good writing skills on page and all that, right. So I don't say. Okay, one who writes good, what is that called, kaun se humne one word ki hai. What is the idiom for that called? What is the idiom for the good writing skills? Not writing skills, but good in handwriting, calligraphy. Very nice. Good guys. Okay, चलो अब ये है बहुत इजीली है, हमने एक तरह से रिफाइन करना है. इसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होगा. To move from one country to another, it is migration. Migrate करना है, ठीक है. So quick revision starts. One who leaves his country to settle into another. अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे में जा रहे हो, इमिग्रेंट. जिस कंट्री में एंटर कर रहे हो वो हो गया इमिग्रेंट, ठीक है. एमिग्रेंट और इमिग्रेंट ये वर्ड्स है, ठीक है.
उसके बाद आ जाता है तुम्हारा रिपेट्रेट। रिपेट्रेटस, जैसे अगर मैं तुम्हें अपनी कंट्री में वापस भेज देती हूँ, निकालना मिल रहा है बाहर से मुझे, आई वाज इनटू, सपोज आई गो टू सम कंट्री, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दे से गो बैक टू योर ओन कंट्री, दैट इज आई एम अ repatriate, ओके। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, इट expatriate, ठीक है। मैं अब उस कंट्री से, मुझे इंडिया से निकालना मिल गया, सो आई एम expatriate, ओके। लव फॉर वंस कंट्री, पेट्रोटिज्म। गुड्स ब्रॉट इनटू द कंट्री, इंपोर्ट, आना, इंपोर्ट, जाना, एक्सपोर्ट। A list of tables of duties payable on exports or imports, जो हमारा import होता है या export होता है उसके ऊपर जो tax लगता है, that is tariff. Then it is a list of goods dispatched with the quantity and price to the purchaser. जैसे मैंने ये सामान मंगवाया है तो मुझे क्या आता है, invoice of documents आता है, right? One to whom goods are dispatched, जिसको दिए जाते हैं goods, that is consignee. Consignee is a person to whom goods are given. So first is clear, I think. Second, now it is IMN और IR के साथ तुम्हें बीच में हेडिंग्स मिल जाएगी जो नेगेटिव्स को डिनोट करते हैं. That which cannot be pierced or penetrated, impenetrable. मतलब इसमें देखो सिर्फ आपको वर्ड्स के आगे वो लगाना है, जो कॉन्कर नहीं किया जा सकता, इनविंसिबल. ये तुम्हें याद करना डिफिकल्ट है, मैं मार्क कर रही हूँ जो तुम्हें डिफिकल्ट है और थोड़े इंपॉर्टेंट है. जो इंजर्ड नहीं है, दैट कैनॉट बी बाउंडेड और इंजर्ड, इनवनरेबल. वनरेबल, जिसको तुम खराबी नहीं पहुंचा सकते. दैट विच कैनॉट बी इमिटेटेड, इनइमिटेबल. इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, इनडिस्ट्रक्टेबल. इनकेपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ड, इनकम्बस्टिबल. इजी वाले हैं सारे. एंड्योरिंग ऑल टाइम्स, इररेलेवेंट. नॉट टू द पॉइंट, दैट इज इट्स योर इररेलेवेंट. जो आ जाएगा एंड्योरिंग ऑल टाइम्स, दैट इज इम्पेरिशेबल. अनेबल टू डाई, इमॉर्टल. मूव नहीं कर पा रहा, इमूवेबल. cannot be heard, inaudible, and cannot be seen, invisible. ये लीस्ट पूछे जाते हैं, बहुत इजी वाले हैं, सिर्फ इन, इम और वो लगा के है. तो ये एक बार सिर्फ रीडिंग मैंने करवाई है, दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट. नाउ द टारगेट क्विज टाइम फॉर यू गाइस. 10 क्विज टाइम्स है, जल्दी से करो. पहला बताओ, साइंस इन विच लैंग्वेज इज नोन. साइंस ऑफ द वर्ड एंड द लैंग्वेज इज नोन फॉर. ये हमने वर्ड किया है अभी लैंग्वेज की स्टडी के लिए. सिर्फ आपके 2 सेक्शंस पड़े हैं एंड इट इज डन गाइस. ओनली 2 सेक्शंस लेफ्ट. इट्स फिलोलॉजी गाइस, फिलोलॉजी. फर्स्ट है रवि आंसर्ड इट राइट एंड बालाजी आंसर्ड इट राइट. दैट्स गुड. नेक्स्ट गो फॉर दिस. One of the time tested ways of remembering a series of items is known as. क्या आएगा? ऑप्शंस के साथ देखा करो, सेकंड का क्या बनेगा. One of the time tested ways of remembering a series of items. सीरीज ऑफ आइटम्स को याद करना. तुम्हें पता है, तुम्हें मैंने चीज बोली भी हुई है कि जब तुम्हें मैं कोई चीज याद करवाती हूँ, मैं एक वर्ड याद करवाती हूँ, तुम्हें कभी नहीं भूलोगे. पगनेशियस, ये वर्ड है, ठीक है. हाउ टू रिमेम्बर इट आउट इज, अब ध्यान से सुनना. पगनेशियस, एवर यू फॉरगेट इट देन टेल मी. पगनेशियस इज, पग देखा है सबने, जो वोडाफोन का डॉग है, वेरी क्यूट वंस, आई वुड से इट आउट. ऐसा मुंह होता है उसका, ऐसा ही होता है कुछ. चलो यही है, ऐसा कुछ नहीं. नॉट क्यूट वन डॉग्स, पगनेशियस, पग है ना. तो पग जो है, अगर तुम लोगों ने पिग नहीं है, पग है, तो तुमने पग रखा है, सपोज तुमने पग रखा है अपने पास, ठीक है. तो उससे क्या होगा, तुम, वो क्या करेगा, तुम बाहर जा रहे हो उसको लेकर के लिए, ओके, तुम उसे बाहर लेकर जा रहे हो घुमाने के लिए, तो कोई बाहर का डॉग है, वो क्या करेगा, बाग करना स्टार्ट करेगा. तुम्हारा डॉग भी लड़ना चाहता है, वो ट्राई करेगा फाइट करने के लिए, पर बेचारे में हिम्मत ही नहीं है, वो छोटू सा होता है, वो लड़ नहीं पाएगा. तो पुगनेशियस इज हु वांट्स टू फाइट, मतलब ट्राई टू फाइट, मतलब वन हु स्टार्ट्स, वन हु ट्राइज टू फाइट बट कर नहीं पाता, ठीक है. ट्राइज टू फाइट, ट्राइज टू डू समथिंग, दैट इज पगनेशियस. टीथ नहीं है उसके, क्या वो थोड़ी, आई एम नॉट टेलिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू पगनेशियस. इस तरह से वर्ड्स को याद करना, कोई स्टोरी बना के याद करना, उसे बोलते हैं हम निमोनिक्स. निमोनिक होता है वो. और वन ऑफ द टाइम टेस्टेड मेथड्स और रिमेंबरिंग अ सीरीज ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड एज दिस वन. तुम लोगों ने वो याद किया होगा, द प्लैनेट्स. माय वेरी एजुकेटेड, सॉरी, माय वेरी एजुकेटेड मदर हैज जस्ट शोन अस 9 planets. किस किसने किया है, क्या है ये याद तुमने की होगी लाइन, माई वेरी
एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 planets. किस किसने की थी स्कूल टाइम में? सोलर सिस्टम. नाउ दिस इज निमोनिक्स. हम क्या करते थे? मार्स, वीनस एंड अर्थ. दिस इज योर मरकरी, मार्स, वीनस. आई फॉरगॉट इट इन द लॉन्ग रन. तो इस तरह से क्या करते थे हम? मरकरी, मार्स, अर्थ. दिस इज योर देन मार्स, दिस इज जुपिटर, दिस इज सैटर्न, दिस इज यूरेनस, दिस इज नेपट्यून. प्लूटो वाला हमने पी गायब कर दिया था, याद है? तो ये सारे क्या आते हैं? निमोनिक्स आ जाते थे. क्लियर? हाँ, तो पीरियोडिक टेबल्स के लिए ये सारे निमोनिक्स. उससे याद रखो, टाइम कलेक्टेड मेथड, दैट इज निमोनिक्स. बीच बीच में थोड़ा और रिफ्रेन करते हैं. नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर अपॉन ईच अदर. दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. दैट डू नॉट ट्रस्ट मतलब नेगेटिव वर्ड चाहिए. पॉजिटिव वाले हटा दो. क्या आएगा? क्या वर्ड आएगा? सांस. तुम्हें क्या करना लेके? यू आर ऑलरेडी टेकिंग. तो मुझे लेना चाहिए तुम लोगों की जगह. तुम्हें जो वर्ड नहीं आता ना उसको हटा दो. देखो ये तुम्हें वर्ड पता है, काम नहीं हो सकता. ये पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है. आस्केंस, दैट इज द थिंग. ठीक है. अगला. If a person cannot be easily handled or dealt with, he will not be complimented for his. कितने लोग थक गए हो? 2 सेक्शंस पढ़े हैं सिर्फ, उसके बाद तुम फ्री हो. तुम उड़ते पंछी हो, आजाद पंछी. फोर्थ का बी क्या होता है? फोर्थ का बी. If a person cannot be easily handled or dealt with, he will not be complimented for his. complimented नहीं होगा. रुको, पहले ये 2 कर लो. पहले क्वेश्चंस कंप्लीट करो. It is your tractability. It is your tractability. Okay? तो tractability आएगा. This is the C option. A person who constantly thinks he is a. जो बंदा बहुत सोचता है वो क्या होता है? A person who constantly thinks he is a hypochondriac, misogynist, misanthrope, hyperpituitary. क्या होगा? देखो कुछ वर्ड्स को एलिमिनेट करके देखो. तुम्हें 2 वर्ड्स में लगेगा. ये तुम्हें वर्ड नहीं आएगा, ये तुम्हें वर्ड नहीं आएगा. वो बहुत सोचता है. पिट्यूटरी इनटू दैट हाइपोकॉन्ड्रियाक आएगा. ये हाइपोकॉन्ड्रियाक. ये एलिमिनेशन मेथड से करने के तरीके हैं. इफ यू हैव टू डू विद दैट. ओके. But a person who is really sickly and unduly solicitous about his health is. ये हमने वर्ड किया था. ये वर्ड आप लोगों ने कर चुके हो. जल्दी से बता दो. डी कहां से आ गया? डायलेक्टियन, जो बहुत सोचता है अपनी हेल्थ के लिए, मैंने कराया था. वैलिट्यूडिनेरियन. सी. वैलिडिक्शन नहीं, वैलिडिक्ट्रियस. तुम्हें याद है वैलिडिक्शन फंक्शन होता है जब तुम किसी को रिटायरमेंट देते हो, जिससे तुम सपोज हाउस कैप्टन कुछ थे. दैट इज अ वैलिडिक्शन फंक्शन. इट इज वैलिट्यूडिनेरियन. मैंने माइकल जैक्सन का एग्जांपल दिया था. द ऑर्डर टू स्टे इन वन्स ओन बैलिविक मींस दैट अ पर्सन शुड रिमेन इन हिज ओन. बंदे को कहां रहना चाहिए? बताओ. means that a person should remain in his own. क्या आएगा? इजी है ये तो. सबसे छोटा लेवल निकाल लो. क्या होएगा? 7th का. डिस्ट्रिक्ट. वेरी गुड. बी आएगा. डिस्ट्रिक्ट. रूम में नहीं बोल सकते. कंट्री बहुत बड़ी है, बेड भी नहीं हो सकता. तो डिस्ट्रिक्ट इज अ शॉर्टर वन. Because our later speech was high flow and pretentious, the remoters termed it out as easy, very easy. अगर पुरानी टर्म्स याद की हैं तो वोकैबुलरी बेस्ड है ये. क्या आएगा? 8th वन. अनट्रूथफुल कैसे हो गया? जब मैंने बोला बहुत ज्यादा हाई फ्लो है, प्रिटेंशियस है, तो क्या होता है? बोम्बास्टिक. वर्बोस होता तो वर्बस हो जाता. अभी क्या आएगा? बोम्बास्टिक होगा. वेरी गुड. ए ऑप्शन इज द राइट वन जिन्होंने किया है. नेक्स्ट 2 रह गए. 9th और 10th. बताओ फटाफट. When the courtier has advanced to the highest position attainable, he was said to have reached the highest level of something. जैसे अगर मैंने याद कराया था वर्ड एक्मे था, उसी तरह से एक और वर्ड होगा. वेरी गुड. आई थिंक कूल ब्रो ने एक आंसर कर दिया. बाकी सी. थ्रेशोल्ड तो होता है, बस खत्म है. इसके बाद हमारे में हिम्मत नहीं है. दैट इज थ्रेशोल्ड. पिनैकल, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग. वेरी गुड. हर तरह के क्वेश्चन से सारे पुराने पास्ट के
इंपॉर्टेंट पेपर के क्वेश्चंस है सभी, तो एटलीस्ट यू आर सॉल्विंग इट राइट नाउ. Accepting his fate with calmness, camel driver said, "It is easy, easy peasy." Last one, last question. अभी का इस बार क्वेश्चन खत्म. हमारा थोड़ा सा रह गया, आधा घंटा. आई टोल्ड यू. हाँ, वेरी नाइस. इट्स माय किस्मत. देखो इस तरह से उठपटांग वाले भी आते हैं. दे आस्क्ड यू, इट वाज आस्क्ड इन वन एग्जामिनेशन, दैट इज इट्स किस्मत. इट्स नॉट ग्रोइंग लेट. तुम्हें लगेगा ये नहीं हो सकता, बट इट इज दिस ओनली. इट्स द चंक ऑफ द वर्ड व्हिच इज टेकन इनटू इट. चलो अब बताओ कितने लोग थक गए हो. 2 सेक्शंस रह गए हैं, लिटरेचर वाला रह गया और मिसलेनियस रह गया, फिर रिवीजन है. बताओ जल्दी से. कैन वी कंप्लीट इट? लेट्स हैव अ कंप्लीशन एंड देन यू स्टे इट आउट इन अ पॉज. फिर तुम ब्रेक लोगे, फिर तुम आओगे, क्या फायदा. रेडी हो? तुम लोग थक गए हो क्या हो? थके हो? नो रवीज नो. मैं थक गया हूं कि नहीं थका हूं? बताओ जल्दी से. You have to do it. I am happy that at least you are following it out. That is my happiness. करें? कंटिन्यू. थोड़ा सा रह गया, आधा घंटा खत्म करके देन यू आर फ्री. ठीक है, तो पहले थोड़ा कर लो. जस्ट या ओनली 2 आवर अहेड और थोड़ा सा रिवीजन है, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा कर करके एक स्टेप लेकर जाएंगे हम. पिनाकल्स, लेट्स क्रॉस अ पिनाकल. ओके चलो. लिटरेचर, माय फेवरेट वन. सो अ बुक इन विच इवेंट्स ऑफ ईच आर रिकॉर्डेड, दैट इज आपकी डायरी आ जाती है जहाँ पे आप इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हो. अ बुक कंटेनिंग द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेजेस इन विद द डेफिनेशंस, डिक्शनरी होता था. और डिक्शनरी को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हाट वी कॉल इट आउट. अब मुझे जल्दी से बता दो. What is a one word substitution to formulate the dictionary? याद है वो word के नहीं याद? The process of formulating a dictionary is called as, let me help you guys. L से start है, lexicography. Very good. Lexicography. Great. इस तरह से याद रखो, सारे मिक्स होंगे. A book of account जहाँ पे डेबिट्स कितना हुआ है, क्रेडिट कितना हुआ है, that is termed as ledger. A book with blank pages, ऑटोग्राफ है, पिक्चर है, स्टैम्प्स है, उसे बोलते हैं एल्बम्स. राइट. देन यू हैव नेक्स्ट, गिव मी अ मिनट. ओके, अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, कैटलॉग लगा होता है, कहाँ पे कौन कौन सी किताब पढ़ी है, कैटलॉग. अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्टार्टिंग में क्या आती है? ग्लॉसरी. इतना रिवाइज करते हैं फिर से. दैट इज पहले डायरी जहां पे इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर डिक्शनरी जहां पे वर्ड के साथ डेफिनेशन दी जाती है, जहां पे डेबिट्स क्रेडिट सब दिया जाता है, दैट इज लेजर. Then it is your autograph, picture, stamp, सब कुछ लगा है, that is your album. A list of books in a library is a catalog. A list of explanations of rare, technical and absolute terms, that is glossary. Then is a written account, usually in book form, often interesting and memorable. तो कुछ चीजें लिखी गई हैं, that is your memoirs. Trademark of the marker seen on the paper, which is held on the light. Marker लगा होता है कई जगह पे, that is termed as watermark. Let me motivate you guys. कैसी जॉब चाहिए और उसके लिए क्या इडियम था? जॉब चाहिए हमें जहां पे काम ना करना पड़े और हमें हाई पेड हो, तो उसके लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी. और वो कौन सा वर्ड था? सी, रजनी इज ऑल मोटिवेटेड कि उसको क्या करना है? सिनेक्योर करना. भी काम कर लेना आगे जाके, बट दैट इज इजी. ठीक है, गुड. चलो, वाटरमार्क्स. A one who pretends a great deal of knowledge, that is Weizsäcker. A brief summary of the book, सारी summary है book की, that is epitome. An extract or selection from a book of writing is excerpt बोलते हैं उसे, extract. The heading of descriptions, caption. Statement which is accepted without proof. अब hypothesis और axiom में क्या difference होता है? हम hypothesis को just formulation लेते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हम उसको accept नहीं करते हैं. लेकिन अगर हम उसको accept कर लेते हैं without proof, that is termed as axiom. Then it is a list of headings of the business to be transacted at a meeting, agenda. Language which is confused and unintelligible, that is jargon. हर एरिया के डिफरेंट jargons होते हैं. जैसे भाई का मतलब ब्रदर भी होता है, भाई का मतलब गुंडा भी होता है. तो it is up to the cities, up to the areas where it is being demarcated as. तो jargons are there. Even हर भाषा का, मैंने jargon का पहले एक चीज भी बताई थी. हम लोग बोलते हैं हार्ट सर्जरी, डॉक्टर्स बोलते हैं कार्डियो सर्जरी. तो उनके लिए हर जो जार्गन होते हैं, हर अपने ही प्रोफेशनल जार्गन्स डिफरेंट है. मैं लिटरेचर की तरह कोई जार्गन यूज करूंगी, आप लोग कुछ और जार्गन यूज करोगे. ठीक है,
Next is to remove the offensive portion of a book is called expurgate. Expurgate. Then it is exclusive right of an author की ये मेरी ही selling है, मेरा इस पे क्या लग चुका है, copyright लग चुका है. Error or misprint in writing, it is called erratum. Delivered without speech, without preparation, it is called impromptu, extempore. हम ये करते थे छोटे होते. A short speech by a player at the end, epilogue. जब तुम हार जाओ, जीत जाओ, तुम कोई स्पीच देते हो, उसे बोलते हैं epilogue. ठीक है. A person's own handwriting, it's autograph. A record of one's life by himself is autobiography. अगर कोई लाइफ हिस्ट्री है किसी और ने लिखी है, दैट इज बायोग्राफी. अच्छी एंडिंग वाला ड्रामा है जिसकी अच्छी एंडिंग है, हंसी वाली एंडिंग है, कॉमेडी. बुरी एंडिंग है, सैड एंडिंग है, ट्रेजेडी. ठीक है. इससे पहले एक वर्ड याद करते हैं फटाफट, तुम्हें लाइव हो कि नहीं हो मुझे बताओ. पैरिसाइड का मतलब क्या होता था? पैरिसाइड क्या होता था जल्दी से किसको याद है? व्हाट इज पैरिसाइड? किसको याद है पैरिसाइड का मतलब? मर्डर ऑफ फैमिली. फादर मर्डर नहीं, फादर का था तुम्हारा पेट्रीसाइड, फिर था तुम्हारा मेट्रीसाइड, फिर था तुम्हारा सोरोसाइड, फिर था तुम्हारा फ्रेट्रीसाइड, फिर था तुम्हारा इन्फेंटीसाइड. पैरिसाइड था पेरेंट्स. वेरी गुड दिव्यांशी इज राइट. पेरेंट्स में आ जाता है. पोइम और लेमेंटी, ये मैंने पहले ही बताया था. एलिजी, जब मैं किसी की सॉन्गफुल कोई डेथ के बारे में बोल रही हूँ, दैट इज एलिजी. कन्वर्सेशन, हम लोगों में कन्वर्सेशन चल रही है तो दैट इज डायलॉग्स. स्पीकिंग टू वन सेल्फ, कई बार आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप अपने आप से बात करते हो, दैट इज टर्म्ड एज soliloquy. And what is that person use, that is who is speaking while who is ये बताओ मुझे, somnambulist क्या होता है? somnambulist, what is somnambulist? बोल रहे हो कि चल रहे हो? walk in sleep. very good Balaji, great. So that is while you are walking in sleep. और खुद से बात करना is termed as soliloquy. Study by night is called as lucubration. Lucubration is when you are studying by night. To make expressive gestures or motions by speaking, gesticulate. कोई हाथ हिला ला के बात करते हैं, that is gesticulate. Language that is very much used, it is called as hackneyed. To pronounce words distinctly, it's called as enunciate. One who writes plays, dramatist, novelist, author, playwright, हम सारे पढ़ चुके हैं. Now they are the last section of the last area. यहां पे कोई प्रॉब्लम? नाउ इज द लास्ट मिसलेनियस सेक्शन. ठीक है, मिसलेनियस सेक्शन पे चलते हैं. यहाँ पे बहुत वर्ड रिपीट के भी दिखेंगे. ठीक है. सो इट इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस. 2 लैंग्वेजेस में फ्लुएंट हो तो बायलिंगुअल. लास्टिंग ओनली फॉर अ डे, जैसे लिली फ्लावर है, एक ही दिन आता है, एक ही दिन में खत्म हो जाता है, दैट इज इफर्मल, इफेमरल. अगर आप वर्ड फॉर वर्ड एक वर्ड के बाद रट्टे मार के याद कर रहे हो, दैट इज वर्बाटिम. वर्बल से आ जाता है. कुछ वर्ड्स तुम्हें याद होना शुरू होना चाहिए. वर्ब आ गया तो मतलब बोलने से रिलेटेड है तुम्हारा वो काम. ठीक है. वेस्टफुल इन स्पेंडिंग, एक्स्ट्रा वेजेंट. लर्न बाय हार्ट, मेमोराइज करना. अंडर अ नेम और अदर्स नेम, दैट इज इनकॉग्निटो मोड, मतलब छुपा के कोई चीज कर रहे हो. कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल काइंड्स, बहुत चीजें हैं. मिसलेनियस, जैसे ये अब तुम्हारा मिसलेनियस सेक्शंस है, मिक्स है ऑफ एवरीथिंग. कुछ कुछ. एक दिन के लिए सरवाइव करना क्या आएगा जल्दी से बता दो. लिली के लिए क्या आएगा? लिली के लिए क्या आएगा? किसको याद है? What lasts only for a day, it is called as what lasts for a day? E से याद है. ephemeral. Ephemeral is a word that lasts only for a day. बहुत लंबा चलता है तो perennial होता है. ठीक है. One day lasting is called as ephemeral. Next you have the exclusive right to buy or sell a commodity. जब आपके पास कोई right है, that you are the one who has authority to buy or sell something, that is termed as monopoly. Unable to pay one's debts. जब आप किसी के debts नहीं pay कर पा रहे हो, it means you are insolvent, right? So you are in debt, that means you are insolvent. अब मुझे बताओ, outfit of a newborn baby, जो bride की outfit होती है उसे क्या बोलते थे? Anyone who remembers it, what is the outfit for a bride called? जल्दी से बताओ. Trouser. ये याद होना चाहिए. मैरिज के रिलेटेड सबको याद है.
ट्रोई ट्रोई नहीं करना, ट्रॉजी। ओके, एंड उसी तरह से न्यूबॉर्न बेबी की आउटफिट को बोलते हैं लेट, लाइट। ओके, लाइट इज अ वर्ड। प्रोनाउंसिएशंस में मत जाओ, थोड़ा सा अपने इजी वे में याद कर लो, लेट इज अ वर्ड, सो दैट इज व्हाट यू कैन रिमेंबर। बहुत इजीली हम किसी चीज को तोड़ सकते हैं, दैट इज फ्रेजाइल। केपेबल ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू पावर, दैट इज फ्राइबल। फ्राइबल पाउडर में मिल जाता है ना, जैसे कई चीजें होती हैं जो हम पाउडर में मिला सकते हैं, दैट इज फ्राइबल। जिसको तोड़ सकते हैं, ब्रिटल, फ्रिबल उसे बोलते हैं, फ्रिजाइल बोलते हैं, ब्रिटल भी बोलते हैं, तो वो चीज आ जाती है। अ जॉब फॉर विच वन इज पेड बट हैज फ्यू और नो ड्यूटीज अटैच्ड, फेवरेट ऑफ ऑल, सिक्योर। अ लाइन फॉर पीपल वेटिंग फॉर समवन, क्यू। इजी वंस, अब इजी पीजी आ रहे हैं सारे। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीशिया। नहीं, ये डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है, इसमें कुछ कुछ डिफिकल्ट होंगे, कुछ हम जो लास्ट में कर चुके हैं, दैट इज अ सेक्शन। ओके, लॉस ऑफ वॉइड, अफोनिया। फोन मतलब गले की आवाज अगर तुम्हारी जा रही है, दैट इज अफोनिया। तुम्हारी मेमोरी लॉस हो रही है, दैट इज एमनीशिया। द लिक्विड विच कम्स आउट फ्रॉम द सीवरेज टैंक, इफ्लुएंट। इफ्लुएंट होता है जो लिक्विड है, जो तुम्हारा क्या है, सीवरेज से आ रहा है। टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम द ग्रेन, दैट इज विनो। विनो इज जब मैं ग्रेन और हस्क को सेपरेट कर रही हूँ, मैंने सेपरेट कर दिया, दैट इज योर विनो। फोरसिकर और नेग्लेक्टेड चाइल्ड, जिसके पास घर है लेकिन वो ज्यादातर कहाँ रहता है, स्ट्रीट्स में, वेफ मैंने बताया। कार्निवोर्स क्या होता है, जो लोगों के जो दूसरों के फ्लैश को खाता है। हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाने वाला। ओमनीवोर्स दोनों चीजें खा लेता है। बैटन, बैटन होता है जो पुलिसमैन या लोगों के हाथ में डंडा होता है, उसे बोलते हैं बैटन। ओके, तो बैटन इज जो डंडा दिखा। यॉर्क और एल्ब्यूमिन, अंडे की स्टडी, और अंडे की स्टडी को क्या बोलते थे, स्टडी ऑफ एग क्या होता है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एग कॉल्ड, ये हमने किया हुआ है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एग कॉल्ड, ऊलॉजी। वेरी गाइस, वेरी नाइस। तो इट इज, अगर येलो पार्ट है एग का, दैट इज यॉर्क, व्हाइट पार्ट है, दैट इज टर्म्ड एज एल्ब्यूमिन, राइट। ऑस्टियो नहीं आता, मैम यूज इंग्लिश काइंडली, मैं हूं समझ। Okay, I'll try to use both. Okay, so that is a bridge carrying a road or railway across this. So when you're using a midway, okay, so there it is called a bridge that is carrying, it is called via. We go via this, so remember it through via, that is viaduct. Also one word you can remember it, it is called a bridge. When you use a shortcut, when you use a short between the two things, that is a bridging also. A bridge, and the other is your viaduct. Then is a mixture of metals, especially when the inferior metal is mixed with another one. That is your alloy. Alloy means when 2-3 metals, bronze, this all are mixed to formulate something, that is termed as alloy one. Canopy. Canopy says if you have ever gone to some, you're driving somewhere, okay, and that place is covered from both the sides with trees and trees. What it is called? Canopy. Canopy is a place where both the sides you're having lots of trees and all, so that is canopy. Okay, so canopy is that one. And similarly, they are telling us a rich covered over the throne or bed or some other dignitary position, that is canopy. Next is घर की याद आ रही है तो नॉस्टैल्जिया, खाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, मेन्यू। वर्सेटाइल, वन हु कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, दैट इज वर्सेटाइल। कैरिकेचर, पुतला बना देते हो किसी का, फनी मिनिएचर ऑफ समवन इज टर्म्ड एज कैरिकेचर। कभी मोदी का बना दिया, अभी मैंने पग्नेशियस में पग का बनाया था, so that is when you're trying to make some funny that of it. Alias, when I'm not using a name taken by a person but which is not his real name. Suppose I start writing a book and I have a pen name, I write it with the name of any Rita, Geeta, whatever, so that is my alias. Valis is if I have a leather traveling bag with me, I'm taking a bag with me and that is made up of leather, that is termed as valis. And roster is when you are assigned with the duties, today you will have your duty, tomorrow is your off, day after tomorrow is your duty, then is your off, that is termed as a roster plan. A thing worn by some persons as a charm against evil, against a witchcraft, that is termed as amulet. आजकल blue evil eye चल रहा है, that is termed as your amulet आ जाता है. Bony framework of body is called skeleton. Framework of car, car का तुम्हें याद होना चाहिए, that is chassis. To be over particular about spending, Parsi लोग होते हैं, they do not want to spend the money. The opposite is spendthrift. Parsimonious is the person who is very miser, कंजूस होना, that is parsimonious.
To compensate for the loss or damage, it is called as indemnify. अब यहां तक थे तुम्हारे सेक्शनल वाइज. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब तक तुम्हारे बहुत हिम्मत खत्म हो चुकी है. व्हाट आई फील दैट ऑल ओके विद इट व्हाटएवर वी हैव डन. टेल मी फास्ट. रवि ओके कि थक गए? चलो सिर्फ मुझे इतना गाइड करने दो एंड देन यू विल बी फ्री गाइस. सी दिस इज द एक्टिविटी व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इट आउट. एलिट्रेशन मैंने ये पुराने वर्ड्स कराया. जो ये पुराने वर्ड्स हैं एक बहुत क्विक रिवीजन है इनकी वैसे. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स सेगमेंट वाइज लाइक वर्ड वाइज आई हैव रिटन ए टू जी के चक्कर में. ठीक है, जैसे ए टू जी, जैसे क्लेप्टोमैनिक, इसमें किंडरगार्टन बच्चे कहाँ पे रहते हैं? क्लेप्टोमैनिया, आर्ट ऑफ स्टीलिंग, देन लिंग्विस्टिक, बहुत लैंग्वेजेस, लोकेशियस बहुत बोलता है. दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन अवर क्लासेस and I have arranged it A to Z as the most important one. All these ones which are important. Teetotaler, telltale, जिसके पेट में बात नहीं टिकती है, that is what we have done it out. Theomania, जो आपको भगवान के समान, थियो आ गया. तो ये सारे वही वर्ड्स है. Verbose, full of styles, zoology, synopist, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये मिक्सचर था A to Z का in a segment. पहले मैंने तुम्हें सेगमेंट वाइज आई हैव ट्राई टू मेक यू लर्न सेगमेंट वाइज गवर्नमेंट, एट्रीब्यूट्स, प्रोफेशंस एंड लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस. एंड नाउ बाय द एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ लिस्ट ए टू जी. जब तुम्हारे सेगमेंट्स रेडी हो जाए तब ये लिस्ट को एक रिकैप कर लेना. इट्स जस्ट अ रिकैप ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. बाय दिस योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस get done off. Nothing outside it because you are to do the best and the justice. It's not from one book, two book, three book. I've calculated the ideas from number of the dictionary and then I've jotted the notes so you don't have to go for any other book even. This much suffices if you're preparing for any examination. Do not forget to download the documentation, prepare it in your own. Next class is very, very important. Today I'm saying you out as and be ready, gird up the lion in you. What does that mean, gird up the lion? Let me ask you 4-5 questions before I make you leave and let me irritate you with lots of questions. What does the gird up the lion mean? Lion or lion? Let me ask you the questions. Gird up the lion, full of beans. Just give me a test where you're writing all the things together. Helter skelter, pell-mell. Let's see how many of you are ready with the old ones, right? And let's ask one more. Verbose. And that's it, 5. Okay. So if you are done with it, oh, thank you, Anu, for appreciating it. That matters a lot. Once you appreciate that, yes, you are happy, and that makes me, by the end, a happy person. So what matters to me the most is that you should enjoy the class, and this should be very much helpful for you, right? So here it is, gird up the lion, cheer up yourselves, full of enthusiasm, full of beans, energetic ones, helter-skelter, here and there, pell-mell, in a confused state, messy one, verbose, full of styles. So that was all, a quick revision. How many of you are ready with the idiom and phrases we have done last? किस-किसके हो चुके हैं वो? पढ़ लिया डॉक्यूमेंटेशन के नहीं किया अभी? See, this happens. तुम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन अभी तक लर्न नहीं किया होगा. What I feel so. Why? Because if I am doing the documentation, मैंने यही बोला, if you are listening for 3-4 hours right now, तुम खुद से नहीं पढ़ने वाले हो. तो devote your time कि तुम continuously class में present रहो. ठीक है? No, do not miss the class. I'm telling you very importantly. और अगली बिल्कुल भी मत miss करना. I hope it's a holiday for all of you on Gurpurab. Is it? Or you're not even aware what is Gurpurab? How many of you are from Punjab? None. कुछ तो names ही नहीं लग रहे मुझे. Lakshmi, Rajni, Anup, Balaji. You're not understanding. Okay, so tell me now. Next session is on 27th. Okay, Aditya is there. Great. Aditya, from which area you are? Okay, so being a Punjabi is good. I am also Punjabi, so that feels next level. Okay, so Punjabis do have a lot of courage. Oh, right. So we are from different. Sangrur, nice. My best friend is from Sangrur. So I have, she's now not in this country, but she's in Canada right now. So Varanasi, all are from different states, right? So we are in a diversified culture and we are meeting one another over here. So it hits best.
Now, understand one thing, do not miss your next class. It's very important. If I am trying my best efforts to jot down all the grammar for you in one go, which is going to be very long for me also and long for you too. Do remember it out. It's parts of speech, sentence completion in one go, which carries all the grammar in one portion, right? So do not miss that class. I'll try to jot all the important this. What we are going to do is articles, nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions. Tenses I'll try, but I'll do justification with all 8. And that will be done with the set of questions after that. Clear? Do not miss the class. Schedule has already been shared in the videos of mine where I've already given you the schedule already. Okay? Give your best and do attend that class. I'm reforming again and again. If you missed it out, you're lost, not mine. Okay. So I hope you find the lecture interesting and you're happy with the class, and stay tuned because that is what is going to motivate me also for preparing for you guys. And we have 5, and by 12 December, your English syllabus will be done. Some of the classes we will have on the panel, that will be a short one. So that will be done. Shorter classes will be there, but elongated one go classes that are important. Okay. Chalo, all the best. Have the best of the week and enjoy to the best. And thank you for devoting your 4 hours with me. And it was a great one to have you guys in my class. And I'm looking forward for the next one. All the best. Take care and bye bye.